लाहौर की फजा इन दिनों क्रिकेट में बसी हुई है। अक्टूबर का आज पहला दिन है और ऐसे मौके पर क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी का मुकाबला जारी है कराची और लाहौर की टीमों के दरमियान, जिसे आप मीनार पाकिस्तान से कुछ दूर गद्दाफी स्टेडियम से बराह रास्त देख सकेंगे। एक ज़माने में क्रिकेट की सरगर्मियों का ये सबसे बड़ा मरकज़ रहा है। ये मीनार पाकिस्तान और मिंटो पार्क का इलाका, जिसमें पाकिस्तान के कई नामवर क्रिकेटर्स इस मीनार के साए तले खेलकर परवान चढ़े और बाबर आजम भी इसी मीनार के साए तले खेलते रहे। लाहौर वाइट्स और कराची रीजन्स की टीमें गद्दाफी स्टेडियम में आमने सामने हैं। आज चौथा और आखिरी दिन है क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी 2023-2024 के इस अहम मुकाबले का। मैच बड़ी तेजी के साथ ड्रॉ की जानिब गामजन है और ये रुदाद है अब तक 3 दिनों की। लाहौर वाइट्स ने 509 रन बनाए, उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए। कल कराची ने इंट का जवाब जो है वो इंट से ही दिया। 3 सेंचुरियां हमने देखी असद शफीक, खुर्रम मंसूर और अहमद आलम की। यही वजह है कि कराची वाइट्स का स्कोर 433 पर पहुंच चुका है और अभी भी उनकी 6 विकेटें बाकी हैं। 76 रन का फर्क अब दोनों टीमों में रह गया है। असद शफीक कल यकीनी तौर पर सबसे दिलकश इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए। उनने 12 चौकों की मदद से एक और फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई। उनको कई खराब गेंदें भी मिली और अपनी जो तख्लीकी कुव्वत थी स्पिनर के सामने वो बार बार उनने दिखाई। खेल पर हमा वक्त वो हावी रहे, राज करते रहे इस गद्दाफी स्टेडियम के सब्ज़ाज़ार पर। पहले पुरानी फिर नई गेंद पर रन्स बनाते हुए नजर आए। अच्छा स्ट्राइक रेट रहा जो कि 64 का रहा। यहाँ साबिक कप्तान सलमान बट की आज मुलाकात हुई असद शफीक से। आइए जानते हैं इसमें क्या कहा गया और पूछा गया। शुक्रिया असद, बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपने बारी ली और दूसरी सेंचुरी की सीज़न की। तो असद क्या प्लान्स हैं रिमेनिंग सीज़न के लिए और आगे का भी बताइए कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है और आप वहाँ पर सक्सेसफुल रहे, आपने गैबा में भी 100 किया, तो कहीं टारगेट है वो आगे आपका? जी थैंक यू सलमान भाई जी। थ्रू आउट बड़ा अच्छा रहा अभी तक। पहले मैच में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और फिर यहाँ इस मैच में भी जो है वो बड़ा अच्छा रहा। तो अच्छा चल रहा है सीज़न और ख़ुशी इस बात की है कि टीम भी टॉप पे। अगर आप परफॉर्म करते हैं और आपकी टीम टॉप पे होती है तो वो फिर मीनिंगफुल लगता है। और जहाँ तक आपने बात की फ्यूचर की, तो ये तो सेलेक्टर्स के हाथ में डिसीजन। मेरा काम है यहाँ पे परफॉर्मेंस करना और माशाल्लाह बड़ा अच्छा शुरू के 4 मैचों में अच्छा रहा, परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। अब इट्स अप टू सेलेक्टर्स के वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ और अपनी फ़िटनेस और परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क रखना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। तो असद, आप के तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं। आपने बहुत सारी क्रिकेट खेली और गद्दाफी में भी बहुत सारे मैचेस आपने खेले। तो ये जो पिच पे मैच चल रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैचेस के रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बहुत ही बैटिंग पैराडाइज है या यहाँ पर कोई स्किल लेवल्स में बेहतरी आ सकती है, बॉलर्स इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? जी ऑब्वियसली जिस तरह पहले दिन पिच हमने आके देखा तो उस वक्त थोड़ा ग्रास थोड़ी लाइवली लग रही थी और थोड़ा सा मॉइस्चर भी लग रहा था। तो हमने यही कोशिश की थी कि पहला 1-1.5 घंटा, क्योंकि हम जो मैच देखते हुए आए थे पहले के जो 3 मैच हुए थे, हमें यही लग रहा था कि बैटिंग ट्रैक ही है। तो वो पहले 1-1.5 घंटे से फ़ायदा जो है ना हम उठाना चाह रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली बॉलर्स के लिए हार्ड वर्क है यहाँ पे, क्योंकि कोई सीम इतना ज़्यादा नहीं है। नए बॉल के साथ भी शेप जो है शुरू के 5-10 ओवर बनता है, उसके बाद कोई इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो मेरा ख्याल है बॉलर्स के लिए टफ़ जॉब है और बैटिंग के लिए थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं। थैंक यू असद। थैंक यू। जहां गद्दाफी स्टेडियम के बीच पर बैट्समैनों का राज रहा है। अब तक 4 सेंचुरियां बन चुकी हैं और आज का हाल बताने के लिए शाह फैसल मौजूद हैं वहां। Well, don't be surprised seeing me standing on this green pitch here on the square of Gaddafi Stadium. If you look at it where I'm standing, it's green grass, fresh green grass. This is not a prepared pitch, but if you prepare pitch with a grass like this, it would help seamers, it will get side-on movement, and it will also have good carry for as long as the grass remains fresh and green. If we move to another strip, this is one of the strips that we played previously. It's got a brown grass and we saw there wasn't much help for the bowlers and we had a draw here.
But moving on further close to the one we're playing, it started off with green grass, but it didn't do a lot. But that grass was not evenly covered. It was patchy green grass, a bit tacky in nature. That's why the bowlers felt really hard taking wickets. But still, during the 4 days of play, this rough has developed. And somewhere along the line, you want to question the skill of the bowler as well that was available on show, especially the slow bowlers. And that has to be looked into closely as well in terms of the wicket. यहाँ शाह फैसल जो हैं ये हर सुबह एक उम्मीद दिलाते रहे हैं बॉलर्स को भी, और आज भी उनका ख्याल पहले दिनों से मुख्तलिफ नहीं है। 76 रन बनाना है कराची वाइट्स को लाहौर का स्कोर बराबर करने के लिए, और उनकी 4 विकेटें बाकी रह गई हैं। इस वक्त फहद और रमीज विकेट पर मौजूद हैं। खासी जिद्दोजहद करना पड़ी है फहद इकबाल को अपने 60 रन तक पहुंचने के लिए। आज वही स्ट्राइक लेंगे। कल फास्ट बॉलर्स के सामने उनको बड़ी दिक्कत हुई थी इब्तिदा में जब नई गेंद खेल रहे थे, और ये रमीज अजीज ये बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और दोनों के दरमियान 23 रन बन चुके हैं। इस वक्त सीन सेट है, यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी सीन सेट है। कुर्सी नशीन है एक बार फिर अली नशीन। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। एक ऐसा दिन जिसमें ज्यादा कुछ लुक फॉरवर्ड करने को है नहीं। पहला बॉल अहमद बशीर करेंगे। अच्छा जिक्र किया आपने कि रोज आस दिला देते हैं शाह फैसल, इतनी गलत आस नहीं दिलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्किल लेवल में डेफिनेटली कमी है। यह तो पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, से वहीं से टर्न किया। 1 रन का इजाफा। फहद इकबाल की नज़र भी यकीनी तौर पर 3 फिगर्स की इनिंग्स पे होगी। ये सुनहरी मौका है उनके पास। कल 12 इनको परेशानी हुई थी, खासतौर पर इनिंग्स के शुरू में। बहुत अरसे के बाद ये वापस आए फर्स्ट क्लास क्रिकेट की दुनिया में, जो कि बहुत मुख्तलिफ है क्लब क्रिकेट से। यार अच्छा खेले हैं, वक्त लिया है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि ज़्यादा आसान नहीं था शुरू में, कंडीशंस को डटे रहे, लड़ते रहे सिचुएशन से, और अब फ़ायदा उठाने का वक्त आ गया, क्योंकि अभी बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप आसानी से रन्स कर सकते हैं। मैच भी कहीं नहीं जा रहा है, कोई अब लुक फॉरवर्ड करने के लिए कुछ है नहीं है, तो आप आसानी से रन्स बना सकते हैं। इनफैक्ट आने वाले प्लेयर्स भी रन्स बना सकते हैं। सरफराज अहमद के पास भी मौका है। जाने दे आप इत्मीनान के साथ। देखना यह है कि इस पुरानी गेंद के साथ, जिसकी उम्र तकरीबन 35 ओवर हो चुकी है, क्या अहमद जो हैं इन्हें सेटअप करेंगे। अहमद बशीर ऑफ स्टंप के बाहर 1-2 गेंदें करके फिर वहाँ से जो उनकी स्ट्रोक डिलीवरी है, जो कि बाएं हाथ के बैट्समैन को अंदर की तरफ आती है, क्या ऐसा करने में कामयाब होंगे इस गेंद के साथ। कोशिश तो बॉलर्स पहले दिन से ही कर रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी का मसला रहा है। बहुत जल्दी अपने प्लान्स को चेंज कर लेते हैं, और यही शायद जैसे शाह फैसल भी पिच रिपोर्ट पे कह रहे थे कि बॉलर्स का स्किल लेवल और प्लानिंग और स्ट्रेटजीज जो है वो ज़्यादा देर रह नहीं पाई हैं, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रह पाई। छोटे छोटे प्लान ज़रूर रहे, लेकिन बहुत जल्दी कप्तान जो है वो चेंज करते रहे, और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ज़्यादा विकेट्स हासिल नहीं कर सकी हैं बॉलिंग साइड्स। रन्स का दौरा रहा है इस बरस क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी के दौरान। लाहौर में 10 सेंचुरियां बनी हैं, जिसमें से 4 इस मैच में बनी। फिर इत्मीनान के साथ खेला। फास्ट बॉलर को जब दिन के शुरू में इतनी ज़्यादा टांग आगे बढ़ाकर खेल लेते हैं, तो ये जो बीतती है फास्ट बॉलर पे, ये जाहिर है बयान से बाहर होती है, और उसकी बड़ी वजह ये पट्टी है, ये 22 गज की। ज़्यादा कुछ है नहीं है बॉलर्स के लिए। जैसा फैसल ने भी जिक्र किया, 1-2 पैचेस ज़रूर हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो रफ की वजह से डेवलप हो चुके हैं, तो शायद वही एक अपॉर्चुनिटी है बॉलर्स के लिए, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए। अदरवाइज बहुत ही कंप्लेसेंट, बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली ये पिच है, जिस पर रन ही रन अवेलेबल हैं। जैसे आपने कहा कि 10 सेंचुरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, और आई वोंट बी सरप्राइज कि 1 सेंचुरी और हमें देखने को मिल सकती है फहद की जानिब से, जो कि 61 रन पर नॉट आउट हैं।
हार्ड वर्क है, ये बहुत ग्राइंड हासिल है ये फास्ट बॉलर्स के लिए, स्पेशली यहाँ पे। यहाँ इस पिच पे अगर आप सेंचुरी बनाए बगैर चले जाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप गवाल मंडी जाएं और वहां से भूखे वापस आ जाएं। दानिश अजीज ऐसे प्लेयर रहे कि जो भूखे वापस आए इस पिच से, सिर्फ 9 रन बनाए उन्होंने। अनफॉर्चुनेट है मैं कहूंगा। अराउंड द विकेट आकर खेलने पे मजबूर किया बाएं हाथ के बल्लेबाज को अहमद ने। 434 पर 4। यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे शानदार मैच हुआ है। 13 रन सिर्फ चाहिए रावलपिंडी रीजन को ये मैच जीतने के लिए। अब्दुल फसी 99 पे नॉट आउट हैं, अच्छे रन्स कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में हैं, और ऐसी सपोर्टिंग पिच हमें देखने को चाहिए, मिलनी चाहिए, जिसमें सेकंड इनिंग में रन्स भी हुए हैं, पहली इनिंग में बॉलर्स का राज रहा, उसके बाद बैटर्स के लिए भी आसानी रही, और आखिरी इनिंग में तो ज़्यादा आसान हो गया। तो जो कल हम बात कर रहे थे तारिक भाई, ऐसी सपोर्टिव पिच जिसमें कुछ ना कुछ सबके लिए होना चाहिए, बननी चाहिए, और रिजल्ट्स तभी आएंगे। जी हाँ, खास बात यह है कि मोहम्मद हुरैरा ने पहली बार 19 बिस्तर उठाया है इस सीजन में। 87 रन बनाए कल फैसलाबाद रीजन के लिए। आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन जीशान मलिक की सेंचुरी थी, बहुत अरसे के बाद इन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली है जीशान मलिक ने। इस टीम के इस मैच में उन्होंने 75% रन बनाए जीशान मलिक ने, ये बड़े बासलाहियत हैं। लेकिन बिलावल इकबाल यहाँ आए FC कॉलेज एंड से, जिनको अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं हुई, खासे बेजर साबित हुए हैं दोनों मैचों में ही। सीजन के पहले मैच में खेले थे, लेकिन वो खातिर खा उनको मदद मिली नहीं। इनकी रफ्तार जो है वो पहले से भी लगता है कम हो गई है। यहाँ हमेशा से ये अपनी लाइन और लेंथ पे भरोसा करते रहे हैं बिलावल इकबाल। ये ऐसे बॉलर हैं जिनको कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है विकेट्स हासिल करने के लिए, लेकिन ऐसी कंडीशंस जो कि बैटिंग फ्रेंडली होती हैं उसमें ही मुश्किल हो जाता है इस पेस के साथ सर्वाइव करना। और अब हम देख रहे हैं रन्स तो नहीं दिए लेकिन विकेट्स भी हासिल नहीं किए। और इनके पास भी वही मौका होता है जैसा असद शफीक ने भी सलमान बट के साथ जब बात कर रहे थे तो यही कहा था कि जो पहला अर्ली ऑन आधा घंटा 1 घंटा होता है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ मदद हासिल हो सकती है, ये उस 1 घंटे वाले बॉलर्स मुझे लगते हैं लॉन्गर फॉर्मेट में जहाँ पे हासिल कर सकते हैं थोड़ी मदद। लेकिन जब वो कंडीशंस थोड़ी आसान हो जाती हैं फिर इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है विकेट्स हासिल करना। वो एक्स फैक्टर, वो एक्स्ट्रा पेस मौजूद नहीं है जो कि शायद अहमद दानियाल में मौजूद है, या अहमद बशीर को भी हम किसी हद तक कह सकते हैं। खिलाने की कोशिश है फहद इकबाल को, और बिलावल के लिए यही एक बेहतरीन वक्त हो सकता है विकेट लेने का, क्योंकि इस वक्त जो पिच है ये इतनी बेजान होती नहीं, और क्योंकि हल्की हल्की खुनकी भी है। अब मौसम यहाँ तब्दील होने लगा है, इसलिए सुबह के वक्त फास्ट बॉलर्स जो हैं उसका फ़ायदा ले सकते हैं। या वो देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे लास्ट ओवर में भी तारिक भाई कि बहुत जल्दी प्लान्स को चेंज करते हैं। अभी सिर्फ 3 बॉलें की हैं इन्होंने और हम पहला चेंज देख रहे हैं फील्ड में। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर कैचिंग पोजीशन में तैयब ताहिर आ गए हैं। कितना पेशेंट रहेंगे इस प्लान के साथ ये देखना होगा। आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखानी होती है एज अ कैप्टन भी, थोड़ा वक्त देना होता है अपने बॉलर को प्लान करने का, सेटअप करने का। ये कप्तानी के लिए इससे बेहतर फॉर्मेट नहीं होता। जो कप्तानी की सलाहियतें हैं ये उजागर सही मानों में टेस्ट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही होती हैं, क्योंकि वनडे और जो T20 में जो कवानीन और प्लेइंग कंडीशंस हैं कई बार वाज़े हो रहा होता है कि वो डिक्टेट कर रही होती हैं कप्तान को, कप्तान उनके ताबे होकर रह जाता है। लेकिन यहाँ खुल के आप कप्तानी कर सकते हैं, और इसे यहाँ पर कप्तानों की सही मानों में आजमाइश होती है कि कौन कप्तान जो है कितने पानी में है वो भी आपको पता चल जाता है। और ये इनसाइड एज, लेकिन अंपायर की उंगली फजा में बुलंद हुई। यहां से 2 आवाजें उनका एहसास हुआ था कमेंट्री बॉक्स में।
बिलावल इकबाल ने कामयाबी हासिल की, गेंद को आगे गिराया और उसी का सिला पा गए। कंसिस्टेंट विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे थे बिलावल इस ओवर में और कामयाबी हासिल की। ज्यादा फीट मूवमेंट देखने को मिली नहीं, छोटे पांव से खेल ले खड़े खड़े। बॉल बहुत तेजी से अंदर की तरफ आया और ऐसा लगा कि इनसाइड एज लगा। उन्होंने इशारा भी किया अंपायर को, लेकिन अगर इनसाइड एज नहीं लगा है, जो कि इस एंगल से हम नहीं बता सकते हैं, तो ये डेफिनेटली बॉल जो है लेग स्टंप को लग रहा है। 61 रन बनाए 434 पर 5। Selection, please. सरफराज अहमद कराची वाइट्स की टीम के कप्तान 176 मैचों में 9000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। अभी हाल ही में ये सेंचुरी बनाकर आए हैं। अच्छा फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है और उम्दा औसत भी 40 से ज्यादा की। 2 स्लिप्स और एक गली के साथ और ये स्ट्रोक खेलते हुए नजर आएंगे। गेंद अगर इनको आगे मिलेगी तो ये स्क्वायर ड्राइव करने से घबराते नहीं है। उनको पहले स्कोरिंग शॉट पर 3 रन मिल गए और साथ साथ ऑफ द मार्क होने का मौका भी। 437, 5 विकेटों का नुकसान। पहले ही ओवर में बिलावल इकबाल ने विकेट हासिल किया। देखिए ज्यादा फीट मूवमेंट देखने को मिली नहीं, खड़े खड़े खेल गए। बहुत छोटी फीट मूवमेंट थी और बॉल बहुत तेजी से अंदर की तरफ आया, कट हुआ बॉल। सुबह सुबह हम एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से आपके पांव चलते नहीं है एज अ बैटर, डिसअपॉइंटेड होंगे। मिस आउट किया इन्होंने क्योंकि जो कंडीशंस थी सेंचुरी डेफिनेटली अवेलेबल थी और यही शायद जो डिसअपॉइंटमेंट है। जिस तरीके से बैठे हैं खुश नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना होगा बिलावल इकबाल को। जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, अच्छा सेटअप किया उनको। आउट स्विंगर के लिए फील्डर खड़ा किया और एकदम बॉल जब इन स्विंगर किया उससे चकमा दे दिया उनको और इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किया अपने लिए। ये पॉजिटिविटी है जो सरफराज अहमद लेके आते हैं बैटिंग ऑर्डर में, कि जब भी ये क्रीज पर रहेंगे रन्स की तलाश में रहते हैं। और शायद इसी वजह से हम कल भी जिक्र कर रहे थे, अगर सरफराज अहमद फहद इकबाल की जगह बैटिंग करने आते तो शायद वो जो 100 ओवर में 400 रन्स बनाने का टारगेट था, हदफ था, जिससे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकता था कराची रीजन को, वो हासिल कर सकते थे। क्योंकि सरफराज ऐसे प्लेयर हैं जो कि रन्स बनाते हैं, तेज़ी से बनाते हैं। तो यहाँ पे शायद तारिक भाई जो ट्रिक है वो मिस किया है कराची रीजन ने, इसलिए 1 पॉइंट पीछे हैं लाहौर वाइट से इस मैच में। ये नहीं आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है? कौन सा? लाहौर की टीम जो है ये हर मैच में ही इनकी कोशिश रही है कि 400 रन बनाए जाएं 100 ओवर तक। इस मैच में भी 400 रन लाहौर वाइट्स की टीम ने बनाए थे 100 ओवर तक। उन्होंने अपने मुकम्मल बैटिंग पॉइंट्स हासिल किए, लेकिन उनको बॉलिंग पॉइंट जो है वो सिर्फ एक मिल सका। दूसरा पॉइंट उस सूरत मिलता अगर ये 100 ओवर तक 6 विकेटें हासिल करते। बॉलिंग और बैटिंग में दोनों के बड़ा फ़र्क है। लाहौर की जो बॉलिंग और बैटिंग है उसमें बहुत फ़र्क है। बॉलिंग जो है कमज़ोर बाजू है लाहौर का। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस की कमी है, क्योंकि अगर हम बिलावल इकबाल की बात करें, अहमद बशीर या अहमद दानियाल भी इतने एस्टैब्लिश्ड बॉलर्स नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ मीर हमजा हैं, उनके साथ गुलाम मुदस्सिर है जिनकी अच्छी पेस है, एक्सपीरियंस भी आ गया उनको। अब
तो इसलिए फ़र्क तो है डेफिनेटली। और इसलिए पॉइंट्स की भी अगर हम बात करते हैं तो कराची में इस मैच आने से पहले बॉलिंग पॉइंट्स काफ़ी हासिल कर चुके हैं, लेकिन पता तो यहाँ चलेगा अगर यहाँ पे आप बॉलिंग पॉइंट्स हासिल कीजिए कदाफी स्टेडियम में, फिर आपका सही पता चलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि विकेट्स यहाँ पे लेना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा पेस नहीं है आपके पास, तो फिर आप स्ट्रगल ही करेंगे एज अ फास्ट बॉलर। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं रमीज अजीज को अभी तक अहमद, जब से उन्होंने अपना जाविया तब्दील किया है अराउंड द विकेट आए, और अभी भी बड़ा मलाल है आउट होने का। अभी भी हेलमेट लिए बैठे हुए हैं वहां पर। देखिए थोड़ा सा लेट हो गए, क्रॉस द लाइन भी खेलने चले गए थे। या अनफॉर्चुनेट है कि सुबह सुबह के वक्त यूजुअली ज़्यादा पाँव आपके चलते नहीं, उस फुटवर्क आपका उतना एक्यूरेट होता नहीं है जो लेटर इन द डे हो सकता है। दूसरा ओवर था दिन का, और आप जब वो आउट हुए आप उनका फुटवर्क भी अगर नोटिस करें तो बहुत छोटी टांग से खेलें, और इन स्विंग जब हो रहा हो तो आप 100% LBW के हकदार होते हैं। जिस तरीके से आप खेल रहे होते हैं LBW के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और यही कुछ फाद इकबाल के साथ भी हुआ है। अंदर जाने का भी दिल नहीं कर रहा, इतने डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि जब आप कम बैक कर रहे हैं बैटिंग के फ्रेंडली कंडीशंस हों तो 100 तो बनता है। अच्छा ओवर अहमद बशीर का, जिस पर उनके साथी भी खुश हुए। 439 स्कोर है कराची का 5 विकेट पे। जब 5वीं विकेट लाहौर वाइट्स की गिरी थी तो उनका स्कोर 422 सब। कराची ने 434 पर 5वीं विकेट गंवाई। दोनों टीमें जो हैं वो शाना बशाना चली हैं जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है। अलबत्ता नोमान ने अच्छा स्पेल किया था लाहौर की टेल के खिलाफ। कराची की टेल अभी शुरू नहीं हुई, ये उनका बैटिंग पेयर है, आखिरी बैटिंग पेयर। रमीज अजीज जो है कल इन्होंने कई इनोवेटिव शॉट भी खेले थे, इन्होंने रिवर्स स्वीप भी करने चले गए थे। और जो इन दिनों जिस तरह बैट्समैन इनोवेटिव हो रहे हैं फर्स्ट क्लास मैचेस में भी और टेस्ट मैचेस में भी, वो भी हमने कम देखा है यहाँ इस साल। हालांकि यहाँ बैटिंग की जन्नत है ये गद्दाफी स्टेडियम, यहाँ ऐसे शॉट्स खेले जा सकते हैं, लैप शॉट्स या फिर अपर कट वगैरह का इतना मौका यहाँ मिलता नहीं, ये उतनी ज़्यादा उछल के नहीं आती तेजी से, लेकिन रिवर्स स्वीप तो आप खेल सकते हैं। या उसको खेलने के लिए भी थोड़ा पेस पिच में होना ज़रूरी है, और थोड़ा बैटर को भी दिलेर होना ज़रूरी है। यहाँ पे रमीज अजीज ने कल दिखाया कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना जानते हैं। आते ही बिजी नज़र आया हमें, रिवर्स स्वीप की बात करें, रन्स की तलाश में रहे। ऑल्दो इनका भी कम बैक हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, हबीब बैंक से इससे पहले क्रिकेट खेलते रहे, तजुर्बा है इन्हें। और जब आप टेक्निकली साउंड होते हैं तब आप हर तरह के शॉट्स खेलना आसानी से खेल सकते हैं, और यही रमीज अजीज की भी खासियत है, टेक्निकली करेक्ट हैं, कॉन्फिडेंट हैं। अच्छा शॉट खेला, इस बार गेंद पैड से मिली और सिर्फ इस पे बल्ला गिराया, और जल्दी करनी पड़ेगी। थ्रो जो है ये बॉलिंग एंड पर आया, और ये विकेट कीपर की तरफ फेंकी जाती तो शायद मुश्किल में पड़ जाते। रमीज अजीज जो हैं तकरीबन मिड पिच तक आ गए थे, वहां से सरफराज ने वापस भेजा। अच्छी स्प्रिंट लगाई है अहमद दानियाल ने, और अच्छी थ्रो भी की। रमीज अजीज तो सर्टन थे कि उन्होंने 3 रन हासिल करने हैं, लेकिन एक्सपीरियंस सरफराज अहमद का काम आते हुए, क्योंकि अगर ये भाग भी आते तो डेफिनेटली रन आउट हो जाते, क्योंकि रॉकेट आर्म है अहमद दानियाल का, आप नहीं चांस लेना चाहते हैं, और ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट या कोई भी मोटिवेशन तो है नहीं मैच में, तो आप अपने लिए खेलिए,
लंबा खेलिए, रन्स कीजिए, अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो कार्ड्स हैं ये कराची के पास हैं, क्योंकि उनकी 5 विकेटें बाकी हैं। 68 रन का हालांकि फ़र्क है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अगर इसी वक्त इनिंग्स जो है ख़त्म करने के मुतालिक सोचें? लाहौर को इन कंडीशंस में जब फास्ट बॉलर्स के लिए किसी हद तक मदद है, तो आप मीर हमज़ा को यहाँ पर बॉलिंग कराएं, उनको स्विंग करने का मौका दें। गुलाम मुदस्सिर की अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है। लाहौर की अगर ऊपर से 2-3 आप विकेटें उड़ा देते हैं तो एक खलबली सी मच सकती है। जी 100% मैं आपसे एग्री करूंगा, लेकिन शायद इस चीज़ को इनको कल प्लान करना चाहिए था। मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊंगा कि फ़ाहद इकबाल की जगह अगर सरफराज अहमद आए होते, रन थोड़ा तेज़ी से किए होते, तो आज इस पोजीशन में होते कि आप डिक्लेयर करके प्रेशर डाल सकते। लेकिन यहाँ पे अब कंडीशंस थोड़ा लेट हो गए। होपिंग अगेंस्ट होप है कि आएँ और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकें, हो सकता है। लेकिन आज का इनको कल प्लान करना चाहिए था कि किस तरीके से हम प्रेशर डाल सकते हैं लाहौर पे वापस। लेकिन शायद उन्होंने यही बेहतर समझा कि आप ऐसे ही जाने दीजिए। मुमकिन है कि ये भी ख्याल गुजरा हो सरफराज अहमद के और इनके जो हेड कोच हैं इकबाल इमाम की पहली इनिंग्स में इनके बॉलर्स को बहुत देर तक मैदान में रहना पड़ा था, 138 ओवर तक। तो गर्म मौसम में ये दोबारा नहीं चाहें कि इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो मज़ीद सूरज के नीचे रहें। एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन रेस्ट मिल गया उनको कल पूरे दिन का। चांस लेने में जैसे आपने कहा कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देन अगेन क्या मोटिवेशन है, यही क्वेश्चन रहेगा। 441 पर 5। सरफराज अहमद जो हैं ये आगे निकल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं पिच में जो पेस है वो ना होने के बराबर है। तो ये इस बात के मजाज हो सकते हैं कि बाहर निकल कर खेलें। वैसे भी अहमद बशीर जो हैं बाउंसर्स वगैरह करने पे कम इनका यकीन है। ये उस स्विंग को भी काटना चाहते हैं जो अहमद बशीर को आज मैसर आई है। या क्योंकि एक विकेट ऑलरेडी गवा चुके हैं, उसी स्विंग, उसी जो बॉल कट हुआ था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसको निगोशिएट करने के लिए कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बाउंसर अगर यहाँ पे हो जाए तो फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अभी तक कंसिस्टेंटली एक लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि सही है। सरप्राइज डिलीवरी रखिए, स्टॉक डिलीवरी रखिए, ताकि सरफराज एक्सपेक्ट ना कर रहे हो तब आप बाउंसर करें, तभी आप कुछ फ़र्क डाल सकेंगे। लेफ्ट साइड पे जो बैठे हुए हैं फास्ट बॉलर मोहम्मद नईम, ये मुझे सरप्राइज हुआ कि इनको इस मैच में नहीं खिलाया गया था और बिलावल इकबाल को खिलाया गया था इनकी जगह पे। और जब हम जानते हैं कि इनकी पेस बेहतर है, ये नवीद सॉरी तो ये डेफिनेटली एक गलती ज़रूर हुई है सिलेक्शन में लाहौर वाइट्स की जानिब से, क्योंकि आप ज़्यादा मैचेस यहाँ खेल चुके हैं, आपको कंडीशंस का बेहतर आइडिया है, आपको पेस चाहिए। तो अहमद दानियाल, अहमद बशीर और अगर इनका कॉम्बिनेशन होता तो ज़्यादा बेहतर बॉलिंग अटैक हो सकता था लाहौर रीजन का। यहाँ ये फाइक बट को भी हम देखना चाहेंगे कि ये इस सतह पर पहुंचकर इनको अगर मौका मिलता है, ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, बहुत रन्स बनाते हुए आते हैं, स्टाइलिश हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। तो ये इन दिनों बड़ी रेयर सी कमोडिटी है पाकिस्तान क्रिकेट में। मिडिल ऑर्डर में आपको अच्छे बैट्समैन अगर मैसर आ जाएं तो आपको मौका जो उस वक्त मिलना चाहिए जब आप फॉर्म में हों। फाइक बट रहे हैं फॉर्म में, या बहुत ही शानदार फॉर्म है। और मैं तो लास्ट गेम में भी काफ़ी इनके बारे में जिक्र करता रहा हूँ कि ये परफॉर्म करके आ रहे हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में। और लाहौर रीजन वाहिद एक ऐसा रीजन रहा है कि जिन्होंने अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मर्स को उस तरीके से मौका नहीं दिया है जो बाकी रीजन्स ने दिया है।
हाशिम इब्राहिम एक और प्लेयर है जिनको अभी तक मौका नहीं मिला। ये वो प्लेयर हैं जो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि मिडिल ऑर्डर में अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, और ऐसे ही प्लेयर्स की ज़रूरत है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान टीम में डेफिनेटली जगह मौजूद है ऐसे प्लेयर्स की। साद खान जो राइट साइड पे हैं, ये भी ऐसे ही बिजी प्लेयर है। इनका ताल्लुक कराची से है, लेकिन ये एज अ गेस्ट प्लेयर लाहौर रीजन से खेल रहे हैं। लेकिन जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या टैलेंट है, क्या स्किल है बड़ी क्रिकेट का। तो मौका देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैं कहूँगा लाहौर वाइट्स वालों को या लाहौर ब्लूज़ को भी, अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मर्स को मौका दीजिए। अच्छी फील्डिंग, सिर्फ एक रन तक महदूद किया सरफराज अहमद को, और इस दरियाफ्त फील्डर 130 ओवर्स के बाद कराची वाइट्स 442 पर 5। कराची वाइट्स की जानिब से 3 सेंचुरियां अब तक बनी हैं, और अहम बात यह है कि किसी भी बैट्समैन ने बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। बहुत जो सबसे बड़ा स्कोर है असद शफीक का, वो 113 है। सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद बैट्समैन आउट होते रहे। इसके मुकाबले में लाहौर का मामला मुख्तलिफ था, एक डबल सेंचुरी थी और बाकी जो है निस्बतन कम स्कोर थे। अली ज़राब एक सेंचुरी थी और बाकी कोई सेंचुरी नहीं थी इस पिच पे। 509 रन में ऐसा कम देखने को मिलता है कि दूसरी सेंचुरी ना हो। अली ज़राब ने डोमिनेट किया इनिंग को, लेकिन अगर आप कराची वाइट्स का स्कोर कार्ड देखें तो जो जिन सेंचुरीज की आपका जिक्र आप कर रहे थे, वो दोनों बैटर्स साद नसीम से आउट हुए हैं। इसका ये मतलब है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो 100 करने के बाद आई और उसकी वजह से अपने विकेट गवा बैठे, और यही ऐसा कुछ अली ज़राब ने नहीं किया। वो बहुत कंसंट्रेशन से खेलते रहे, फोकस्ड रहे, अपने स्ट्रोक्स खेलते रहे। तो जब आप साद नसीम जैसे पार्ट टाइम बॉलर से आउट होते हैं तो कंसंट्रेशन का ही मसला होता है। इस गेंद एज पर लगी और थर्ड मैन के इलाके में पार पहुंच जाएगी। सरफराज अहमद ने आज के दिन का पहला चौका लगाया। नर्म हाथों से उन्हें खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद फिर भी उठ चली थी। सिर्फ एक ही फील्डर हैं उस इलाके में। ये जेन्युइन आउटसाइड एज है, और एक फील्डर से गैप तलाश करने में कामयाब रहे सरफराज अहमद, और यही क्वालिटी है इनकी। ये हमेशा पुश करते हैं बॉल की तरफ और रन्स की तलाश में रहते हैं। मुझे फिर भी इस बात का रंज रहेगा, अफसोस रहेगा कि इनको पहले बैटिंग करने आना चाहिए था। शायद हम मैच में कुछ एक्साइटमेंट देख सकते आज के दिन अगर सरफराज अहमद फहद इकबाल की जगह बैटिंग करने आते। क्या पता लगती है तारिक भाई, क्या प्लान होगा? क्या फहद इकबाल या रमीज अजीज को एक्सपोज करना चाहते थे, मौका देना चाहते थे कि आप बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में बैटिंग करें? क्योंकि अगर मैच रिजल्ट की तरफ नहीं भी जा रहा है तो आपको बैटिंग पॉइंट्स की तरफ तो जाना ही है। तो फहद इकबाल या रमीज अजीज से बेहतर मौका सरफराज के पास है कि वो तेजी से रन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिक को मिस कर गए हैं। जहाँ आज अगर ये ज़्यादा बैटिंग करेंगे तो उसका एक ही मकसद होगा कि इनके जो बैट्समैन हैं जो वापस आ रहे हैं टीम में, वो अपना खोया हुआ एतमाद बहाल कर लें। नोमान अली भी बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इनको बैटिंग पॉइंट तो और नहीं मिलेगा। अगर 100 ओवर तक आप 400 रन बनाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं। कराची को 4 पॉइंट्स मिले, क्योंकि इनका स्कोर जो है 350 से ही आगे निकल सका था 100 ओवर तक। दूसरी जानिब लाहौर को सिर्फ एक बॉलिंग पॉइंट मिला 3 विकेटों की वजह से। लेकिन आज ये अच्छा लग रहा है, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लाहौर के जो फील्डर्स हैं उनकी जानिब से।
तो बेशतर जो आसपास फील्डर हैं, विकेट कीपर खासी हद तक वो मुतहर्रिक नजर आते हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। तारिक भाई अभी पहला आधा घंटा है, लंच के बाद देखेंगे कि कितनी आवाज़ें निकलती हैं जब मोटिवेशन नहीं होती है, कि रिजल्ट कहीं नहीं आ रहा होता है। शुरू शुरू में तो ऐसा होता है, क्योंकि अभी फ्रेश हैं, रेस्ट करके आए हैं, तो आवाज़ निकल सकती है। लंच के बाद मैं देखूंगा। 46, 5 खिलाड़ी आउट। Bowling over. .446 for 5. Fahad Iqbal, the only casualty in the first half an hour. Ahmed Daniel back at the bowling crease now. One slip in a gully for him. Talked a lot about the approach, the levels of skill, and the plan's execution. But all that, and we know we're near result in this game. Not even the points at stake, because those have been accumulated for the game. That only apply in the first 100 overs. Ramiz has looked good. It's a good time to welcome along former Pakistan captain Salman Butt in the comm box. Good morning, Salman. Good morning. Thank you, Faisal. And I wonder what the purpose is at the moment with the batters. What do they have in mind? Is it batting practice? Is it just to get runs on the record? Or can we make a difference in this game? A positive difference? I'm glad you asked this, because I was wondering the same. What can be achieved here for both teams? Call is for 2. Sarfraz is busy between the wickets, and they will complete it comfortably. Very little the purpose of this remaining game here, but Salman, we were in the middle this morning before the start of the play, and it was interesting to talk to the management of both the teams, as we see Ramiz Aziz clipping it nicely. Sarfraz has judged it very, very nicely, so he didn't have to rush, but he was very comfortably back for the second. It's not all about the pitch not responding. I think what we saw in this morning's dismissal is the ball just moving a bit off the seam. When you hit the right areas, when you hit the right length, there is that little bit which can make the difference. But it's at times the bowlers, they haven't been consistent enough. And that is where they need to learn to do enough where the batter can make a mistake. When you keep on offering the shots where batter gets the relief, he gets runs, so he remains easy. Yeah, you really make a good point, Salman, because every now and then when you see a ball like that, what we saw for Fahad Iqbal, it makes you wonder, and you do question the skill level or the execution, how long you want to cook the plan. That's the only dismissal from this morning. See, this ball off a length, it jacked back, and the batter was late on it, and that nip of the pitch into the batter didn't allow him to play any sort of stroke. So these are the lines and lengths where the bowlers have to be consistent. But if you analyze the whole game,
very few times have they been in the right areas. And the thing is, Salman, that the same thing is not going to happen every ball, but you can give yourself the maximum chance by just nailing that spot and bowl there for a consistent length of time. 448 for 5. No chance of a result here, but Rawalpindi Cricket Stadium has yielded a result, and Rawalpindi region has won the game against Faisalabad by 7 wickets. Look at the scores here. It looked like it was a difficult wicket to start off, and it got gradually easier for the batters. Look at that, 204 for 3 in the 4th innings. Meant that the wicket did ease off. Faisalabad made 234 in their 2nd innings, giving Rawalpindi the target of 203. Beautifully played, Sarfraz. Typical Sarfraz Ahmad. And the chase will be in vain. This is beautifully timed by the former skipper. Absolutely brilliantly timed this. He was on the move forward. Didn't go fully forward, just waited for the ball. There we see half cock, but timed it exactly under his eyes. There we see. Wonderfully placed. And it is one of the shots which has brought him so many runs over the years in his career. And plays it with real authority. Immediately the fielder has gone back. See, that's typical Sarfraz when he crouches and rises with the bounce of the ball to hit it on the top of its bounce. Nicely played. Coming back to that dismissal this morning, that was perfect line and length, and the wicket did its part too. You wonder why that doesn't happen often. There you see once again, perfect line, and look at that movement, appreciable movement of the seam. Good decision though for the umpire, because it was pretty close to the inside edge, but it was hitting the back pad flush, and it was a good decision. But good piece of bowling. There it is, good lines, good lengths in the last 2 deliveries. And this is where you have to be consistent. Because a player like Sarfaraz or any experienced batter, if you keep giving him those opportunities where he can score easily, then he will never get frustrated. And as a result, the bowling side will suffer at his hands. Bilawal is an experienced campaigner. He's played a lot of first-class cricket for Lahore. Now that area has been protected. Sarfraz looking good. He's been in good form this season. Again looking good. When we were talking to Quaid-e-Azam Jr. in the morning before the start of play, he was really emphasizing on a couple of points, the available resources, and also his frustration over the conditions. He's an experienced coach. He had good ideas, but I think somewhere along the line he was not happy with the execution. Yes, he's been coaching in part of the coaching circuit for a long time, and has also played a lot of first-class cricket and carries a lot of experience with him. And he was right about being consistent as bowlers. We spoke about how bowlers have taken fifers on pitches with absolutely no grass on it, with the surfaces that look like road, but still the bowlers to use it to good effect. They bowl consistent lines and lengths and then come out with positive results. So it's somewhere along the lines, the bowlers have to be patient, and they have to believe that bowling one line and length will yield results. Especially when you're not expressed, you're bowling at around 122, 125. You should be able to cook a plan for 7-8 overs in one spell. Change up delivery once again, nicely played. Ramiz has struck the ball beautifully. This was sweetly timed as well.
Low full toss, all right. But he put it away in style. Yes, that's 4-5-7 for 5, Karachi. So coming back and relating this particular shot to your point is where the bowler again gets impatient, bowls a few nice balls and then tries to york him, and in the process misses the length, and the batter has driven it easily down the ground. So this is the point, that you have to be patient and consistent at the same time. You can't just expect after 2 good deliveries that a batter you're going to surprise him with anything, and especially when you are nowhere close to being express pace. You don't cook a plan for long enough. That's the overriding conclusion of this bowling effort from almost, I mean, I would say both the sides, they were guilty of doing that. And yes, another part of this point that you make is that they haven't bowled long enough. You see, you're not express, so you should be able to bowl 8 to 10 overs if you have to cook a plan for the opposition and give yourself a favor. So then you must carry on and at least bowl 6 to 8 over spells and then expect the batter to make mistakes. And the same needs to be done from the other end, so that frustration comes in for the batters from both ends. If you look at the offside field as well for Sarfraz, that gully and short point, and there's protection in the deep as well. But keep an eye on what lines Ahmed Danial will bowl. There you go. Hard lengths, attacking the stumps. But you've set a plan for offside with plenty of protection. But then if you bowl different lines and lengths, that plan is not going to work. Yes, Ahmed Danial is still very young at this level of the game. He will learn with time. That learning has to come quickly, and the coaches need to emphasize the importance of bowling in one area, one line, one length. There we see again missing the length and probably the line, allowing an easy single to Sarfraz, who will keep pouncing on these opportunities. He's too good and too experienced to let these things go by. Another thing, Salman, on pitches like this, we've seen, so normally we would say that you bowl as many deliveries, make the batters play every delivery. But here, when you're cooking a plan with a packed out offside field, wouldn't it be better to just bowl outside the off stump and see if how many times or for how long the batter is prepared to leave it without putting bat to ball? Yes, that tests the patience of the batter. At the same time, also the skill level, because he's going to drive away from his body if he wants to do so. And if he decides to leave, then definitely how long he can do that. So the patience is tested. But at the same time, as a bowler, your own patience is tested as well, because you need to carry on bowling there. And it's about who loses it, who loses the battle first. Yeah, the bowler has to be more patient because there's nothing much for him in the wicket apparently. So it happens. It's happened the other way around actually. Normally we expect the batters to lose patience. In this game we've seen the bowlers losing patience. Do you think, is it because 20 over format has come to it, as we watch another short pitch delivery from Ahmed Danial? So the bowlers are less patient as well these days? Yes, automatically, because the domination of T20 cricket at all levels, it has brought its effect on all playing, whether you be the batter or the bowler or the spinners. We see spinners not flighting as much as they used to, and we see the fast bowlers trying variations and being impatient, because everything happens so fast in that format that they start to expect, oh, why I'm not getting a wicket? Why the runs are not coming? There we see Azaz Chima, in his days, a wonderful bowler, and on pitches with absolutely no grass, he would be so consistent and take wickets. I remember him playing the last 2 seasons before he took up the role of a coach, and he was the highest wicket taker for Central Punjab. Must be frustrating for him as well. Azaz Chima himself
He's a very, very crafty bowler and very frustrated with the effort of his charges. We'll come back, talk more about Azaz. 458 for 5. Talking about this Qaddafi Stadium pitch and the prowess that the Lahore Whites coach Azaz Chima had. Every morning when you see him at work with his charges before the start of the game, you see him very intense, putting a lot of hard work. And for someone as successful as him, like I said, it must have been very, very frustrating that the results haven't come this year for his bowlers. And the same thing continues. Again, a field dominated on the offside, and the bowler, he delivers one which is full and among the stumps where the batter can easily drive it, and he did. Fortunately for the bowler, it didn't find the gap. Karachi trailed by 51 more runs, but that doesn't mean anything now. They can't take more points. Yep. Yeah, that's true. But now I think it's a better change because Bilawal is bringing the ball in. So now that fielder on the drive has come onto the onside. Now that middle and leg line will be interesting. Conversely, he bowls outside the off stump. That's the funny part. If the captain decides to go one side, the bowler at the same time he goes to the other side, and that's where it gets so much frustration for the captain, because you just cannot have the field packed on both sides of the pitch. There are only 11 fielders allowed, and the bowlers have to be precise. And they can really make the captain look foolish by not responding to the field settings. As they say, the captain is as good as his bowlers. And if you let down your captain with his plans, he will absolutely look foolish. Wide of the crease, but still, middle and off stump was the line. You reckon, Salman, if he can even put another fielder onto that onside, just make Sarfraz clip off his toes and bring that fielder from offside onto onside and get rid of that sweeper on the offside, because if he's bowling middle and leg, is not where the ball is going to go. Yeah, correct that. But it's very easy for the captain to do that. But it's one thing that the bowler gets it in the right area so that fielder can be utilized, which we haven't seen a demo of so far. Bowlers have worked so hard on this pitch. Once again, wrong line. But don't you think the bowlers who toil themselves, it's hard physically on them, should they not be coming up with a plan themselves? They're intelligent enough to just see where they can get the results. Don't even rely on the skipper. Well, that's what you desire as a captain, for the bowlers to have their own plans, and then they come up and ask you for the particular field settings, and then they have that desired control to actually engage those fielders. But at the moment, they haven't been enough accurate to utilize the field setting of the captain. Easy single given away. And throughout these 4 days, I'll check with Farhan as well. I don't think anybody's gotten out in the slips or even any drop catches that has gone to slip of the quicker bowlers. Do you recall any, Salman, in the 4 days? Yes, cannot remember one in this game, and also not many in the entire 4 games that have been played over here. And unfortunately, the ones that have gone, most of them have been dropped. That brings me to the point. There is a slip and a gully present all the time. It's just for the sake of it, I guess. Coming around the wicket, just 3 fielders on the onside, and Bilawal, what he does, bowls at middle and leg. Ramiz picks him off easily.
460 for 5. See this longer format, the first hour of play when you come into play, this is the time where the bowling side gives it their all to see if they can make early inroads. If they don't get the result, I'm afraid from there on, things get pretty flat. Lahore has got 1 wicket. If they don't keep getting wickets quickly, I think you will see the body language drop, and fast bowlers, their shoulders will drop, and proceedings will get very flat. Absolutely, that's the effect of partnerships and the long ones. And also when you know you do not have the kind of spinning attack which will take care of itself, take wickets, or maybe even stem the flow of runs. So both of those things we haven't seen from the bowlers. It's very important to keep picking up wickets. Nicely played. Not timed as well as he would have wanted, but this outfield is very quick. Good effort. Ahmad Shahzad putting in the hard yards in the field. It looks fine. Save the boundary. He must be thinking he got out on 60 plus runs. He missed a big one because he looked really good in this game. And if you look back, you've got so many good innings in this match, but probably his innings stands out in terms of the quality of runs that he made on that first morning. Definitely, he looked apart with his shots, with the control, with his feet movement, punching off the back foot. Plenty of time for Sarfraz to see that short pitch delivery. And one more thing is, Salman, that when Ali Manzoor was bowling last night to left-hander Ramiz Aziz, the big rub outside his off stump. We started with the quicker bowlers, allow him to settle down. I know early morning it's tempting to get your fast bowlers in, but I think spinners, left-arm spinners, can make life difficult for the left-handers on this day 4 pitch. Obviously, but for even to do that, to allow that to happen, you have to keep landing in the patches. And there we go again with the line and length precision, with the amount of accuracy that you can bring in your bowling. Another short one, left all alone by Sarfaraz, who is at ease and looks in no hurry at all. He's seeing them well. He's been in good batting form in this season, Sarfraz. Had to miss round 3 that game due to some personal commitments. He's back. Kept really well as well, Sarfraz. Looks very focused. Another senior man in that Karachi white side, alongside Asad Shafiq and Khurram Manzoor. Yes, their batting order carries big records, lots of experience, and for any bowling side to run through this Karachi team will not be easy. They have around 30k plus runs if you combine the runs of these 3 players, Khurram Manzoor, Sarfaraz and Asad Shafiq. Lots of runs there in the batting order. Huge numbers. 463 for 5.
A hard toil for the bowlers. 137 overs that Lahore Whites batted, but now they have already bowled 136 overs, and the end is not in sight at all. I think they have a hard toil unless they pick up these remaining 5 wickets later on this morning and in the afternoon as well. Bilawal Iqbal 27, Ahmed Bashir 24, Ahmed Danial the quicks 20 overs. Talking about those patches, we have seen Saad Naseem. He's bowled reasonably well. He can also exploit those patches, especially to the left-hander. And we have seen that he has turned the ball more than anybody else in the game. So maybe it's time for him to utilize those patches, especially when Ramiz is in. There we see the bowling marks outside the off-stump, especially of the left-handers and also of the right-handers. But there are no off-spinners, sadly, in both teams. And if you look further down on the other end as well, as we look into it now, exactly where Bilawal was bowling into that. Left arm spinner or right arm leg spinners could be handy in this lineup. Ramiz is a left-hander. Noman Ali is a left-hander who's coming in next. So is Mir Hamza. The pitch is so good that Rashid Riaz is also visualizing. If I had been playing there, maybe he could have also scored 100. Look at him. And what is he doing? Playing off the front foot. That's what you can afford to do here with lack of pace. Big booming drive attempted by Ramiz Aziz. The ball is not coming on as much as he would like. This will happen more often if he is able to bowl a couple of overs on the same line and length outside off stump. But sadly, hasn't been the case. You expect that from Bilawal. He's over the years played a lot of first-class cricket for Lahore. So he should be able to do that. But we haven't seen that. I don't know why Ahmed Bashir hasn't bowled at a stretch for more overs. He only bowled 3 today. Salman, we talk in isolation, but if you look at what Lahore Whites got in 137.2 overs, Karachi didn't match that. And if you look at their card with 3 centurions and a half century from Fahad, imagine if they had batted quicker and put in Lahore Whites the third innings under pressure. Even if it was even, Lahore would have known that they can't go wrong here. This one has been flayed straight to the fielder. Because as they always say, in a first-class game or longer format, you only have to get a side out cheaply once. And they would have given themselves that chance if they had batted with more purpose. Yes, absolutely. But the quality of bowling that you carry also determines how you think and how positive you are about getting the other team out. So what we have seen is not very consistent lines and lengths. And maybe the maturity levels, obviously some of the boys are very young at this level. So maybe that refrains the teams from taking such decisions. But the point I make, and I'll ask you when we come back after this, is that you've been opener yourself. What is the pressure that a third innings carries? I'll ask you this after this. 463 for 5. Plenty of big scores there. Danish Aziz, the only one who missed out. 3 centurions. Fahad also got a 50. But I was asking Salman, if you start the third innings on an even keel, and you know that as a batter you can't win the game, and there is something different on a 4-day pitch, is it worth taking a chance if nothing's happened? I mean, going for victory in pursuit of victory when nothing's happening, is it still worth a chance? Or Yes, it's worth taking a chance, especially if you've got the bowling. But if you haven't, then otherwise, because you don't want to tire your team and your bowlers off, and you know that maybe in the next game you have a kind of a pitch where you can get a result. So you wouldn't look to get your boys in a state where they're physically tired when the pitch comes where they can actually create something. And the other part as a batter is that obviously the purpose then becomes to bat your side out of that zone
where things can go wrong. So it's only about getting a decent partnership where the other team also realizes that now it's not going to be any result. And then they come up with those bowlers who just fill in and try to save the legs of their main bowlers. That's exactly, I think, the way Karachi Whites are thinking, the way Salman explained. Because with plenty of games coming up north for Karachi Whites, where there are more chances of results, probably they want to keep their bowlers fresh. And Lahore will also move to north after round 5. So they're keeping them in the field and tiring out their bowlers. It's a little mind games. Ahmed went for the Yorker. Sarfraz is seeing them pretty well. Ahmed Anyal, he's been impressive. A boy who hasn't played much first-class cricket, or his start-off point was T20 cricket and tape ball cricket. And to, start from there and to reach this position, I think he's playing in the 3rd season. Hasn't played a lot, but still I think he's a thinking bowler. He uses his pace to good effect and also has a good bumper. So maybe in time he develops more skills where he can be more lethal even on pitches like these. Yeah, you have to say that he's bowled with heart. I mean, for his skipper, he ran in last evening after a long day. He bowled literally 5 or 6 short deliveries and over. He did it for a consistent period of time. That shows how good is his attitude. Skill and the thought process will improve the more he play at this level. Yes, definitely the amount of first-class cricket or the game time you get, definitely it improves you physically, mentally, also gives you along the way a lot of observations that you carry for the matches and for the times to come. It's good to see him making an effort and he's still smiling. Well, it's very hard to keep Sarfraz quiet, even if he's behind the stumps or in front of the stumps. And Ahmed Shahzad as well. Looks like he's enjoying himself. Maybe cracking some jokes, keeping his teammates alive, because it's not easy to be in the field for that long. And that is something that you have to keep doing, to keep enjoying, because invariably there is an opportunity along somewhere, and if you're not concentrating, you're not active enough, you do miss out on that opportunity, and that then your agony in the field prolongs. .464 for 5, and time for drinks at the Gaddafi Stadium.
वेलकम बैक। कराची रीजन्स की इनिंग्स अभी तक जारी है। पहली इनिंग्स आज चौथा और आखिरी दिन है और आज 1 घंटा जो हमने खेल देखा उसमें फहद इकबाल LBW आउट हुए। उसके बाद कुछ बाउंड्रीज मिली सरफराज अहमद को, उन्हें अच्छे स्ट्रोक्स खेले ऑफ साइड में। रमीज अजीज भी खास से पूरे एतमाद लगे हैं और 30 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है रमीज और सरफराज के दरमियान। तो यहाँ अली मंजूर आएंगे अब लेफ्ट आर्म स्पिन का जादू जगाने के लिए। सरफराज ने लाइन को कवर करते हुए इस धकेला, बड़ा शॉट खेलने के लिए निकले थे लेकिन उसके बाद चेक कर लिया अपने शॉट को। ये वो खूबी है जहाँ सरफराज अहमद जो हैं फिर ये अपनी ही शर्तों में खेलने लगते हैं। स्पिनर को पहले कदमों का इस्तेमाल किया, उसके बाद स्वीप किया। ये क्लासिक बैटिंग है स्पिन के खिलाफ बैट्समैन की सरफराज अहमद ने, जिसका अभी मुजाहरा किया 2 ही गेंदों में। यही तरीका होता है स्पिनर को दबाव में लाने का भी। मरीना इकबाल हैं कमेंट्री बॉक्स में, खुश आमदीद। शुक्रिया तारिक भाई। सरफराज अहमद, रमीज अजीज दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिन को। स्वीप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सरफराज अहमद। रमीज अजीज हमने देखा है कि काफ़ी तहम्मुल के साथ बैटिंग कर रहे हैं, वक्त ले रहे हैं। कराची वाइट्स के बाद तवील बैटिंग लाइनअप थी जिसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं वो। सरफराज अहमद की भी कोशिश होगी कि एक बड़ा स्कोर यहाँ पे हासिल करने में कामयाब हो। रमीज अजीज के लिए स्लिप है, लेग स्लिप है। लेग स्लिप है ये इनको दरअसल स्वीप से बाज रखने की कोशिश है। रमीज गेंद खासा लेट खेलते हैं और आज अच्छी बैटिंग करते हुए ये नजर आए रमीज अजीज। सरफराज के साथ अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत तैयार रहना होगा हम रन के लिए। ज़्यादा बैकअप करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये गैप जो है ये ढूंढ निकालते हैं स्पिनर को। रिस्टी हैं, इसके अलावा क्रिएटिव हैं। रन्स की ताक में रहते हैं चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर। स्पिनर पे बिल्कुल गरेज नहीं करते कि वो स्वीप अपनाएं और महारत भी रखते हैं स्वीप खेलने में, चाहे वो पैडल हो। स्लॉग ज़्यादा नज़र नहीं आता लेकिन कन्वेंशनल स्वीप नज़र आती है। और आसपास के जो फील्डर्स हैं उनसे बात करने में भी कोई मजाका महसूस नहीं करते। अच्छा स्वीप शॉट खेला, ये फाइन स्वीप है सरफराज का। 1 रन का और इजाफा। स्वीप्स की वैरायटीज भी हम देखेंगे अगर ये पार्टनरशिप्स पनप गई रमीज और सरफराज अहमद के दरमियान। 467 पर 5। अच्छा तो ये शादी की निशानी है बस एमी यानी कि गला मुझे आगे जी फील्डर बड़ा अच्छा है जी। बड़ा अच्छा है अब तक जो बैट्समैन आउट हुए हैं कराची वाइट्स के, मां सिवाय दानिश अजीज के, बाकी तमाम खिलाड़ी जो हैं वो इनफरादी संगे भी अबूर करने में कामयाब हुए। नोमान अली वहाँ ना, मीर हमजा भी बैटिंग कर सकते हैं। नोमान अली तो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, ये टेस्ट मैचों में भी हम इससे पहले देख चुके हैं। यहाँ पर अहमद दानियाल अपना 22वां ओवर शुरू कर रहे हैं। फ्रंट किया सरफराज अहमद ने। अहमद दानियाल जो है कभी कभार लगता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल हैं दाएं हाथ के बैट्समैन को बॉलिंग करते हुए। पेस पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं अहमद दानियाल। बहुत ज़्यादा इन्हें मूवमेंट मिलती नहीं है इसलिए इनका जो नेचुरल एंगल कह सकते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है राइट हैंडर्स के खिलाफ। क्योंकि लेफ्ट हैंडर के अगर ये ओवर द विकेट आते हैं तो थोड़ा सा इनको या तो स्टंप्स के करीब या वाइडर आके एंगल क्रिएट करना पड़ता है।
उसमें इतने कंसिस्टेंट है नहीं। या मना किया रमीज ने। सरफराज अहमद ने इरादा जाहिर किया था क्रीज से निकलकर रन लेने का। आमतौर पर जब गेंद सामने जाती है तो ये स्ट्राइकर की कॉल होती है, क्योंकि वो सामने देख रहा होता है अच्छी तरह सारे मंजरनामे को। एक और फर्क जो आपने महसूस किया होगा कि जब स्पिनर पर खेल रहे थे सरफराज अहमद, आसपास के फील्डर से बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो ही फास्ट बॉलर आए ज़्यादा मुनहमिक हो गए। सरफराज ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं फास्ट बॉलर पर। वो अक्सर बैट्समैन हमने देखे हैं कि जो बैटिंग के दौरान वो बिल्कुल बातचीत करना पसंद नहीं करते, वो अपनी दुनिया में उसको खो जाना चाहते हैं। और कई तो ऐसे थे जो अपने साथी बैट्समैन से भी बात नहीं करते थे पार्टनरशिप में। मुदस्सिर नज़र उसकी एक मिसाल थे। मुदस्सिर नज़र, शुएब मोहम्मद। मुदस्सिर नज़र जो हैं वो अपने बैटिंग पार्टनर से भी बात नहीं किया करते थे बैटिंग के दौरान। इनफरादी ये कह सकते हैं एक चॉइस होती है, क्योंकि एट टाइम्स आपको बैटिंग में स्पेशली जब आप लंबा फॉर्मेट खेलते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ करना चाहिए। तो स्विच ऑफ में ये होता है कि आप अपने पार्टनर से, आसपास जो फील्डर्स खड़े हैं उनसे बात करते हैं, और उसके बाद जैसे ही अपने स्टांस में आते हैं तो आप स्विच ऑन हो जाते हैं, फौरन तैयार होते हैं बॉलर को फेस करने के लिए। यहाँ अराउंड द विकेट आ गए। अब ये जो है ये बाउंसर का शायद उस मकाम पर हम आ गए। कल इन्होंने किया था असद शफीक और फहद इकबाल के खिलाफ भी। कल चाय के वक्फे के बाद का जो सेशन था, अहमद दानियाल को इसी तरह बॉलिंग करते हुए देखा गया था। बिल्कुल, ये कल भी हमने देखा, लेकिन कल भी बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए थे। इस चीज़ का थोड़ा सा इन्हें एहतियात करनी पड़ेगी, स्पेशली सरफराज अहमद के खिलाफ। बहुत ज़्यादा बाउंस देखने को नहीं मिला, इतना गेंद छोड़ के नहीं निकला। सरफराज अहमद बैकफुट पे अच्छा खेल लेते हैं, पुल भी कर लेते हैं, तो बहुत प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए अहमद दानियाल को। ज़्यादा रफ्तार के साथ ये गेंद हमें नज़र नहीं आया। थोड़ा सा अनयूजुअल तरीका है डक करने का सरफराज अहमद के लिए। झुक जाते हैं, लेकिन जो उनकी बैक अगर आप देखें वो ऊपर ही रहती है, बिल्कुल बेंड नहीं होते। कोशिश ज़रूर होगी कि अब अगर मौका मिले तो पुल शॉट के लिए जाएं। प्रोटेक्शन इन्होंने रखी हुई है, फाइन लेग है और डीप स्क्वायर लेग भी मौजूद है, शॉर्ट मिड विकेट मौजूद है। अहमद दानियाल को थोड़ा सा मिक्सअप रखना पड़ेगा। मिडन ओवर नहीं रहने दिया सरफराज अहमद ने। गेंद को अच्छा पुश किया, 2 रन का इजाफा कराची के स्कोर में। 140 ओवर्स के बाद ये बात पहुंची है अब 469 पे। 5 ही खिलाड़ी आउट हैं। स्लिप है, लेग स्लिप है। ये फहद मुनीर इस वक्त पॉइंट पर नजर आ रहे हैं, जो अंडर 21 क्रिकेटर हैं लाहौर के। फुल टॉस पर स्वीप खेला, इतना क्लीन कांटेक्ट नहीं था, इससे 1 ही रन रमीज हासिल कर सके। इस सीजन में शर्त है टीमों पर कि 21 साल से कम उम्र एक खिलाड़ी खिलाना जो है ज़रूरी है, लेकिन जो 21 साल से कम उम्र बॉलर खेलें उनके बरक्स जो बैट्समैन हैं वो अभी तक अपनी सलाहियतों का उस तरह से इजहार नहीं कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में एक रीत रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का ये एक इनफरादियत है कि नौजवान जो बॉलर्स हैं
वो कम उम्री में ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको मौका मिलता रहा है, उनको कैप्स मिली हैं। बाहर निकलकर खेला, निहायत जारहाना शॉट सरफराज अहमद का, और ये 6। इस बार क्लीन कांटेक्ट था कप्तान का। स्पिनर्स को बिल्कुल भी नहीं बख्शते, अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया, बैलेंस अच्छा था, थ्रू द लाइन खेला है, इसलिए बहुत ही आसानी के साथ 6 रन बनाने में कामयाब हुए। फुल फॉलो थ्रू था, और अली मंजूर ने अक्सर देखा है कि बैटर्स इनको अपना टारगेट ज़रूर बनाते हैं, ज़्यादा स्पिन देखने को नहीं मिला और इनके जोन में आ गया था सरफराज अहमद। उम्दा बैटिंग सरफराज अहमद की, और इस वक्त जो नॉन स्ट्राइकर हैं रमीज़, या यहाँ तक कि जो लाहौर के खिलाड़ी हैं, नौजवान खिलाड़ी, वो भी महसूस हो सकते हैं और सीख सकते हैं सरफराज अहमद जो हैं स्पिनर को किस तरह से खेल रहे हैं, किस तरह से दबाव में ले रहे हैं चौथे दिन की पिच पर। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा मौका है। हम अक्सर देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, और इवन जब मैच खेलते हैं, जो आपके बड़े स्टार्स हैं जो टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और सरफराज अहमद ने तो कप्तानी भी की है। इस तरह जब आप अंडर 19, अंडर 21 या अंडर 19 के प्लेयर्स को ऐड करते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा मौका होता है कि वो सीखें और परफॉर्म करें। या खुद जो हैं अली मंजूर ये भी सीख रहे होंगे कि एक चोटी के बैट्समैन को जो स्पिन को कमाल खेलता हो उससे बॉलिंग किस तरह से की जाती है। 478 पर 5। जहां ये रहा वो रुदाद है, ये जो 21 साल से कम उम्र बैट्समैन जिनको इस साल मौका मिला है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। इरफान न्याजी जो हैं उन्हें 5 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 39 रन बना सके फैसलाबाद के लिए। फात मुनीर ने कल निस्फ सेंचुरी बनाई थी, 72 रन बनाए। और जीशान अहमद जो फाटा गए हैं 2 मैचेस में, उनके 24 रन हैं, तो किसी ने अभी तक 100 रन भी नहीं बनाए। ये 4 राउंड्स मुकम्मल होने के हैं। इनके बरक्स जो बॉलर्स हैं, ये जो अंडर 21 जिन बॉलर्स को मौका मिला है उनमें से कुछ मनवाने में खुद को ज़रूर कामयाब हुए हैं। जिस तरह आफ्ताब इब्राहिम है कराची वाइट्स के, वो इस मैच में भी खेल रहे हैं, उनकी 8 विकेटें। महरान मुमताज़ की कारकर्दगी अच्छी रही है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। महरान मुमताज़ पिछले साल ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेले थे, नॉर्दर्न की फाइनल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। तो क्या समझती है मरीना, जो कम उम्र बैट्समैन होते हैं उनकी इतनी जल्दी जो बैटिंग की डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती बॉलर्स की निस्बत, ये वजह? देखिए, अगर यहाँ पे बात करें जो अब्बास अली हैं, ज़्यादातर ये 6-7वें पे आके बैटिंग करते रहे हैं और 47 इनका हाईएस्ट है कराची वाइट्स के अगेंस्ट। तो बैटिंग ऑर्डर का भी ऑब्वियसली इसमें रोल रहता है कि किस नंबर पे आके वो खेल रहे हैं, कितना ओवर्स या कितना टाइम उनके पास मौजूद है। वही बात है कि अभी इब्तिदा है इनकी। आई थिंक इतना एक्सपोजर भी इनके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक होंगे और हुए भी हैं यहाँ से, जिन्होंने जल्दी अपने टैलेंट को दिखाना शुरू किया है। और थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जितने भी यहाँ पे टीम्स हैं। फहद वाहिद एक ऐसे अंडर 19 के प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक 50 रन स्कोर किए हैं, लेकिन अब्बास अली जो हाईएस्ट रहे हैं उन्होंने 47 किए थे कराची के खिलाफ। यहाँ ये आलियान महमूद जो हैं, ये इनको भी खिलाया जा सकता था इस कैटेगरी में। आलियान महमूद जो हैं ये भी अंडर 21 कैटेगरी में आते हैं, ऑफ स्पिनर हैं।
यहाँ आलियान जो हैं अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, अच्छा बॉलिंग एक्शन है इनका। पिछले साल ये यहाँ पर फाइनल खेले थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सिंध के लिए, उसमें 4 विकेटें भी हासिल की थी। और ऑफ स्पिनर्स की तो ज़रूरत भी है मरीना इस वक्त। बिल्कुल, स्पेशली जब लंबा फॉर्मेट होता है, इस तरह का फॉर्मेट होता है, तो आप एक अच्छे ऑफ स्पिनर, एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर को ज़रूर अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए। ये हमने देखा है कि स्पिनर्स का काफ़ी से रहता है लंबे फॉर्मेट में, और ऑफ स्पिनर्स की वैसी ही किल्लत नज़र आती है। एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर अगर आपको मिल जाता है तो उनको ज़्यादा मैचेस देके एक डेवलपमेंट फेज़ भी आप इसको कह सकते हैं, वो खुद भी बहुत कुछ सीखता है। और एज अ कैप्टन ये ज़रूरी होता है कि आप उस बॉलर को यूटिलाइज कैसे करते हैं। यहाँ जो टीमों के कोचेस हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस वक्त जिस तरह के डिसिप्लिन्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़रूरत है, जिस तरह के डिसिप्लिन के खिलाड़ियों की, उनकी ज़्यादा हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। राइट आर्म लेग स्पिनर पाकिस्तान को चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। स्पिनर्स का एक हम कह सकते हैं कि उन पर ज़रूर नज़र रखने की ज़रूरत है। जहाँ मिलता है, ख़ासतौर पर जो ऑफ स्पिनर्स है उनको ज़रूर खिलाना चाहिए, और लेग स्पिनर्स को। इसलिए आलियान का बाहर बैठना जो है, ये जाहिर है कि इस पे बात होनी चाहिए इस पे। ये फैसलाबाद के एक और बड़े बासलाहियत ऑफ स्पिनर हैं, ये मिस्ट्री बॉलिंग भी करते हैं। अरहम नवाब, वो भी नहीं खेले अभी तक, वो अंडर 21 कैटेगरी में आते हैं, स्क्वाड के साथ हैं। अरहम नवाब अच्छी क्लब क्रिकेट खेल चुके हैं, 478 पर 5। अब्बास अली टॉप पे हैं इस वक्त, और अभी हाफ वे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का हुआ है, आगे भी इनके पास मैचेस मौजूद होंगे। हसीबुल्लाह एक और उभरते हुए खिलाड़ी हैं जिन पे नज़र ज़रूर होगी। फहद मुनीर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और ये बॉलर्स हैं अंडर 19 में। आफ्ताब इब्राहिम 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए थे, 23 रन दिए थे फैसलाबाद के खिलाफ इन्होंने, उनको इन एक्शन भी हमने देखा है। उम्दा शॉट खेला, सरफराज अहमद अपनी धाक बिठा रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। उन्होंने 4 रन पाए। एक बार फिर कदमों का मुस्बत इस्तेमाल किया, और इस बार पिच पे पहुंचे नहीं थे, इसलिए थोड़ी सी अपनी जो शॉट है वो चेक की थी। फुल फॉलो थ्रू नजर नहीं आया, सिर्फ चिप किया है। कोशिश यही थी कि इन फील्ड को क्लियर करें, और आसानी एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए। अगर इस तरह की बॉलिंग करते रहेंगे तो महंगे साबित होंगे। सरफराज अहमद की ये खूबी ये है कि जब ये बाहर निकलते हैं बड़े शॉट की गर्ज से, अक्सर देखा है कई बार अपना शॉट जो है ये एडजस्ट भी कर लेते हैं, निकलते हुए भी गेंद की लेंथ को देखकर और उसकी रफ्तार को देखकर। ये खूबी जो है मुमय्यज़ करती है इन्हें दीगर बैट्समैनों से, और यही शो करती है कि कितनी महारत रखते हैं ये स्पिनर्स के खिलाफ। पिछला जो छक्का मारा था फुल फॉलो थ्रू था, क्योंकि पिच पे पहुंच गए थे। इस बार निकले जरूर और एडजस्ट किया। ये बाहर हैं ऑफ स्टंप के, और अंपायर्स अच्छी तरह जानते थे। रमीज अजीज पाँव जो है बाहर था, स्वीप शॉट खेलते हुए। जो अच्छे बैट्समैन हैं वो लाइन का ख्याल करते हैं और अपने पैड्स की पोजीशन का भी। अच्छा खेलते हैं रमीज अजीज भी स्पिनर्स को आउटसाइड ऑफ टर्म फेच करना चाह रहे थे, नजरें थोड़ी जल्दी हटा ली थी इन्होंने। और ये अच्छी गेंद नहीं थी और नतीजा भी अच्छा नहीं अली मंजूर के लिए। शॉर्ट गेंद बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ी, तरने वाला साबित हुई रमीज अजीज के लिए। और इसके साथ ही 50 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान मुकम्मल हुई। क्लूलेस लग रहे हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैटर्स के सामने। इतना पीछे गेंद था नहीं, लेकिन अच्छा इस्तेमाल किया क्रीज का रमीज अजीज ने। काफी देर से इस गैप की तलाश में थे, पहले स्वीप ट्राई की और उसी वजह से थोड़ा सा खींचा बॉल अली मंजूर ने, जिसकी वजह से भरपूर फायदा उठाया रमीज अजीज ने। आड़े हाथों ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज। सिर्फ 22 रन
अब कराची वाइट्स को बनाना है लाहौर वाइट्स का स्कोर बराबर करने के लिए। और ये उम्दा शॉट खेला और आसानी के साथ क्लियर किया इस मैदान को। पहला छक्का रमीज अजीज का विद द स्पिन उन निकलकर हिट लगाई। अटैक जारी है अली मंजूर के खिलाफ। इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था। एक बार फिर बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे क्योंकि मिड ऑन मौजूद था, बाउंड्री खाली थी, ज़्यादा मदद मिल नहीं रही। और जिस तरह की पेस से बॉलिंग करा रहे हैं ये बहुत ही आसान रन्स हैं दोनों के लिए स्कोर करना। एक और उम्दा शॉट और अब स्वीप ऑफ स्टंप के बाहर से खींच रहा है। 4 रन का और इजाफा। अली मंसूर रिसीविंग एंड पर हैं। दाएं और बाएं हाथ के दोनों बल्लेबाजों के सामने अब उनको खासी मुश्किल। 497 पर 5। मुश्किलात का सामना है अली मंसूर को। 19 रन आए हैं। मैच का अब तक का सबसे महंगा ओवर ये साबित हुआ है। ज़्यादा दोष दे भी नहीं सकते क्योंकि रमीज और सरफराज दोनों ही महारत रखते हैं स्पिनर्स के खिलाफ, लेकिन प्लान कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। विद इन स्टंप्स बॉल करा रहे हैं और कुछ ज़्यादा पेस में वेरिएशन नज़र नहीं आई। फ्लाइट देते रहे जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया सरफराज और रमीज़ ने। और दोनों के पास जो रेंज ऑफ शॉट्स है अगेंस्ट स्पिनर वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए एज अ बॉलर आपके लिए मुश्किल हो जाता है उनको खामोश रखना। ऐसा ऐसा दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। साथ साथ ये पार्टनरशिप भी लाहौर में बहुत ज़्यादा मसरूफ नज़र आ रहे हैं। अब दोनों ही खिलाड़ी 63 रन दोनों ने मिलकर बनाए हैं और इनकी नज़रें जो है बड़ी इनिंग्स पर होंगे। सरफराज अहमद 1 सेंचुरी बनाकर आए हैं अभी हाल ही में नॉर्थ से। या पापाजारी भी आपको मिल जाते हैं फर्स्ट क्लास मैचेस में। इस दौर में भी एक वो दौर था कि बड़ी तादाद में फोटोग्राफर्स आते थे फर्स्ट क्लास मैचेस की कवरेज के लिए। सबसे पहले वो जो लाहौर के मशहूर फेमस जो क्रिकेट फोटोग्राफर थे चाचा चौधरी के नाम से जाने जाते थे, एफ चौधरी, वो लाहौर की तारीख के भी सबसे बड़े फोटोग्राफर गुजरे हैं फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट में। उनकी ये जो आज हम पुरानी तस्वीर देखते हैं ये उन्हीं की मरहून मिन्नत हैं इस मीडिया सेंटर में लगी हुई हैं। एफ चौधरी आजहानी एफ चौधरी की वो तस्वीर जा बजा लाहौर से उनका ताल्लुक था। तहरीक पाकिस्तान का भी वो हिस्सा रहे एफ चौधरी। कोई मलाल रखेंगे नहीं सरफराज अहमद अगर अहमद आनिया के खिलाफ ज़्यादा रन आ नहीं सके, क्योंकि दूसरे एंड पे अली मंजूर को अटैक कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और ये एक लम्हा फिक्रिया है साद के लिए, क्योंकि जैसे बात करते हैं पार्टनरशिप्स बैटिंग में, उसी तरह बॉलर्स की भी पार्टनरशिप ज़रूरी है। अगर एक एंड से रन रुक रहे हैं दूसरे एंड से आप दे जा रहे हैं तो ये कुछ ज़्यादा मुस्बत रिजल्ट्स हैं नहीं लाहौर वाइट्स के लिए। चेंज चाहिए होगा उन्हें दूसरे एंड पे। किनारा लगा, कुछ ही पहले गिरी आबिद अली के, अच्छी तरह रोका। आबिद अली ने पिच में ज़्यादा रफ्तार नहीं है, अब गेंद भी पुरानी हो चुकी है, यही वजह है कि नहीं पहुंच सकी स्लिपर तक। और अच्छी टेक्निक देखने को भी मिली, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से खेला, बिल्कुल अपनी आंखों के नीचे खेला, इसलिए कैरी भी नहीं कर पाया। अगर शॉट खेलने जाते, चेस करने जाते तो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करता आबिद अली की तरफ, लेकिन खुशकिस्मती रही है सरफराज अहमद की।
अभी भी जी जान से बॉलिंग कर रहे हैं, बार बार दौड़ कर आ रहे हैं अच्छी रफ्तार के साथ। अहमद बशीर अब सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। अहमद और आपको एक मॉरल विक्ट्री तो ज़रूर मिल जाती है बॉलर के तौर पर जब ऐसी पिच पर आप सेट बैट्समैन का एज पाते हैं, लेकिन वो नतीजा नहीं जिसकी टीम को ज़रूरत होती है। खुद आपको भी लेकिन आज अच्छी लाइन को अपनाया है अहमद बशीर ने, और उसकी वजह यह कि आगे गेंद की इन्होंने, क्योंकि कई बार जो लेंथ है, आप जब अच्छी लेंथ पर आते हैं या आगे बॉलिंग करना शुरू करते हैं तो उससे आपकी लाइन जो है वो भी बेहतर करने में मदद मिलती है फास्ट बॉलर को। यही हमने देखा है अहमद बशीर के यहाँ भी। 498, 5 खिलाड़ी आउट। You've seen some attractive strokes from Sarfraz Ahmed. He's looked good. So has Ramiz Aziz. You wonder why Ramiz came at number 6 after Fahad Iqbal, because he's looked very good. And Sarfraz, who was in form as well, just kept himself down to number 7, probably allowing some of his batters to go above him and have some handy practice for the later rounds. Qaddafi Stadium is a very good wicket for batters to get some form. And looking sharp as ever in the com box. Ali Yunus, good morning. Very good morning. Shah Faisal, Karachi region trailing by 11 runs. And I totally agree with your point with how Ramiz Aziz has batted. Things looked really good, busy all the time, scoring, looking to score runs. And I wonder why, where was he in the last 3 years? We haven't seen much of him. He looks a quality batter, especially at the number he plays at, number 5 or 6. And he's lucky that he's got these conditions in his favor and is showcasing his talent here in front of us. I think we definitely have missed out on him in the last 3 years. He looks very stylish. Left-handers always do. But I'm wondering, Ahmad Bashir has bowled only 3 overs. Bilawal is into his second spell. And he's still on the field, but he hasn't bowled after those first 3 overs at the start of the play. He's normally the workhorse. He's been kept back. And Ali, like we heading into this game and there is hardly any chance of a result unless there is a miracle. But this tournament is happening on the back of the inter-district tournaments. And a lot of young players performed really well. You wonder halfway through the season, the teams do look to freshen up their sides and get some of those youngsters in, fresh legs in the field. It's been hot. And long 4 weeks. The turnaround time between games is only 2 days. What do you make of it? Yeah, it's very important, Faisal, that you value your inter-district performers, but we have not seen that happen. Especially, I can talk about Lahore cricket because I have witnessed a lot of inter-district cricket that was happening around in Model Town grounds. I especially went to the grounds and saw the performers, and I was pretty surprised that only one performer from Lahore, that is Ali Manzoor, that has been included in Lahore White's side. Other performers have not been included, nor for Whites or Blues. There are a few names, Shah Faisal, I'd really like to highlight. Those performers
who've not been given the opportunity so far, although still there are games to play. But Lahore Whites are going to play here. The next game will be their last one. So ideally, I wanted young batters to come in here at Gaddafi Stadium. Easy conditions so you can develop them. A few players I'd really like to mention. Mohammad Faik, who's been included, but he's on the bench. He's 5 innings. He has scored 447 runs with an average of 149, highest of 181. And in 5 innings, he has scored 300s and still on bench on easy batting friendly conditions. That is a big surprise. Looking for 2, Sarfraz running hard. Ahmed Shahzad in hot pursuit. Does well. Brilliant work. Well, we'll continue on what we're talking about. All these youngsters in the frame. 499 for 5. In Ali, there's nothing like you being there to witness some of these performances. It's not just that you're relying on scorecards. So when you come up with this information, it's very handy. Any other particular guys that caught your eye? Yeah, there are plenty of them, Faisal, and it surprises me that none of them have got the opportunity. Another very talented player, Hashim Ibrahim from North Zone, 5 innings, 300s, 425 runs with 300s to his name, average of 85. Then there's Hassan Rizwan, also 9 innings, 409 runs. Umair Danial, who tops the list from East Zone, 8 innings, 489 runs. Imagine not getting an opportunity. None of them, other than Faik, has made it even into the squad. Yeah, that's my concern. Only Faik is being called in this game, or Ali Manzoor, who's playing. That's it. Other than that, Hassan Rizwan, Umair Danial, and these were not easy conditions. These are humid conditions where these batters have scored runs. Talking about bowlers also, Asfand Mehran is one. He plays for Blues. He's in the squad of Blues, but has not been given the opportunity. 25 wickets, Faisal. 2 fifers, 1 10-fer for him in inter-district. I'm talking about Ahmed Bashir. He is into the attack, and that cut really low. Sarfraz watched it all the way. Otherwise, he would have been in trouble. Now, again, I'll come back to the same point again of not giving the opportunity to inter-district performers. Asadullah from North Zone. He's got 22 wickets, 4 games that he has played and not been given the opportunity. Same is the case with wicket keepers. Irfan Abid with 10 catches. Sami Hassan also from West Zone. 7 catches, 3 stumps, 10 dismissals. You got to add these youngsters. They bring the flair. They bring the flair. Second, for the development of the players. Call for 2. Sarfraz is running hard again. He's very, very busy. So is Ramiz Aziz. Tiring fielders of Lahore Whites have really been given a run around by this Karachi team, as 500 has been brought up in the process. 1,000 runs at the loss of just 5 wickets. They're making the fielders run around because these two players, they find the gap perfectly. They nudge around, run themselves well, and make the fielders work hard too. That's the quality of this partnership, which is 68 of just 112 deliveries. At 502 does remind me of one of the cricketing greats. That was 501 though. Brian Charles Lara, he made it all on his own for Warwickshire. Made that world record. What a player Brian Lara was. Superb. And it took 7 batters to score 502. Imagine 1 batter scoring. What an inning that must have been. Treat to watch for anyone who has seen that inning in the ground. I'll still come back to the same point, Faisal, of inter-district players. There are no results coming here at Gaddafi Stadium. So you got to bring in some energy. You got to bring in some youngsters, some fresh legs. You'll get fresh ideas because they will be the one who will be hungry for their own performances, for the results. So yes, Lahore region, they need to indulge. They need to include young players, young legs. This is a good run. Very good running.
He knew from the moment he hit it that there is one available. Excellent cricket from both of these batters. It's always a good idea to bring youngsters in. And youngsters watching, you can learn a lot from this piece of running between the wicket, how beautifully it was called. And then Sarfraz responding very nicely. Yeah, like I just said, Ali, we're halfway through the season at round 4. And that's the time where the management can look to see that what has gone well and what hasn't gone well, where they need reinforcements. And that means that they can go back and look at the performances of some of these youngsters that you mentioned. Not a bad idea to freshen up things. Results are not coming anyway, so it's worth a try. 504 for 5. Yeah, this is another very interesting graph that we are looking at the screen. Talking about the fresh legs, under 21 bowlers. If Aftab Ibrahim from Karachi Whites has looked really good, 8 wickets he's taken. Mehran Mumtaz also, we've seen him before. 8 wickets to him also. Awais Anwar for Rawalpindi. Hunain Shah, younger brother of Naseem Shah. He's taken wickets, also 5 wickets. So I believe these under 21 cricketers, if you can utilize them better, they will give you that balance. Like somebody like Mehran Mumtaz or Aftab Ibrahim. If you think couple of them, like Mehran and Hunain Shah, probably they don't need to be in that rule to get into the playing 11 because they're as good as they are. But the others do need that cushion of the rule. Fahd Munir, we saw, he's averaging 51 because he was able to get 71 here. I beg your pardon, this is his bowling statistics. He just took 1 wicket. But Aftab Ibrahim, who bowled here, looked in good rhythm, but still he's very young. Amal Khan is another one in that list. Who's very promising. Keep an eye on that. And this is the batters. Yeah, this is what I'm more interested in. The batters. Abbas Ali from Peshawar, 158 runs. I'd like that average to go up or the highest score to go up. This will go up more he plays. Irfan Khan Niazi, we know who he is. He's more of a T20 player, but he's been given the opportunity from Faisalabad side. Hasn't scored many runs, but he will get runs. He's got that potential in him. Fahd Munir, we saw him play a good inning, 72 runs. Total of 93 runs he has scored. Hasibullah, all the way from Quetta, playing for Multan, 73 runs. Then Aftab Ibrahim also for Karachi White. He can bat too. So he can be a handy cricketer if he's in both lists, Faisal. And once again in that list, a couple of players, they don't need to be 21 to get into the playing 11. Hasibullah is another one, although his stats are very mediocre at this stage, but he's playing up north. The conditions are different. Compare that to Fahd Munir, who's got 4 games here, and he's averaging 31, but he's got the easier part of the conditions. He will be tested when we go up north. There's a lot of debate about this rule, though, because first-class cricket is for mature cricketers, experienced cricketers as well. So there is still a jury out if that is a good rule or not. Well, I'll go with this rule somehow. Because if you look around in this side and the inter-district performers, no youngster has been given the opportunity. So you're forcing that youngster into the side. Otherwise, he might not get the opportunity too. So they're forcing another one youngster to at least play and develop him. That's my concern. But my counter argument is, and that will bring me to one of the names you mentioned in that list as well. As Sarfraz clips it nicely into the gap, he will run hard and get too easily. So a 22-year-old or a 23-year-old who's as good as the others and he's performing well, I'll give you the name Faik Butt. Fahad gets in instead of him. And you saw Fahad's name nowhere near in that inter-district performers list. So that will be a counter against that rule. I can partially agree with what you're saying, Faisal. Maybe you can
you can increase that age limit to 23. That's one way of doing it. But at least they're forcing these teams to play these youngsters. I totally agree with what you say. But then again, you can increase that age to maybe 23 or 24, that you can force these, or you can put a limit that he has to perform, that under 21 player has to perform in inter-district to get into the side. Back in the day, Ali, and Farhan will vouch for that, there used to be a tournament called under 23. And that is the category where you pick up players from under 19 who can't get into their senior sides. So you create another age group competition between 19 and 23. And that's where you get a separate pool of youngsters coming in, challenging the senior side in the first class teams. Under 23, yes, I will go for that. If you can increase for 2 years, you were talking about the maturity also. So by 23, you're mature enough. But performance has to be one criteria, regardless he's under 21 or under 23. If he is performing, if he hasn't performed at inter-district, he shouldn't be included, regardless of the age limit. Runs. Beautifully played by Sarfaraz Ahmed. He was not expecting this ball to go all the way to the boundary, but he timed it so beautifully well. And with that boundary, Karachi region lead now. That is a good performance by Karachi White side, considering that they've been in the field for a day and a half and then coming and scoring so many runs. Sarfaraz has looked in very good order. A transfer of weight, just a caress, a teasing chase. Lahore has chased the leather for 142 overs, 146 overs, and Sarfaraz is grounding them to dirt. Just the 1-run lead now. It's not significant, but still a psychological milestone. Talking about that under 23, it's not that it's not happening anywhere else in the world. Just across the border in India, they do have the Quaid-e-Azam trophy, which is for under 23 players. Something to look into? Most definitely, yes. So yes, I'm actually asking the Lahore region to include these domestic performers, the inter-district performers, because then that inter-district performance, where do they go? The value decreases of inter-district. That's the only concern I have. Once again, good use of the wrist. Sarfaraz has found the gap again. Beautiful timing and placement. He's really toying with the bowling and fielding of Lahore Whites. Boundary to finish off the over. 514 for 5. Played it late, played it in the gap. That's the quality Sarfaraz possesses. The way he finds the gap. I think he's one of the best middle order batter we have in the country, Sarfaraz Ahmed. The way he can maneuver the field, and at times whenever needed he can use the long handle too. So great prospect, still hungry for runs, still going big. 514 for 5. Karachi region lead by 5 runs. Do you think Karachi will take a chance and declare and bring Lahore Whites to see if they can force a quick collapse of 150 odd? No, I don't think so. That's going to happen. Short and sweet from Ali Yunus. Yeah, I don't envy any bowlers wanting to bowl on this pitch. So Ramiz Aziz closing in on his 50. Very polished knock from the left-hander. And both these two batters, you have to say, have played attractive knocks. Very little in the game. Without their attractive stroke play, it would have been pretty dull, the proceedings, but they brighten up this day, even though there is no chance of a result. Karachi was in the field for 137 overs. Now Lahore for 147 overs. Sarfaraz must be thinking, you want it this way, you will get it this way. You made us work hard, we're going to do the same to you. We're going to tire your bowlers too. Yeah, and some. They've already batted 10 overs more.
with only 5 wickets down. They're really grounding them to dirt, these bowlers. Hot weather without much recovery time, just the 2 days between the games. This reminds me, Shah Faisal, you'll be on it very soon. Tomorrow, is it? I'm dreading it. I'm dreading it. It is a long, long journey. I don't like the travels, but you know, it's inevitable. But I just love the passion you have for the game and for the work you do, Shah Faisal. It's highly commendable that you travel all the way from US just to work for Pakistan domestic and serve the country like this as a commentator. It's a fantastically well done. Thank you. I just love to be the part of this wonderful broadcast as well. TPT broadcast for Pakistan Cricket Board. It's really an honor and privilege to be a part of it. So yeah, it's all worth it. And I'll do it again many times. Yeah, you get to commentate alongside me. That's another advantage you have, no? I have to think twice. You can be very annoying sometimes. I have to put up with you. But yeah, we do enjoy our time. We've done it now for 4 years, so we better enjoy it, otherwise it will become very, very hard. Especially watching all these draws here at the Gaddafi Stadium. It gets pretty tough sometimes. And there is nothing happening. There's no expectations of a result. Just players playing for themselves like it's happening at the moment. But still we're trying to find something to talk about. And it helps having somebody like you alongside who understands the game, who loves the game. It's always very good to have you. Thank you, Ali. And yeah, like I said, this whole broadcast, the whole team, we get along so well with each other. Calling for 2, Ramiz Aziz, and will do it. Ali Zaryab, who made a double 100 himself, is doing the chasing on this occasion. 148 gone, 518 for 5. It's that time of the day when Shah Faisal doesn't speak to anyone. Guess what? It's lunchtime. Just 5 minutes to my favorite time of the day. I'm not going to hide it. Yeah, we were talking about this wonderful broadcast and the environment we have. Our producer Rehan Mirza, director Shahid, known as Shahid Selfie, the very famous man. Our statistician Farhan Nisar, ever present, legend of domestic cricket. But a lot of hard work is done by all the cameramen as well, Ali. We get breaks, but those cameramen, they stand on their feet all day long, and they have to concentrate on every single ball. Absolutely. Salute to all these people. I think they're the most hard-working people. Here's Afzal. Just say hello, Afzal. I can't see you, so I can't name you guys. But Nadeem well and done. Hassan, Ali? Asad, rather. Yes, that's Imran. Good eyes. You can tell without even I know looking their at the face. position. Where's our old friend Kichi, Abdul Qayyum? The last two were Hamza and Abrar. This is beautifully played. Ramiz Aziz brought up his 15 style. He's looked very good against spin, especially that sweep shot have been excellent for him. 32nd 50 for Ramiz Aziz. Oh, he's been brilliant. The best 50 that I have seen here at Gaddafi Stadium in this season.
He's got that flair, he's got that energy, he's got that hunger in him. Ramiz Aziz making his comeback and making the most use of these conditions. Just played really well, always looking for runs. Well done, Ramiz Aziz. You would have thought he'll have some trouble playing out of the rough against the left armour, but he's really been severe on Ali Manzoor, and that sweep shot has been his go-to shot. Despite being two sweepers there, he split them perfectly. It's been a tough match for Ali Manzoor. 189 runs he's given. He's performed well in inter-district, Ali Manzoor, but probably these were not the conditions to give an opportunity to your youngster or the performer. I won't call him exactly a youngster, but these were the conditions to play your inter-district batters, not the bowlers. You can play the bowlers up north where the conditions are friendly, but in these conditions, yes, batters should have played. Well, one double hundred for Lahore Whites by Ali Zaryab. And Ali Manzoor is closing in on his double hundred. It's very rare when you see a bowler conceding that many runs. But if it can happen at one place, that is at Gaddafi Stadium. Yeah, that is another 50 for the Sarfaraz Ahmed, for the captain of Karachi Whites. 65th 50, third of this season. He is in some red-hot form. Sarfaraz Ahmed this season is keep on scoring runs. The commitment is still there, the energy is still there, the hunger is still there. Third 50 to go with that 100 this season. He's really churning out those runs. Still very much part of the Pakistan Test setup. The difficult tour of Australia coming up. Good to see him in runs. Over and time for some lunch, gentlemen. That is the call from Ghulam Sarwar, the umpire. Another session where the bowlers dominated, batters dominated. I wish bowlers had dominated, but no, it's batters. And very, very happy and relieved the fielding side to go inside and have some lunch and put their feet up for 40 minutes. Yeah, it has been a good partnership. 91 run partnership between these two. Fahad got out early, and then it was up to these two to score some runs. Run rate also impressive, 3.92 in this over, in this session. 91 runs have been scored. They will be disappointed because once you get that early wicket of Fahad Munir, they were hoping that they will make some inroads, but that did not happen. You know what's most important figure, Ali? That 24 overs in the session, which means that you will have to do a lot of overtime because today is the last day. We get to go get the overs in before the 15 of the last hour starts. But these two, like I said, in a very dull game, they have brightened up the proceedings. Ramiz Aziz is attractive half century. Sarfaraz also played very, very fluently. And it was very, very good to watch this first session. Thanks to these two. At the bottom of these card, not out 52 and not out 50 respectively. The only casualty was Fahad Iqbal, who was taken out early doors by Bilawal Iqbal for his overnight score of 61. A total of 149 overs for the Lahore White bowlers and still counting. You really have to be really unlucky to get out on 9 when everyone around you is scoring 50s, and that was Danish Aziz. 110, 102, 113, 61, 52, 50, and just one single figure, that is 9 runs by Danish Aziz. It has been a tough work for the bowlers. 149 overs been bowled. Have a look at Ali Manzoor, 46.5 overs. He's given away lots of runs, 191. He's taken one wicket for Ahmed Danial, one for Bilawal Iqbal. Fahad Munir, Ahmed Shahzad also used for few overs, but the surprise was Saad Naseem. He bowled 15 overs, 51 runs, and took 2 wickets. 525 for 5 at lunch, day 4. Surprised to see Saad not bowling himself, the leading wicket taker.
session started off with this wicket of Fahad Iqbal. Good decision by umpire and excellent bowling by Bilawal. Sarfraz started off with a thick edge, but then he was into his work very, very quickly. Ramiz Aziz matched him shot for shot, both against spin and pace. Good use of the feet by Ramiz Aziz. That sweep shot was on offer plenty of times. Sarfraz was just timing and placing the ball. Another gorgeous sweep shot to bring up the 50 for Ramiz Aziz. A feat that Sarfraz achieved just minutes later. And both these batters walked out quite satisfied and pleased. And I'm sure they will be tucking into a good lunch. We'll take a short break as well, and we'll be back with action in the afternoon session in just about 35 minutes.
खाने के वक्फे के बाद खेल शुरू होने को है। लाहौर वाइट्स और कराची की टीमें आमने सामने हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के इस मुकाबले में। राउंड 4 का मैच है और अब तक कराची की टीम को बर्तरी हासिल है। 16 रन से उनने लाहौर को पीछे छोड़ा है। अभी भी 5 विकेटें बाकी हैं। रमीज अजीज और सरफराज ने मिस सेंचुरियां स्कोर की। आज पहले सेशन की यही खास बात थी। फहद इकबाल आउट हुए इस 2 घंटे के खेल में, जिनकी विकेट बिलावल इकबाल ने हासिल की। रमीज ने बड़े एतमाद के साथ बैटिंग की है। बहुत अर्सा पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नज़र आते थे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट में भी। आज भी अपनी धाक बिठाई, अच्छा चार्ज करते हुए नजर आए। स्वीप शॉट भी महारत से खेले और इस नेक्स्ट सेंचुरी के बिलाशुबा ये हकदार थे। सरफराज अहमद ने उनका अच्छा साथ दिया। पहुंचते ही तेज रफ्तारी के साथ रन बनाना शुरू हो गए थे। उनने भी रमीज की तरह 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। इस सामने स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को सुख का सांस नहीं लेने दिया, क्योंकि बाउंड्रीज के दरमियान इनकी जो रनिंग थी वो भी खातिर खा रही। तो अब इस मैच के जो 2 सेशंस बाकी हैं, बॉलर्स को ज़ाहिर एक बड़ी मुश्किल रही है। साद नसीम ने कल 2 विकेटें हासिल की थी। अली मंजूर और अहमद दानियाल ने भी कल एक विकेट ली और बिलावल इकबाल ने आज फहद इकबाल की विकेट अपने नाम। अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, इसमें क्या मुमकिनात हो सकती हैं। ये दोनों नॉट आउट बैट्समैन मैदान में आ गए हैं। सलमान बट कमेंट्री बॉक्स में पहुंच गए हैं, वो बात करेंगे मुमकिनात पे। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। और बिल्कुल ये मैच इस नहज पे आ गया कि जहाँ से नतीजा खेज तो नहीं लगता कि आगे कोई नतीजा होगा। और ऐसे में यह है कि दोनों टीम्स के मैचेस इसके बाद डेफिनेटली वो जीतना चाहेंगी। यहाँ पर तो मैच का रिज़ल्ट आया नहीं, तो अपने बॉलर्स को जो है वो आराम कराना चाहेंगे, उन पे ज़्यादा लोड ना पड़े, वो अगले मैच से पहले फ्रेश हों। तो यहाँ पर कोशिश तो कराची की भी होगी कि वो जितना खेल सके खेलें, और लाहौर चाहेगा कि उनकी जो बॉलिंग है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना हो, वो थके ना हो, इंजरी की तरफ ना चल पड़े। तो ऐसे में देखना है कि आउट करने के लिए क्या कोशिशें करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बहुत ही तजर्बाकार और बहुत ही कह लीजिए कि स्किल्ड बैटर्स जो हैं अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे हैं और बड़ी आसानी के साथ रन्स बना रहे हैं और अपनी टर्म्स के ऊपर खेल रहे हैं। तो बॉलर्स जो हैं उनके लिए इस वक्त खासी मुश्किलात हैं। सरफराज और रमीज़ दोनों स्पिनर्स को भी बहुत आउटस्टैंडिंग खेलते हैं और फास्ट बॉलर्स को भी इक्वली गुड इन्होंने बैटिंग की है अभी तक। सो लाहौर के लिए फ़िलहाल मुश्किलात हैं और देखते हैं कि अपनी मुश्किलात से निमटने के लिए क्या प्लान है। और यहाँ पर साद नसीम वो पहला हथियार हैं जो लाहौर ने इस्तेमाल करने की, ऐसा लगता है कि जहाँ से मैच रुका था वहीं से शुरू हुआ। पहले बॉल को आसानी से प्लेस किया सरफराज ने और 1 रन हासिल किया। फील्ड में तब्दीली की जा रही है। अली मंजूर को अब ये लेफ्ट हैंडर के लिए ये लॉन्ग लेग की तरफ लेकर जा रहे हैं। फास्ट बॉलर पर जो लॉन्ग लेग फील्डर खड़ा किया जाता है, स्वीप शॉट से रोकने की कोशिश है। जी बिल्कुल, ये दोनों ही बैटर्स जो हैं बड़ी महारत से स्वीप शॉट खेलते हैं और उसका बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं। स्पिनर को बिल्कुल अपनी लाइन लेंथ में सेटल नहीं होने देते, इनकी कोशिश यही होती है। और ऐसे में दूसरी टीमों को भी मालूम है और इसीलिए वो स्वीप का फील्डर जो है आपको बाउंड्री पे नज़र आ रहा है। यहाँ ये क्योंकि रिवर्स स्वीप भी करते हैं, इसलिए पॉइंट के पीछे भी एक फील्डर हैं, ये वहीं से आए थे गेंद को रोकने के लिए। रमीज़ बड़े स्किल्ड बैटर हैं स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स, और बहुत अरसा हबीब बैंक के लिए मिडल ऑर्डर में बहुत सारी बैटिंग की इन्होंने और वही इनकी वजह शोहरत भी है। रन्स करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट नॉक्स खेली इन्होंने हबीब बैंक के लिए। और यहाँ पर आज एक बार फिर 52 रन्स पे खेल रहे हैं। अच्छा शॉट था लेकिन रन नहीं मिलेगा। बिलावल इकबाल गेंद को रोकने में कामयाब हुए।
बहुत मेहनत करना पड़ी है लाहौर के फास्ट बॉलर्स को। 150 ओवर्स से वो फील्ड में मौजूद हैं और अब तो आदी भी हो गए ये खुद भी बैटिंग करने के और कराने के भी यहाँ, क्योंकि चारों मैचेस यहीं खेले। जी बिल्कुल, और बहुत शिद्दत से चाह रहे होंगे कि अब किसी ऐसी जगह जाया जाए जहां पर मैच एक तेज़ पेस पर चले। 527 पे 5, 150 ओवर के अख्तिताम पे। उधर पीछे देना। यार हमें भी आंसर नहीं मिल रहा। थैंक यू सो मच आप। 18 रन से बरतर है इस वक्त कराची लाहौर के खिलाफ, और अली मंजूर अब ये अपना मैराथन स्पेल जो है ये जारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये 5 गेंदें जो हैं कल इन्होंने की थी जब अहमद दानियाल जख्मी होकर बाहर गए थे, तो उनका ओवर जो है इनको पूरा करना पड़ा था, वो एक ही गेंद कर सके थे। तो ये 151वां ओवर अब शुरू है लाहौर वाइट्स की बॉलिंग का। सलमान, आप को सबसे तवील तजुर्बा कब हुआ आपने फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स गुजारने का, जो आपको तजुर्बा हुआ हो फर्स्ट क्लास मैच में? फर्स्ट क्लास मैचेस में एग्जैक्टली तो याद नहीं पड़ता कि वो कौन सा ऐसा मैच था जिसमें बहुत तवील हमने फील्डिंग की हो, क्योंकि यूजुअली बॉलिंग अटैक्स बड़े अच्छे होते थे और इस तरह की नौबत आती नहीं थी ज़्यादा, लेकिन टेस्ट मैचेस में कई बार ऐसा हुआ है लाजमी। श्रीलंका के अगेंस्ट कराची टेस्ट मैच था, लेकिन उस पर फिर हमने भी जवाबी इनिंग बहुत ही लंबी खेली थी जिसमें यूनुस भाई ने ट्रिपल सेंचुरी की थी, तो वो भी एक मैराथन फील्डिंग एफर्ट था। और उसके अलावा इंटरनेशनली तो ज़्यादा इस तरह के मैचेस नहीं होते हैं। यहाँ वो जो कराची का टेस्ट मैच था उसमें 2 डबल सेंचुरियाँ बनी थी श्रीलंका की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से। ट्रिपल सेंचुरी यूनुस खान की, कामरान अकमल ने सेंचुरी बनाई थी, पाकिस्तान ने बर्तरी हासिल की थी। 155 ओवर्स श्रीलंका ने बैटिंग की थी, तो अभी रिकॉर्ड आपका है इस लाहौर की टीम से, आप आगे हैं। जी देखिए, वो एक तो टेस्ट मैच था, दूसरा कराची का जो मकाम है वहाँ नेशनल स्टेडियम में वो टेस्ट खेला जा रहा था, लेकिन यहाँ लाहौर में तो जैसे आपने कहा कि आदत सी बन गई है, क्योंकि ये तो चौथा मैच है और एक ही स्टोरी यहाँ पर चल रही है, इस कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा। इस बार बैकफुट से खेला, ये रन लिया जा सकता था। सरफराज अहमद जो है आखिर में मुतमईन हुए, 528 पे 5। चार 34 पर 5वीं विकेट गिरी थी, उसके बाद से इस बैटिंग पेयर ने अपनी टीम को लीड दिलाई है। अच्छा खेलें दोनों, जो हैं स्पिन के सामने खेलते हुए और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रमीज़ और सरफराज, इनके पास बहुत ज़्यादा शॉट्स हैं स्पिनर्स के सामने और अच्छा मजबूत दिफा है, और ये सबसे बड़ा खासा है जिस तरीके से स्वीप करते हैं पूरी तरह कंट्रोल में। जी बिल्कुल, टिपिकल ऑफ दोज बैटर्स जो स्वीप पे बहुत ही महारत रखते हैं, और स्पेशली कराची रीजन में अक्सर प्लेयर्स जो हैं, क्योंकि जो अपनी क्लब क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को मदद मिलती है और ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे बॉल बहुत ग्रिप करता है, तो स्वीप शॉट जो है बड़ा ही एक लाजमी समझ लिए कि उसमें महारत होना लाजमी है अगर आपको कराची की लोकल क्रिकेट में रन्स करने हैं। और इस वक्त जो हम इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहे हैं, जो ज़्यादातर बैट्समैन हैं बेशतर टीमों के, यहाँ तक कि एशियन टीमों के भी, वो स्पिन को अब वैसे नहीं खेलते जो महारत होती थी, जिस तरह जहीर अब्बास या सुनील गावस्कर या 5वें दिन की पिच पे भी वो अपनी महारत साबित किया करते थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन पाकिस्तान से, जावेद मियांदाद
अब स्पिन के खिलाफ वैसा जो है कमाल है कि कम नजर आता है। क्या क्या वजह है? ज्यादा मशीनों में प्रैक्टिस करते हैं बैट्समैन या कोई और वजह? नहीं तारिक भाई, बेसिकली क्रिकेट से मुतल्लिक बहुत सारे सवालों का जवाब एक ही है, T20 क्रिकेट। क्योंकि उस क्रिकेट का गलबा इतना हो गया है और इतनी ज़्यादा वो खेली जाती है और उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि लोग तैयारी ही उसकी करते हैं। और जो उस पे एम्फसाइज नहीं, उससे हट के लंबे दौरानी की क्रिकेट पे जब आप एम्फसाइज नहीं करते, उसको खेलते नहीं, उसकी तैयारी नहीं करते, तो आपके स्किल सेट्स भी जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं टू दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट एक तरफ। तो उसमें ना तो स्पिनर आपको फ्लाइट करता है, ना वो बॉल को हवा दे के चांस लेता है, क्योंकि उसमें तो उसे पता है बैटर्स तैयार हैं बड़ा शॉट मारने के लिए। 152 ओवर्स का अख्ताम, 530 पे 5 कराची। एक और उम्दा स्वीप शॉट, इस बार सरफराज अहमद को 2 रन मिलेंगे, 30 रन भी हासिल कर लेंगे। तो खासी तेज दौड़ लगाई थी रमीज अजीज, जानते थे कि आखिर में डेंजर एंड की यानी उन्हीं को पहुंचना है। बराबर आ गए सरफराज अहमद अब रमीज अजीज के, हालांकि उनके बहुत बाद में ये खेलने के लिए आए आज। एक बार फिर उस शॉट का मंजर और बहुत ही नीट स्ट्रोक मेकिंग है इनकी, स्पेशली जब ये स्वीप मारते हैं बड़ी आखिरी वक्त तक निगाह जो है वो बॉल पे रखते हैं। और यही सीक्रेट है, यही इनका जो सक्सेस रेट है वो यही चीज़ डिटर्मिन करती है कि बॉल को बहुत ही कम मिस करते हैं ये। हालांकि ये ऐसा बॉल है कि अगर पैड्स में लग जाए तो अपील भी होगी और खासा करीबी मामला हो सकता है, लेकिन जो महारत है गेंद को मिस ना करने की वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। मिड ऑफ डीप है, कवर पोजीशन पर भी फील्डर पीछे हैं, लॉन्ग ऑन पे भी सरफराज को 1 रन देने पर आमादा है साद नसीम। शायद उन्होंने भी समझ लिया है कि बाउंड्रीज जो हैं वो बचाई जाएं, इस बर्तरी को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि अब ये इनफरादी जो हैं ये आदाद व शुमार का ही खेल रह गया है आज की हद तक। बिल्कुल, और टीम की बर्तरी से भी फर्क नहीं पड़ता कि किसकी कितनी बर्तरी है, क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो तो पहले 100 ओवर्स तक ही, उसके बाद अगर मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है तो कह लीजिए कि उसका कोई मकसद नहीं है, उससे कोई टीम्स को या टूर्नामेंट को कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय उनके इनफरादी अदाद शुमार के। यहाँ 3.51 रन औसत है कराची की, और ये अच्छी औसत है इस एतबार से कि उनने भी बहुत वक्त जो है फील्ड पर गुजारा था। इसके बावजूद जो है वो शाबाश मिलनी चाहिए खुर्रम मंसूर और अम्माद आलम को, जिस तरह 138 ओवर्स फील्ड पे गुजारने के बाद उन्होंने यहाँ बैटिंग की, 169 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की, 37 पे 5। आज चौथा और आखिरी दिन है कराची वाइट्स और लाहौर वाइट्स के इस मुकाबले का, जो किसी नतीजे की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आया पहले ही दिन से। तो वापस चलते हैं कुछ देर के लिए उस कराची के टेस्ट मैच की जानिब जो रिकॉर्ड शिकन था, जिसमें यूनुस खान ने यादगार सेंचुरी बनाई थी। तो 155 ओवर्स जो है फील्ड में गुजारने के बाद जब आपने ओपनिंग की होगी तो जाहिर है वो बहुत ही एक मुश्किल सा तजुर्बा होता है इतने ओवर्स। जी बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा एहसास अभी भी मुझे हो रहा है उस थकावट का जितनी शिद्दत से आपने मुझे याद कराया है, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं खड़ा होकर थोड़ा स्ट्रेच कर लूं
लेकिन डेफिनेटली एज एन ओपनिंग बैटर ये एक ऐसी चीज़ है जो शुरू से आपको पता होती है, बिकॉज आप फील्ड से बाहर आते हैं तो सबसे पहले आपने खेलने जाना है, तो वो जो माइंडसेट पहले से प्रिपेयर्ड होने का है ना, वो बड़ी मदद करता है। हालांकि बिल्कुल इससे बहुत सारी थकावट होती है, और इनिशियल शुरुआत के जो शुरू के चंद ओवर्स हैं उसमें आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, और एट टाइम्स आपका जो दिमाग है उसके साथ आपकी टांगें नहीं देती। लेकिन ये एक टफ पीरियड है जो आपको गुजारना पड़ता है। और उसके बाद हमने भी 250 ओवर्स, पाकिस्तान ने भी बैटिंग की, और 100 ओवर्स ऊपर श्रीलंका को हमने रखा इसके अंदर। और मुझे याद है कि मुथाया मुरलीधरन जो है वो जब 160 से ऊपर ओवर गुजर चुके थे तो वो हमारे ड्रेसिंग रूम के बाहर आए, तो उन्होंने आकर वहाँ पर 3-4 जो है ना जंप्स लगाई, और उन्होंने कहा कि आई एम स्टिल फ्रेश। तो फिर हमने कहा ठीक है, फिर थोड़ी और बॉलिंग करवाते हैं इनसे। 65 ओवर्स बॉलिंग की थी मुरलीधरन ने उस टेस्ट मैच में। बाद में यहाँ पर जब वो लाहौर आए थे अगला टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो फिर वो बैटिंग की सीरीज थी 2 टेस्ट मैचों का नतीजा सामने नहीं आया। लाहौर का टेस्ट मैच तो 2 ही दिन तक महदूद रहा था, नामुकम्मल उसको ख़त्म करना पड़ा। तो एक और ओवर यहाँ पर विकेट लेस गया, 40 पे 5। विकेट कीपर फरहान बॉलर को विकेट कीपर फरहान जो है वो बॉलर को पैचेस दिखाते हुए कि यहाँ पर बॉलिंग कीजिए। बहुत ही आसान, सरफराज जो हैं बहुत ही आसानी के साथ अपनी मर्जी के साथ स्पिनर्स को प्लेस कर रहे हैं और अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं। यहाँ अभी हम ट्रिपल सेंचुरियों की और सेंचुरी की बात कर रहे थे, तो अली मंजूर जो है इन्होंने अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल की है रन देने की। और ये हमारे स्टैटिस्टिशियन ने बताया कि ये पहले बॉलर हैं यहाँ कज़ाफी स्टेडियम में जिनने 200 रन दिए हैं। यहाँ जो ज़हीर अब्बास की डबल सेंचुरियाँ थी उनका हम बहुत सुनते और देखते आए हैं, और ये 200 के बाद भी इनको विकेट नहीं मिली है। दूसरी 200 रन देने के बाद भी अपील की थी, लेकिन बल्ला दूर रहा। जी बिल्कुल, बैट्समैन ही अगर कोई गलती करे तो करे, इस पिच की यही कहानी रही है। और ये करीबी मामला हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है रिव्यू वाली सहूलत हासिल नहीं। पैच का जिक्र कर रहे हैं विकेट कीपर। ये ठीक है, शाबाश। या अगर वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है भी, तो जो रफ्तार है पिच की अब वो इतनी ज़्यादा सुस्त हो गई है, और ख़ास तौर पर पुरानी गेंद पर बैट्समैन खासा वक्त मिल जाता है। आबिद अली जब स्पिनर बॉलिंग करने के लिए आते हैं, साथ नसीम खुद स्लिप में चले जाते हैं। फास्ट बॉलिंग पर ज़्यादा वक्त इन्होंने ही गुजारा है, स्लिप पोजीशन पर या मिड विकेट पर हैं। शायद सेकंड न्यू बॉल जो है वो भी अब आने वाला है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स जो हैं वो जल्द अज जल्द 160 ओवर्स तक पहुंचना चाह रहे हैं, जहां पे एलिजिबल हो जाएंगे सेकंड न्यू बॉल के लिए। और ये भी देखना है कि फास्ट बॉलर्स को वापस लाते हैं या इसी पुराने बॉल के साथ कंटिन्यू करते हैं। ये बाहर थी स्टंप्स के, इसलिए कोई इम्कान नहीं एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाने का। 2 रन दिए अली ने इस ओवर में। 542 कराची, 5 विकेट पे।
या अगर अगली नई गेंद की नौबत आती है तो क्या बेहतर नहीं होगा एक एंड से जो अली मंजूर हैं कोशिश की जाए स्पिनर के साथ, फिंगर स्पिनर हैं, कि वो बॉलिंग करते जाएं और दूसरे एंड पे फास्ट बॉलर का इस्तेमाल हो। शुक्र है आपने दूसरे एंड का जिक्र कर दिया, वरना समझने वाले शायद ये समझते कि दोनों एंड से अली मंजूर ही बॉलिंग कर रहे हैं। नया बॉल जो है तारिक भाई, अगर वो एलिजिबिलिटी जो उसकी है वो 170 ओवर्स के बाद है, क्योंकि 90 ओवर्स के अख्ताम पर इन्होंने नया बॉल लिया था। अपनी फील्डिंग को मुसलसल तब्दील करने पे यकीन रखते हैं। ऐसे कप्तान भी आपको कम देखने को मिलते हैं कि हर गेंद के बाद फील्डिंग जो है आगे पीछे करना पसंद करते हूँ। आमतौर पर जो फील्डर्स होते हैं ये खुद ही समझ जाते हैं हिकमत अमली को भी, जिन कप्तानों के साथ अब खेलने के आदी होते हैं उनकी सोच को भी, और बॉलर की सोच को भी। जिस तरह एक जो घोड़ा है वो अपने सवार के आसन को जानता है, आदी हो जाता है, लेकिन यहाँ इनको करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। एक बार फिर एक लूज बॉल और उसका पूरा फायदा उठाया, कट किया रमीज ने और यकीनी 4 रन हासिल किए। जब टीम्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा खेलती हैं और ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन जाती है कि अपनी अपनी फील्डिंग पोजीशंस का अंदाज़ा होता है, अपने बॉलर्स के साथ अपने एंगल्स का पता होता है, और पिच जिसके ऊपर क्रिकेट खेली जा रही होती है उस पे किन एंगल्स पे बॉल ज़्यादा जाएगा उसका भी अंदाज़ा हो जाता है। बट अगेन ये वो ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा साथ नहीं खेला लेटली पिछले कुछ सालों में, तो शायद इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करनी पड़ रही हैं। यहाँ लेकिन इस पिच में कोई तब्दीली नहीं हो रही और रन्स जो हैं आसानी के साथ वो बनते चले जा रहे हैं। 40 रन्स कराची की अब बढ़तरी है। सरफराज और रमीज अजीज जो हैं ये इस वक्त अपनी शराइत पे बैटिंग कर रहे हैं इंतहाई आसानी के साथ। इस पूरे मैच में जो है 14 विकेटें ज़रूर गिरी हैं, लेकिन जो डिसमिसल्स हैं उनके अलावा बड़ी कम गेंदें ऐसी हैं जिन्होंने बल्ले को बीट किया हो, फास्ट बॉलर या स्पिनर दोनों ने ही। 549 पे 5। ये अहमद शहजाद जो हैं ये लगता है कि इनके पाँव में चोट आ गई है। ये अभी अंपायर को मुत्तला कर रहे थे, बाहर मैदान के जा रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए खैरियत से होंगे। जी ऐसा कुछ देखने में आया नहीं, देखते हैं अभी क्या ऐसा हुआ जिससे अहमद शहजाद एकदम हैमस्ट्रिंग के ऊपर हाथ रखा है इन्होंने और जी हाँ, लेकिन अच्छा ये है कि खुद ही चलते हुए जा रहे हैं। 12वें खिलाड़ी को दोबारा मैदान में आना पड़ेगा लाहौर के लिए। उनके जो रिजर्व खिलाड़ी हैं उनको खासी देर गुजारना पड़ी है फील्ड में। हैरानगी की बात यह है कि डॉक्टर नहीं आए यहाँ तक, का पूरा इंतज़ार किया उन्होंने कि अंदर ही आ जाएं तो उनको ट्रीट किया जाएगा। आगे पीछे एक और सेंचुरी पार्टनरशिप जिसे तोड़ना मुश्किल हो रहा है। लाहौर ने बड़े जतन किए हैं लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और स्लिप के अलावा अब ये जो आसपास के कैचर हैं अब वो भी नज़र नहीं आ रहे।
विकेट कीपर की आवाज़ें भी कम अब सुनाई देती हैं कभी कभी। और ये बिल्कुल टाइमलेस, वो जो हम टेस्ट मैचों का सुनते थे, एक ज़माने में टाइमलेस क्रिकेट होती थी, जब तक नतीजा नहीं आएगा वो खेल जारी रहता था। ये भी उसी तरह का ही मामला लगता है यहाँ। और जिस तरह यहाँ पर हम खेल देख रहे हैं तो ये तो फिर जो है खासे लंबे मैच जा सकते थे यहाँ पे। अगर आज भी वही रूल होता तो तकरीबन 6 माह की ट्रॉफी तो हो सकती थी। यहाँ चौथा दिन है और अभी जो पहली इनिंग्स है वो भी खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक ही सेशन इसके बाद बाकी रह गया। यहाँ 550 रन कराची वाइट्स ने अपने मुकम्मल कर लिए। सरफराज अहमद की नज़रें अब सेंचुरी पर होंगी, दौरा ऑस्ट्रेलिया पे भी होंगी। ये बाहर थी, स्टंप्स के इनकी टेस्ट टीम में वापसी हुई एक बरस पहले। अच्छा खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, मैन ऑफ द सीरीज थे। श्रीलंका में जो है दूसरे टेस्ट मैच में ये जख्मी हो गए थे। सरफराज आज हेलमेट के बगैर बैटिंग कर रहे हैं। गेंद लग गई थी फास्ट बॉलर की कि हेलमेट पर 550 स्कोर है कराची का। ये 7 बॉलर्स को आजमा चुके हैं अब तक। कप्तान साद नसीम, खुद उनका 20वां ओवर है। फात मुनीर से आज इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, कल 6 ओवर्स के लिए उनको भी आजमाया गया था। जी बिल्कुल, और खासे तेज़ रन्स बने जब उन्होंने बॉलिंग की, और शायद यही वजह है कि दोबारा चांस नहीं लिया गया उनके साथ। और स्पेशली ये जो 2 बैटर्स हैं, ये स्पिनर्स को जिस महारत से खेल रहे हैं, जितने कंट्रोल से खेल रहे हैं, इस सब को देखते हुए बेहतर फैसला यही किया उन्होंने, खुद से बॉलिंग कर रहे हैं। या किसी ऑफ स्पिनर को यहाँ पर हमने बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है इस मैच में, जिसमें ज़्यादातर ओवर स्पिनर ने किए। और ये फुल टॉस और बहुत ही जोरदार अंदाज में चौका लगा दिया। ये आवाज से ही जाहिर हो गया था नतीजा, तो इससे आसान गेंद हो नहीं सकती थी। रमीज के लिए आसान फर्स्ट क्लास रन। जी बिल्कुल, पेशेंस का रिवॉर्ड, और बहुत ही भरपूर तरीके के साथ उसका फायदा उठाया। रमीज 70 के स्कोर पर पहुंचे, 6ठे नंबर पर खेलने के लिए आए हैं। ज़्यादातर टॉप ऑर्डर में खेला करते थे, अंडर 19 के दिनों में हमने इनको देखा है टॉप ऑर्डर में खेलने को आते थे। ये पाकिस्तान अंडर 19 के लिए भी खेल चुके हैं रमीज। जी बिल्कुल, अंडर 19 के बाद जब से ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट में आए तो मिडिल ऑर्डर में ही इन्हें ज़्यादा देखा गया। हबीब बैंक के लिए 5वें 6वें नंबर के ऊपर बहुत सारी बैटिंग की इन्होंने। ये उस तर्ज के लेफ्ट हैंडर हैं कराची से, जो एक दौर में आया करते थे। आसिफ मुश्तबा उसकी बड़ी मिसाल समझे जाते थे। इसके अलावा एक जाहिद खेला करते थे, मोहम्मद जाहिद, PIS से 555 पे 5। जी हाँ, जाहिद अहमद का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते थे PIA के लिए, बैटिंग भी करते थे। बहुत ही मसरूफ क्रिकेटर थे जाहिद अहमद। बाद में PIA के कोचिंग स्टाफ से भी वाबस्ता रहे। आसिफ मुश्तबा जो हैं ये भी PIA के लिए
खेला करते थे दोनों जो है, का अंदाज बहुत मिलता जुलता है रमीज से। और अभी भी कराची वाइट्स के कोचिंग स्टाफ में आगा साबिर हैं, वो भी बड़े स्टाइलिश लेफ्ट हैंडिंग ओपनिंग बैटर थे और वो भी पीआईए के लिए ही खेला करते थे। सो सरफराज स्पिन के अगेंस्ट अपना कंट्रोल जो है वो डिस्प्ले करते हुए, एक अलहदा ही स्किल लेवल है इनका अगेंस्ट स्पिनर्स। बहुत ही शानदार कंट्रोल है, स्ट्राइक रोटेशन बहुत आला है और लगता नहीं है कि किसी किस्म की भी कोई परेशानी में मुब्तला होते हैं, चाहे जितना मर्जी अच्छा स्पिनर हो। इससे ज़्यादा बहुत सारी ऐसी पिचेस पे भी इनको देखा है जहाँ पर स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है, लेकिन वहाँ पर भी ये स्पिनर्स को बड़ी महारत से खेलते हैं। जी हाँ, इसलिए जो मॉडर्न डे कोचेस हैं और जो उभरते हुए बैट्समैन हैं उनको देखना चाहिए। ये मॉडल बैट्समैन है स्पिन के सामने सरफराज अहमद, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं टीवी पे भी इनको देखकर। जो खेलने वाले हैं ज़ाहिर है वो भी सीख रहे होंगे इस वक्त। जो दोनों ही टीमों के, कराची और लाहौर के नौजवान बैट्समैन हैं। और इन्होंने स्पिनर को किसी भी मौके पर ये मिड ऑफ की तरफ ये खास तौर पर जो बॉलर बैक जो है वो ड्राइव करने की कोशिश नहीं की इन्होंने। वहाँ सिवाय फुल गेंदों के बेहद करीब थी। अच्छे टेक्नीशियन साबित हो रहे हैं ये दोनों ही। मास्टर क्लास है स्पिन के सामने ये पार्टनरशिप। बिल्कुल बचा फरमाया, मास्टर क्लास ही है ये स्पिन के अगेंस्ट। और ये 557 पे 5 कराची वाइट्स। Sarfraz and Ramiz Aziz bring up a master class against spin. Not much riding on the result of the game, but the skill level is obvious to see, especially against spin. Fahd Munir, well, Tariq was just mentioning about him in the last 10 or so minutes, and the message has gone through. So we're seeing the youngster at the bowling crease. Quiet afternoon in the offing. Welcome along, Marina. Everything happening so slowly after lunch. That's a little surprising for me, because before lunch we saw that both Ramiz and Sarfaraz, they were targeting the spinners. They had a very healthy run rate. Straight after lunch, the approach has changed totally. Sarfraz calls quickly. Ramiz hesitated for a little while, but then motored along just in time to beat that direct throw. I don't think he was ready at all. Caught off guard. Ramiz Aziz, have a look at that. Sarfraz all of a sudden then called, and lucky he got away with it. For a moment we thought he might be in trouble. Shot asking for trouble and duly punished by Sarfraz. Probably that's why he wanted to get on to the striker's end, because part-time leg spinners, they do give you plenty of opportunities, and Sarfraz cashing in. Yeah, he's not going to miss out on
such deliveries. We've seen that both the batters have nullified Ali Manzoor. And now against Fahd, they're going to target, and target is exactly what he did. Got protection there. Just dropping it short. Fahd Munir struggled in his bowling. 160 overs done. Karachi White 564 for 5. We've seen plenty of big partnerships in this match. 130, this one unbeaten. We've seen 300 run or more partnerships in Lahore Whites' innings. And this is the fourth such partnership for Karachi Whites, so runs galore here. Ahmed Bashir wicketless, although that economy is not bad. Sarfraz will milk you here all day long. Marina, do you recall anything? How long you've spent in the field? What's your longest stint in the field? I'm not sure if it's fortunate or unfortunate, but haven't really played the longer format. We don't have a test status, or even in domestic, really never played two-day cricket, even though I am a huge advocate of longer formats to polish your skills, but 50 over games, that's the maximum we've played. Yeah, that brings us to that very exciting point that you mentioned. Would you be, like you said, you're an advocate. Is there any future plans to include two-day cricket in women's cricket? I'll ask you about this ball after this ball, as we see a misfield. Sloppy work there. We have been emphasizing the importance of longer formats, but yet again, there are many plans. When they will be implemented, that's the biggest question. Because I remember the moment I took this role of being a selector, or at times being a player as well, I did mention many times that we need to play the longer formats to polish our skills, to build up our temperament and even fitness. But plans have been there. Implementation, not so much. You make a good point about fitness, because the longer you remain in the field, or the longer you stay at the batting crease whilst bowling. Sarfraz, little trouble with some movement behind the side screen. Hardly any in those 4 days. Yeah, but that longer format not just polishes your skills, but also improves your fitness. It really would be something very, very exciting if it's included into women's cricket calendar. Another fumble, although they're fielding on that square, which is pretty rough. But Sarfraz is not pushing for the second. That was literally crunched by Sarfraz. They have the luxury of the new ball. And let's see when they will take it. A half volley just bounced in front of him. It's never easy when the game is being dominated by the batters. As fielders, you need to motivate yourself to stay involved in the game. Well, in that case,
The motivator for Lahore Whites in the field, Ahmed Shahzad, is off the field. He suffered a slight injury. That's why I think it's up to Abid Ali, who is at the first slip, to become the cheerleader and just keep everyone motivated. Yeah, we saw him earlier doing the push-ups. We saw Sarfraz doing that as well. Maybe he can just run that Mexican ring of push-ups. Good call, Ramiz Aziz, and well responded, Sarfraz. These two have run beautifully between the wickets. Good understanding as well. 568 for 5. It's a belter. And obviously we've seen that it reflects the scoring card from Karachi Whites, even from Lahore Whites as well. But my only question is, Karachi already has 59 runs lead. When will they put Lahore Whites in a position? Maybe give them a challenge to go for the result, maybe not. But let's see, when will they declare? Like, see, bowlers will not be queuing up to bowl on this surface. So that declaration. Captain is in the middle. He's in the best position to decide. Both these batters will be eyeing at their 100. Sarfraz very sportingly rejects the single because he got up in a tangle with Ali Manzoor. Immediately apologized. That's good spirit shown by Sarfraz. Yeah, he's a thorough gentleman. We've seen that many times. Never lets that sportsman spirit down. Yeah, he plays hard. He plays fair. And such a long career, illustrious career for Sarfraz. He does value the game still as if it was his first year in domestic cricket. You see his work ethic, his discipline. Always being respectful to the officials, to his teammates, to the opposition. A gentleman, a real legend from Karachi. Qaddafi Stadium, we have seen these mammoth scores, and it's not that it's happening for the first time. Over the years, if you look back at the history, some famous games come to mind, which bowlers really struggled to make any sort of impact. Yeah, if you're a bowler, you would not prefer playing here. And at times it does create doubt in your mind as a bowler that whether you've got that level of skill or it's just the surface of what you can do as a bowler. Try different things. And probably it's an opening as a bowler. You could think of developing new skills or be more persistent. 162 gone, Karachi White, 569 for 5. Yeah, Qaddafi Stadium, like I was saying, back in the day, you think of some famous games that were so much dominated by the batters. That famous test match comes to mind, Pakistan versus India. That was Javed Miandad's 100th test match. And look at the scores. India 509, similar to what Lahore Whites got in their first innings. But look at what Pakistan responded with. 699 for 5. Some famous bowlers in that game. I'll name a few. If you look at the run getters, though, Sanjay Manjrekar got the double 100. Shoaib Mohammad got the double 100 for Pakistan. Century for Miandad. But in that match summary, as we watch another
harmless delivery. Pretty close to being a wide, and I think it was given as wide. In that famous game, the likes of Abdul Qadir, late Abdul Qadir, Imran Khan, the great Wasim Akram, they all toiled and toiled hard. This one again is called a wide. Umpire Ghulam Sarwar for India. And Kapil Dev, Ravi Shastri, Maninder Singh, Manoj Prabhakar. 178 overs Pakistan bowled, and for 203 overs India were in the field, and only 15 wickets in 5 days. Nightmare for the bowlers. So Qaddafi is carrying the legacy. I do remember that test match because I was just 2 years old. Well, that's the history. And if I'm not wrong, I think your uncle was around those days. He did play somewhere along those times. I think he played one day international, but very, very long first-class career. I'll ask more about him from you. Yeah, I do remember going to Aitchison College with him. This is the match you were talking about. Huge numbers. Look at the bowling figures. I don't think any of these bowlers will remember. But the batters, they would remember. Also, the interesting thing about the two double centurions, Sanjay Manjrekar and Shoaib Mohammad, is that their fathers also played for their respective countries and also made double hundreds. In the air, but in the gap. That just held up a little in the pitch. And Ramiz, for once, couldn't time it properly. Good bit of work in the field as well. Just restricting the scoring to just 2 runs. Ahmed Bashir trying to do something different. He was way outside off stump. A couple of deliveries and then just bringing back this one in. Took by surprise, trying to flick it. A lot of risky work, but he was lucky it was in the gap. It's good running again from these two. See, you might hear some noise. Plenty of effort being made by the players behind the stumps from Lahore. Mainly the squeaky voice of Abid Ali. He's trying to jig everyone up. After lunch, this session traditionally is not very easy, especially when you bowled 162 overs and no sight of it coming to an end. No chances created, nothing beating the bat, nothing hitting the pad. It does really get difficult. Maybe we should share the scorecard from that test match to just motivate them. Yeah, they didn't need to be reminded. The greats of the game did that. So, as you see in the air and dropped. Wide delivery. Ramiz went for the full-blooded drive. Couldn't control it. But Fahad Munir in the thick of things, it looks like it again. And that's the second chance he's grasped at that position. That was the plan. And that was the chance. Ahmed Bashir again just inviting and enticing. Oh my God, Fahad again, he hasn't been clean at this position, and Ramiz Aziz survived this chance. Yeah, Ahmed Bashir was tempting him with those wide deliveries outside the off stump, and finally Ramiz's patience gave way. Same for Sarfraz as well. Batters want to feel the ball, put bat on ball, especially on such docile surfaces. That's why it's not a bad ploy to bowl that wide line and length. 574 for 5. You're all set. Ramiz and Sarfaraz
79 and 70. And that's the drop. Again, just collapsing his back leg. That's why he never got any elevation, but that should have been taken. That was the field placement, and that was the plan. Fahad Munir should have been ready at that position. You cannot just take your eyes off. And he's still thinking about it. He is still thinking about it. Hasn't had a good time in that position. Dropped a very soft dismissal in the previous game against Multan as well. Earlier on, he dropped a low one, and this one was slightly higher to his right. It's just the anticipation. When you close around the bat, you need to keep your eyes and be ready, because that was the plan, and it worked. Ramiz went for the drive. There was a genuine chance. Just a while ago, you were advocating the benefits of the longer format of cricket, not just with skill and fitness. It also increases your concentration levels. You have to concentrate for longer periods. Because if you don't, that moment can come and go very quickly, and it will remain with you for a very long time. You can only deliver your skills and enhance your skills if you concentrate enough for a longer period of time. You have to be persistent. Pitch miles outside the leg stump, so it didn't really matter if it got an edge or not. That leg stump ploy, bowling over the wicket rather. One fielder at 45, hoping for a top edge sweep. That's the fielder. Ramiz was quick to get off the blocks. It'll be hard against Sarfaraz Ahmed, because not just he has that expertise over the sweep, one of the reason is his technique. He stretches up, he smothers the spin. And when you look at his bat path, it's always from up or down, or from down to up. Never in between. Again, Apesh just dropping short of Fahad. Or did it carry? That ball is following him around, and his reaction would suggest that it did carry, although we might need another look. But it went in the air, and Fahad Munir in the thick of things. No, that fell well short, which means that he's still thinking about that previous catch. And when it happens, sometimes when it's not your day, that ball follows you around. It's ironic how it happens so often. I think the reason Ramiz has been struggling to keep the shots down is probably he's playing too earlier, expecting ball to come on too nicely. 164 gone, 578 for 5, Karachi Whites. And also probably he's getting a bit anxious when he's getting closer to that 100. Fell well short. Don't want to be too harsh on the youngster. But this game is a harsh reality. That tells you a story. It's been a hard, long match for the bowlers. Batters have enjoyed it, but have a look at that. The conditions of these balls tell you a load more than we can speak. Well, that's the conditions of the ball. They're worn out. It'll be interesting to have a look at the condition of the bowlers as well. They won't look much different. For old Ahmed Bashir into his 31st over. Monumental effort without much reward. Nicely timed by Sarfraz.
timing is good, and once it gets onto those practice pitches, it will run away very quickly onto the fence. Glorious stroke from Sarfraz. Yeah, he's been consistent, Ahmed Bashir, but on this occasion, just straying down the leg. And look at that, good balance by Sarfraz, playing underneath his eyes. The wrist coming into play, impeccable timing, never tried to overhit it. He moves on to 76. Very, very crisp stroke play from Sarfraz today. Looked very neat and attractive. Waited on it slightly, looking to find that gap. But couldn't find the timing. It's an older delivery, obviously, ball rather. And I'm not sure about, okay, I can imagine you need to keep the slip, but the gully, we haven't seen a lot of bounce. The pace is lacking. Maybe they can take gully out and play somewhere on a short point or maybe in front of square. In the entire match, I think we just saw one edge that went in that direction, which didn't carry as well. No dismissals for sure. Yeah, more players in front of the wicket. Could be a better ploy. But I think fielding captain has also run out of our ideas or plans. Just going through the motions. Slip in a gully. Slightly deepish backward point. Really testing the patience of the batter and the umpire as well. Well, the batters have tested the bowlers a lot. Maybe it's the reverse case now, but again, he's pitching it up. It's not shorter, way outside off stump, inviting Sarfraz and even Ramesh to go at it. Swing the bat hard. But again, the field placement, I'm not sure about it. What? 582 for 5. Proceeding certainly has quietened down after lunch. That session, the afternoon session, generally is very difficult for fielding side normally. And it looks like it. Some of the fielders, if you have a closer look, we will do after this, really slump their shoulders. Ali Manzoor was brought in to the playing 11 in place of Mohammad Irfan. It hasn't been a really fruitful change for Lahore Whites. Yeah, I was talking about this post-lunch session. The body language is really down once again. It's Fahad. Abid is trying to be vocal. You can see that look on the face, the skipper. He's thought long and hard. Bilawal with the double teapot. Ahmed Daniel, who's trying to bowl quick. Well, Rashid Riaz is adamant that he will have a concussion protocol because that ball just rose up and probably hit Sarfraz on the head. Sarfraz wasn't too keen, but Rashid Riaz has called up for some medical attention, and probably you're pretty close to that drinks break as well.
And I think, yeah, he has also asked for the drink. So first hour of this afternoon session has been done and dusted now. And Sarfraz will be looked up by the medical staff, and the drinks trolley is also coming onto the field. So it's time for drinks at the Gaddafi Stadium. Karachi Whites, 583 for 5. Karachi region bats on, 583 for 5. Asad Shafiq, Khurram Manzoor, Ahmad Alam all getting centuries. It's been a tough task for the bowlers. Saad Naseem, surprisingly, the leading wicket taker, 2 for 70. Ahmed Danial bowled well, 1 for 60. Bilawal Iqbal also bowled well for his 30 overs, 1 for 89. After Lahore Whites posted 509 runs. Another session belonging to the batters. We're back live after the drinks break. Salman Bhatt, former captain, alongside me. It's just been a batting paradise. Thank you, Ali. No doubt about it. Batsmen have been ruling most of the time. And to be honest, really, the bowlers haven't been consistent enough. It's one thing bowling on a batting track, but then you have to be consistent, bowl in partnerships. Talking about these two, they've been brilliant against spin bowling. They've just been too good. 166 bowled, 584 for 5 Karachi.
584 for 5. We've been talking about the batters dominating all the way. This is the fourth game. The batters have dominated in all these games. I just wanted to talk about the bowlers. What do they feel when they have to bowl on a pitch like this? What do they think? Do they get frustrated? How do they get out that frustration, Salman? Well, they have to work their way out, and that is where the team planning comes in. We think of a certain strategy and then try and execute it to perfection. But what we have seen is loose stuff every now and then. So it's the match summary. Lahore region Blues, Peshawar region Blues need 124 to win, and at the moment they are 67 for 3. Lahore only managing 215 in their second innings. Peshawar region got the first inning lead, took 4 points. Well driven by Sarfaraz, gets a run off the misfield. So I have a feeling that Pakistan domestic cricket needs more of Aptabad cricket stadium pitches. Have a look at everything, something for everyone. 334 runs. Hussain Tarat getting runs, Niaz Khan getting wickets, Kashif Bhatti getting wicket, a spinner getting wicket, Farhan getting 100. Yes, I think the environment, the atmosphere, the weather has a lot to do how the pitches react. And that is one place between the mountains where it's a bit cold. You can keep the moisture for longer. The pitches mostly have live green grass over them, and they respond to the fast bowling better. But here, where the temperatures are high and it's the moisture, even if you leave some of it, doesn't stay here for long. So maybe you can yourself create something which works the other way around, helps the spinners, brings in the reverse swing. And so the teams, when they switch grounds, they have to adapt, where their adaptability grows and where at the end of the season, they have conditioned themselves into separate sorts of conditions and adapted their bowling, batting, lines and lengths, shot making according to the kind of pitches that they get. I was in the air for a little while, just a little while, talking about conditions and teams that have played in different conditions. Lahore Whites have to play 5 of their games here at Gaddafi Stadium. This is the last delivery, just early into the shot. Ramiz Aziz, lucky that it didn't carry to the fielder. Is it fair to judge bowlers of Lahore Whites while they're playing maximum matches here at Gaddafi Stadium? Is it fair to them? Yes, one of their points in their favor is that there's not much happening in the pitch. But if they were to have a really fair analysis, then they have to be honest about their bowling lines and length as well. How consistent have they been? Because in this longer form of the game, you have to frustrate batters. If you get into a game where the pitch has nothing to offer for fast bowlers, then you need to be able to bowl one line and length, one side, packed field, and then let the batter make mistake. But they just haven't been patient enough as a bowling side. So there's all not that is wrong. There have been times when they have lacked consistency. It's a tired effort. You can just tell the way Ahmed Bashir is bowling. He's bowled 32 overs, in fact 33 now. It's 585 for 5. Salman, you've played a lot of cricket around all over Pakistan. We've been talking about Aptabad. Why not to use these conditions more? I remember you and me went to Quetta. You've played cricket there, definitely. I've not been able to play there, but you have played cricket in Quetta. The pitches and the conditions there are more suited, better conditions for bat and ball. Why not to use that centre also for first-class cricket? Yes, we are blessed with we've been blessed with all sorts of conditions in Pakistan. I remember starting my career in first-class cricket, and we used to kick off from Bahawalpur, which was a rank turner, and the spinners used to start with the new ball, and then go to Karachi, where spin and then later in the day fast bowlers would get reverse swing.
then go to Islamabad, get to the diamond ground, good pace, good bounce, go to the Pindi Stadium, where at times 2.5 days were enough for results, then come back to Lahore, and it would almost end on the fourth day, always, or maybe a draw game. And then, likewise, moving forward to Aptabad, where there's a lot of seam movement. So if you play in more centers, with different conditions. So as a batter, you learn so much in one particular season. And imagine having scored 1,000 runs in one season by going around all over Pakistan, adapting to different conditions. You are far more ready for international cricket like that, rather than being restricted to a couple of venues and then also playing dead rubbers where there's not much chance of getting a result. So that, I think, that sort of season where you go to so many different venues and keep adapting and keep performing in different ways, it just improves you as a cricketer. Runs. Easy pickings. Off the back foot. Punched beautifully. Through cover area by Ramiz Aziz. He's making it look so easy at the moment. He continues to impress us all. Yes, again, bowlers are tired now. They were never consistent, but now they've become even more inconsistent. And it was a lot of time for the batter to rock back and just punch it through cover and point for an easy boundary. And players like these two, the amount of experience they are carrying, the skill levels that they have, especially against spin, they will not spare them. Yeah, the reason I asked you the question about what bowlers might be feeling is I just want your take on Ali Manzoor. He's bowled 56 overs. He's given away 216 runs. Just got 1 wicket. And if he gets dropped in the next game, what do you do? How do you judge his performance on such conditions, on such pitches? Is it fair on a bowler that if he gets dropped in the next game, that he was bowling on such condition? What is your take on that? Is it fair to him? Well, if you do not play on pitches where you are getting the help, you cannot compare your performances. And then, if you have been just dropped after one game at this particular venue, then obviously you'll feel unlucky. There is Ali Manzoor, long spell, 56 overs. That is a lot of bowling. That is what I was thinking, what a bowler might be feeling bowling on such conditions. When you have performed so well in inter-district, you're almost stopped there. Then you suddenly come up on quality opponents on a flat pitch. Must be a hard break for him. He's worked so hard, though. It will be a very, very unfair that if he gets dropped and doesn't get a chance to bowl in bowling-friendly conditions, may it be Aptabad or KRL or Pindi Stadium. Yes, it's up to the groundsman, you know. They can shave off the grass, leave it bare, and then the sun will do the rest. Reverse would come in, spin would come in, variation of bounce would come in, and hence, at the end of the day, it might get you a result. And also different adaptability and 3-4 different types of skills you'll have to use in the game. So I think a lot can be done, but what we have seen is similar sort of tracks, and at times the pitch reports, there's just like same for every game. He can play shots like that quite easily for Sarfraz Ahmed. Just swept the fast bowler for 4. What do you do? How can you stop this? Well, I'd say that was well bowled by the bowler. Sarfraz had to take a risk, do something different. Obviously, he has this ability to play a shot like that. Not every batter would be able to do that with such ease. But at least you ask him to come out of his comfort zone and do something out of the box. So this is the kind of things that you have to do. You have to engage batters into something which is out of normal. And then on pitches such as this, you can expect wickets to fall or maybe a chance to be created. It's just bat and ball at the moment. We all know that there is no result of this game. It's certainly going to be a draw. Beautiful. Straight to the fielder. Right, Salman, nothing really happening that interests us in the game at the moment. Something that interests us is Pakistan team is going to feature in the upcoming World Cup.
Just want your take on that. What should Pakistan be looking to do? What should the combination be? You played a lot of cricket in India. What should the approach be? Because most of the cricketers will be playing for the first time in India. And somebody like you who's very experienced and have played cricket there, what would your advice be? Which combination to go? That's through. Fantastic shot. Sarfraz Ahmed is making them pay. Another glorious shot for a boundary. Frustration for the bowlers. Yes, shot offered and accepted by Sarfraz. He's been driving beautifully. And a lot of control on that shot. Front foot to the pitch of the ball and body leaning into the stroke. Timed it beautifully. He goes to 87, 13 short of another 100. Almost getting to 600 runs. Karachi Whites. It's way too easy at the moment as we come to the end of 169 overs. 599 for 5. Saman, coming back to the same point, I want you to go through this side. You already know it. What combination should Pakistan be going at? 2 spinners, 4 fast bowlers, an all-rounder. What do you make of it? Firstly, you don't have a fast bowling all-rounder, so let's put that out of the window. What next is that you need 2 specialist spinners in India, because most places in India, spinners do get purchase of the wicket. And then you will need the in-form batters to stay there for long, because in India, when you play limited overs cricket, the chances are the most matches will be high-scoring games. .600 runs for Karachi Whites. This is the 4th occasion here at Gaddafi Stadium, Lahore, that a team has posted 600 runs twice in last 3 years. So you can see why the quality is decreasing of the pitches, because the runs are available as Karachi region lead by 91 runs. I really do feel for the bowlers. It's been a tough task from both sides, not just Lahore bowlers. Karachi was in the field for 137 overs. Now this is the 170th over that Lahore Whites is bowling. Let's continue talking about the World Cup chances Pakistan team has, and the combination. Salman was of this opinion that they should go with 2 spinners because we don't have a fast bowling all-rounder. Yes, coming back to the World Cup squad, I think certainly Pakistan team are contenders. It depends how good they are once the competition kicks off. It's a long competition. You might see the drop in the team's form, and you might see teams coming back into form and gaining momentum just at the right time. So Pakistan team has always been better when they have been slow in the start. That's what the history suggests. But then again, you don't want to start where you are in a position that you want to win everything, and then you want others to do this and that for you. So ideally, you would like to be playing really well from the start. I like what you say, that Pakistan should not be relying on others to do well against each other so that Pakistan can qualify. It's almost like, I don't remember a tournament where Pakistan has smoothly gone into the semi-finals or the final. It has always been that case. Salman? Yes, I guess Pakistan's big success stories have been like that. And having seen all that as we have grown up, we just tend to relax when we don't do well earlier. And we think that the good things are yet to come. But professionally, you would want to have a smoother ride where you're more assured of yourself and your team. So the good things are that in the practice game, we saw the 2 best players that Pakistan have, Rizwan and Baba. They performed
brilliantly, and then we saw a magnificent innings from South Shakil. He was impressive, and one and all were impressed by his batting. And I think he's the person who needs to bat in the middle order along with Iftikhar for Pakistan, because he also plays spinners really well. Not only does he play fast bowlers well, but against spin he's very, very good. And he has those shots where he can score runs and take minimum risks. And that is the art of batting, which you cannot relate to all-rounders. I totally agree with you. And being a left-hander, he just creates that flavor. He gives that flavor in the middle order also, South Shakil. It's a good problem to have, Pakistan, in the middle order. Finally, that South Shakil has scored runs. There's Salman Ali Agha. There is Iftikhar Ahmed. There's Shadab. There's Nawaz. These all 4, 5, 6, 7 number batters. So how do you adjust them? Well, I think the fight would be between South Shakil and Salman Ali Agha. But South, number one, he's a proper batter. Number two, he would be the only left-hander in the middle order. The remaining up and down from his position would be right-handers. So he might be someone who brings some headache for the opposition, where they have to change after every strike rotation. And they have to keep adjusting their lines and lengths. And he's that good that he can take limited risks and then get you good results. So I think he can be a handful for Pakistan, and he has shown that ability in test matches. When the team was under pressure, he scored big and brought them out of trouble. I've got so many questions for you, Salman, about Pakistan team's chances. As the next one is being played towards the third area. That is deliberate by the captain, Sarfaraz Ahmed, as he continues to pile runs. He moves on to 94 with this very stylish late cut. Yes, he has too many options up his sleeve. Firstly, he swept him from outside off stump, and then the fielder moved to the leg stump. And now to the same ball, he's cut it late into the gap for another boundary. Lot of headache for Saad and Seam and the bowlers. They have no clue what to do with Sarfaraz Ahmed. He's just toying with them. He's making them ball where he wants them to ball. This is how cricket should be played. This is the authority. Moving on to 95 now. Salman, coming back to the Pakistan's chances. Another problem that Pakistan had was the fitness of Naseem Shah. Who do you think should replace Naseem Shah? Is it Hassan Ali? Well, he's the only name that I can think of who can. Well, he is the only one. The other person who is in for fast bowling is Wasim Jr., who we haven't seen lately in form or in rhythm. So we pray that he comes in form and he delivers the expected goods from himself. But I think that Pakistan had the option of Zaman Khan, who bowled really well on his debut. He travelled all over from the West Indies. With that time difference, he straight away played an international game. That also his debut. On the new ball, he bowled 3 overs for 13 runs, was never brought back in the middle. And then he was asked to bowl under extreme pressure. He delivered. And Sri Lankans were lucky. They edged one to third man, and then the one went to square leg. I think the youngster showed great temperament and good skills. You just mentioned a bit earlier that Pakistan does not have a fast bowling all-rounder. They could have thought about Amir Jamal, who's done really well at this level. Yes, certainly he is one man who has the credentials. He can bowl up to 140 clicks. He can bat well. He's a very energetic fielder and athletic at the same time. So definitely he would be someone that the selection committee would have their eyes on. But unfortunately for him, he's not part of the World Cup team. There we see ball angled across and Ramiz going after the stroke. And very less times have we seen the ball beat the bat here. And this was one of them. Poor bowlers. 32nd over. He's completed his century, Bilawal. 103 runs he's given. He's still bowling quick. One more thing, Ali, talking about the Pakistan team and the way they prepare for the actual World Cup games to start, is that they need to play their players who they will be heavily relying upon once the World Cup kicks off.
one would like to see Shadab bowl his full quota of overs so that he gets into that zone. Because if he bowls well, then Pakistan's chances increase. And also the same goes for Quaid-e-Azam. If he bats well, he's an impact player and he can get you off to a flyer where the rest of the batters can have their time to adjust and take it from there on. Okay, last two questions about the World Cup campaign. Which are the two spinners that you will pick? Okay, fine. One is Shadab. He's a 3D cricketer. You will have to pick him outside the leg stump. That is never gonna. You're never gonna get that wicket. One is Shadab. Who do you play with him? Nawaz, Osama Mir. Well, talking about specialists, I think Osama deserves to play. And there it is, clearly pitching outside the leg stump, and no way that he can get that decision in his favor. So for me, I think Osama was pretty decent in the practice game, although he started off giving away a few runs, but that he came back, took 2 wickets, and created chances. Poor Osama, he had a drop chance of his bowling. Kane Williamson was dropped. And I think the other thing that Pakistan team would need to improve along the way is the fielding that they do. Because catches win matches, and in India where the high scoring games are played, fielding becomes that more important because pitches are good for batting and the bowlers have to work hard. So the fielding, whichever the teams who will be fielding really well will be, they're creating more chances for themselves to win games. Just the last question. Do you see Pakistan going all the way? Do they have enough in them? Well, I started by saying that certainly Pakistan team are the contenders. The ability is there. The boys who can, win games for Pakistan are Shaheen, Shadab, Haris Rauf, Baba, and then we have Rizwan, Fakhr, even South Shakil. He hasn't played much, but he looks great when he's been batting lately. So we have the material. It's just about getting on with the game. Fantastic. Thank you, Salman. Sweeps straight to the fielder. Just 1 run more. Added to this huge total of 609 by Karachi Whites. As we had a detailed discussion with the former captain Salman Butt about Pakistan's chances in the upcoming World Cup. Of course, we all wish them well. We all wish them to play their best cricket. We all wish them to fight till the end, winning and losing regardless. But the fight should be there, the intent should be there. And that's a bored look. And again, through the gap. Ramiz Aziz is making the use of these conditions brilliantly. Off the back foot, through covers for 4. Have a look at the follow through, the way Ali Manzoor reacted after that boundary was set. Frustration. I feel sorry for him. 172 gone. 614 for 5 Karachi Whites. Ali, I wonder how you can bowl on the wrong side of the pitch, drop it short, and then feel unlucky. Because your whole fielding is standing on the leg side. You give room on the offside and drop it short. So there's something else you need to worry about. That is your consistency. 97. Sarfraz Ahmed of just 135 deliveries. It has come at a good time. Good strike rate also. It would be interesting to see if Lahore Whites are interested in taking the new ball, which is now available since the last 2 overs. And maybe if they can take the new ball and then maybe get a couple of wickets, then there may be a chance they can bat 2 hours today and give some rest to their poor fast bowlers and the other bowlers, the spinner as well. Because it doesn't seem like anything else is going to happen otherwise. You heard the term karma? It's happening to Lahore Whites because they did the same
with Karachi. They made them ball for 137 overs. It's all happening to them. It can be a cruel game at times. But yes, the focus is on Sarfraz at the moment. He's on 97. Yes, when you've batted for long enough against the old ball and suddenly there's a new ball, and if it pitches in the right area, you often see batters make mistakes. And I don't know what Saad Naseem is up to. He hasn't offered his bowler the new ball. Two is the call. Two is he going to get quite easily as he moves to 99, Sarfraz Ahmed. Brilliant, brilliant batting. I think he doesn't like his bowlers. He doesn't like his bowlers. He's not getting them new ball. Well, at least it will do something, at least for a few overs. Right, one slip, one gully, a fielder at deep point. As Sarfraz Ahmed is just one run away from his 16th century. At this level, at first class level, I talk about, will be second of this season if he gets it. Still one run away. But it has been a fantastic effort. And he's done it. 16th century at this level by Sarfraz Ahmed. Fantastically played towards square leg for a boundary. What a way to get it. What a commitment shown by Sarfraz Ahmed. At this stage, still going fine. Still hungry for runs. Still performing. Well, if you're fit, age is just a number. And he had displayed a lot of skill today, a lot of control. Absolutely masterclass. He's toyed with the bowling, he's played according to his will, he's maneuvered the field whichever way he has liked, and he has brought it up at a strike rate of 74, which is very, very impressive. 11 fours and a 6 and his knock of 103. And this tells you that experience and at top level, it counts so much, and there's so much to learn for the youngsters who are even playing this game, to watch how he scores, how he goes about his business. And there's absolutely minimum risk involved in this kind of a knock. Two is the call again. They've run really well, but this time denying it. Rightly so. You saw that the team was out to support him, to congratulate him. They're still out. Why? Because Ramiz Aziz is on 92. So better go once. Because just 8 runs away for another brilliant 100. I strongly believe that Ramiz Aziz has played the best cricket in this side. Although we've seen 400s, Khurram Manzoor, Ahmad Alam, Asad Shafiq, Sarfraz, all got 100. But in my opinion, Ramiz Aziz 100 was the best one. The way he has played. It was not easy making a comeback after 4 years. And then playing it with such ease. It's been brilliant. Just love the way he has handled this inning. No. Solid, very solid. 621 for 5. बड़ी तेज रफ्तारी से सरफराज ने इस सुस्त रफ्तार मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई. शायद सबसे तेज रफ्तार ये सेंचुरी होगी जो 135 गेंदों में बनी है सरफराज अहमद की. यहाँ 4 दिन में बनने वाली तमाम सेंचुरियों में से सबसे तेज सेंचुरी समझी जाएगी. और अच्छा उन्होंने महसूस किया है यहाँ देखने वालों को. जब इस एंगल से बॉलिंग हो रही हो तो आप पैड्स भी कर सकते हैं. सरफराज
वो एतमाद जो है वो जाहिर भी कर रहे हैं अपनी बैटिंग से। स्क्वायर लेग पीछे है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन, डीप कवर भी, लेकिन सरफराज जो हैं ये खुद पर इनका एतमाद जाहिर करता है कि डीप फील्डर होने के बावजूद ये स्वीप करने से बिल्कुल गुरेज करते नहीं है। ये इनकी स्ट्रेंथ है, और अगर आप एक अच्छे बैटर बनना चाहते हैं, स्पेशली टॉप लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप करना आपको आनी चाहिए, क्योंकि एक पैंतरा होता है, अगर टर्न हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, एक स्कोरिंग शॉट है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। अगर तो आपकी टेक्निक अच्छी है, महारत है, तो कोई मजायका नहीं है कि आप इसको बार बार अपनाएं, क्योंकि इससे ये होता है कि स्पिनर अपनी लाइन और लेंथ एडजस्ट करने पे मजबूर हो जाता है। रमीज अजीज अब अगले उम्मीदवार हैं सेंचुरी के। अच्छा टेम्परामेंट इन्हें दिखाया है, इनकी टेक्निक खासी मजबूत है, लेफ्ट हैंडर हैं मिडिल ऑर्डर में, तो एक और इजाफी खूबी है ये इनकी 622 पे 5। एक 188 की पार्टनरशिप इन दोनों के माबैद। स्पिनर्स को बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से दोनों ने खेला, फास्ट बॉलर्स का भी डट के सामना किया, काफी मुश्किल में डाले रखा है लाहौर वाइट के बॉलर्स को। तबादला ख्याल होता रहा है दोनों विकेट कीपर्स के दरमियान। आमतौर पर अच्छे ताल्लुकात होते हैं विकेट कीपर्स के आपस में, एक दूसरे के साथ ये जो खेल की इंसाइट होती है ये करते रहते हैं। जिस तरह वसीम बारी जो पाकिस्तान की फेमस मशहूर कप्तान थे और विकेट कीपर, उनके सैयद किरमानी के साथ आज भी ताल्लुकात की मिसाल दी जाती है। ये भारत के विकेट कीपर थे सैयद किरमानी, अक्सर गुफ्तगू उनकी होती रहती थी मैचेस के दौरान भी। दोनों बड़े विकेट कीपर गुजरे बड़े सगीर के, सैयद किरमानी और वसीम बारी। ज्यादातर देखने को मिलता है कि एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं क्रिकेटर्स, कभी जो पिच कैसा बिहेव कर रही है उसके बारे में बात होती है, कंसल्ट करते हैं, एक दूसरे को अपना तजर्बा शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और इससे जिस लेवल के सरफराज अहमद कीपर हैं, मेरा ख्याल है कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। फरहान की वापसी काफ़ी अरसे बाद हुई है, तो उस पर भी काफ़ी बातचीत हो सकती है, काफ़ी डिस्कशंस कर सकते हैं वो, और करनी भी चाहिए। जो आपके सुपरस्टार्स हों, जो लेजेंड्स हों, जिन्होंने टॉप लेवल पे परफॉर्म किया, उनसे आपको तजर्बा उनका लेना चाहिए, आप जल्दी सीखते हैं। फील्डिंग से इतनी आसानी से मुतमईन नहीं होते साद नसीम। लेग स्टंप के बाहर 5 फील्डर हैं, ऑफ साइड में जो है इस मरहले पर दरअसल 3 फील्डर हैं। यहाँ लेग साइड में 6 फील्डर लिए हुए हैं लेग स्पिनर ने। ज्यादातर रन जो हैं रमीज अजीज ने ये ऑन साइड में बनाए हैं, बहुत कम इनको देखा गया ऑफ साइड में रन्स बनाते हुए, खासतौर पर स्पिनर के खिलाफ। और उसकी वजह ये थी कि लाहौर के जो दोनों स्पिनर हैं ये क्योंकि इनके स्टंप्स की तरफ ही टर्न कर रहे थे, तो इसलिए स्पिन के साथ खेलते रहे। और इनकी स्ट्रेंथ भी यही है, लेकिन ये कि आउटसाइड ऑफ स्टंप भी जब बॉलिंग वही कट अच्छा करते हैं बैकफुट पे जाके, उसका भी भरपूर फायदा उठाया इन्होंने। इनके बरक्स जो सरफराज अहमद हैं उन्होंने जरूर ऑफ साइड में वो रन्स बनाते हुए नजर आए, और बॉलर के सर के ऊपर से भी ये सरफराज अहमद जिन्होंने आज सेंचुरी स्कोर की इस साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, ये इनकी दूसरी है। बड़े शॉट्स खेले, ग्राउंड शॉट्स खेले सरफराज अहमद ने।
फील्डर्स की दौड़ें लगती रही हैं। स्वीप शॉट ये ट्रेडमार्क है सरफराज अहमद का। सही मानों में इस वक्त वो बालादस्त है सरफराज अहमद। रमीज अजीज भी कुछ ज्यादा अजीज नहीं लग रहे होंगे लाहौर वाइट के बॉलर्स को, क्योंकि वो भी अपनी सेंचुरी की तरफ गामजन है। थोड़े ज्यादा मोहतात होके खेल रहे हैं अब, ऐसा लग रहा है। कुछ रन ही दूर है अपनी सेंचुरी से। खासी फैली हुई फील्ड है अली मंसूर के लिए। 60वां ओवर है अली मंसूर का और इनका जो क्रिकेटिंग करियर है इसमें इससे पहले इन्होंने भी इतनी बॉलिंग यकीनन नहीं की होगी। ये भी एक नया तजुर्बा है। 60 ओवर कर जाना। बीच में अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं। अब बॉलर के स्किल का लेवल भी तब आप चेक होता है जब दो अच्छे बैटर्स आपके सामने हों। रमीज और सरफराज दोनों स्पिन को बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं, इसलिए भी बॉलिंग थोड़ी सी आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी लगती है इन दोनों बल्लेबाज के सामने। वरना जिस तरह के इनके नंबर्स हैं इस तरह के बॉलर वो हैं नहीं, बेहतर बॉलर हैं। बीच में काफी फेजेस में बेहतर बॉलिंग की है अली मंसूर ने। इससे पहले जो इनकी फी इनिंग्स जो इनके औसत ओवर थे वो 18 थे। ये औसत जरूर बढ़ेगी इस इनिंग्स के बाद। ये 60वां ओवर है। अनिल कुंबले जो थे भारत के मशहूर स्पिनर गुजरे, उनकी एक जमाने में जो औसत थी फी टेस्ट मैच वो 52 ओवर थी, 625 पे 5। इस गेंद को डैब करने के लिए गए लेकिन गेंद ज्यादा स्पिन हो गई, इससे शॉट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके। तो खासी कुव्वत बर्दाश्त आपको चाहिए होती है इतने ओवर्स करने के लिए। साद नसीम का भी ये 22वां ओवर है। सकलैन मुश्ताक जो थे उन्होंने 74 ओवर का स्पेल किया था यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में, अब से 23 साल पहले इसी कज़ाफी स्टेडियम में। फुल टॉस, इसे रोक लिया जाएगा। बाउंड्री पर साद खान ने फील्डिंग की और जब इतनी बड़ी इनिंग्स हो जाती है 625 रन जो कराची ने बना लिए, फिर आपको जो 12वां और 13वां खिलाड़ी है वो भी मैदान में नजर आता है फील्डिंग टीमों का। साद खान रहे फाइक, बट उनने बहुत वक्त गुजारा है फील्ड में आकर। गेंद को आने दिया अपने पास और अच्छे तरीके से डैब किया। फाइक ने तो शॉर्ट कवर पे फील्डिंग भी काफी की है इन्होंने, बहुत आसपास से गेंदें उनकी गुजरी। हेलमेट के नीचे फील्डिंग के अक्सर उस पोजीशन में नजर आए। इस तरह के मैच में जब आप हेलमेट के नीचे जब आपका वक्त गुजरता है, यहाँ तक कि ये जो विकेट कीपर हैं इनको तो आदत हो जाती होगी, जब ये अपने कमरे में भी जाते होंगे तो झुके झुके रहते होंगे। बिल्कुल, अक्सर हमने देखा है और ये एक चीज रिजवान के साथ भी हमें नजर आई कि वो अपना स्पेशल एक तकिया भी कैरी करते हैं, क्योंकि बहुत ही टफ जॉब है विकेट कीपिंग की। 177 ओवर्स के बाद 628 पे 5।
रमीज अजीज 95 पे मौजूद हैं, 5 रन की दूरी पे। कराची वाइट के हर बल्लेबाज ने डट के बारी ली है। यहाँ उन्होंने हक अदा किया है, इस पिच का भी, इन कंडीशंस का भी। 178 ओवर हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने फील्ड में रखा हुआ है। लेकिन एक बात करना होगी यहाँ कि जो दोनों टीमें हैं उन्होंने लचक नहीं दिखाई है। आपको लचकदार भी होना पड़ता है, कई बार आप नतीजा निकालने का रास्ता निकालते हैं, लेकिन कोई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं थे। लाहौर और कराची दोनों जो है, ये देख के थोड़ी सी मायूसी हुई है। 2 की कॉल है लेकिन 1 रन ही बन पाएगा बिल्कुल, जबकि कराची वाइट्स टेबल टॉपर्स हैं, उनके पास कुछ ज़्यादा खोने को भी नहीं है। लेकिन यही लगा कि मुतमईन है जिस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, पॉइंट्स वो बटोर ज़रूर रहे हैं, चाहे वो बैटिंग हो बॉलिंग हो। ज़्यादा तो बैटिंग के थे, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज देना चाहिए था। अभी आपको लगता है कि रमीज अजीज की अगर सेंचुरी हो जाती है उसके बाद सरफराज अहमद इनिंग्स ख़त्म करने के मुतालिक सोचें, चाहे कि वक्फे से पहले कोई देर बैटिंग कराई जाए, लाहौर को 15-20 मिनट के लिए, फिर वक्फे के दोनों एंड पर बैट्समैनों को अगर सेट होना पड़ेगा तो वो एक तरह का ट्विन चैलेंज हो जाएगा लाहौर के बैट्समैनों के लिए। मुस्बत सोच तो यही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही वन साइडेड मैच हो जाता है। और अगेन बात ये आ जाती है कि आप एज अ टीम और इनफरादी तौर पे क्या हासिल करना चाहते हैं एक मैच से। 629 पे 5। एक 120 रन की बढ़तरी कराची को है इस मैच में, और हमारी ये जो स्कोर लाइन है इस पे ये 178 है। ये रन्स नहीं है, ये ओवर्स हैं जो लाहौर के बॉलर्स ने किए हैं। पिछले 3 दिन से वो फील्ड में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है आगे 2 दिन का जो गैप है वहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, इन्होंने अगले 2 दिन की भी बॉलिंग और फील्डिंग कर ली है पूरी। हाँ, सेंचुरी देखने के मुतमन्नी थे कराची के जो खिलाड़ी हैं, वो निकल आए बाहर रमीज अजीज को शाबाश देने के लिए। फ्लिपर था, इस पुल करने के लिए गए, थोड़ी नीचे भी रह गई। थोड़ा खामोश रखा हुआ है रमीज अजीज को, जब से उन्होंने 90 के स्कोर में शामिल हुए हैं। वो थोड़ा गेंद नीचे रहा था लेकिन नजर रखी हुई थी, इसलिए बचत हो गई उनकी। टर्न, अच्छी खासी टर्न मिली और गेंद उछली भी टिप्पा पड़ने के बाद गैर मुतवक्के तौर पर। यहाँ पे एक पैच है जिसकी कल भी हम बात कर रहे थे और वहीं पे लगता है हिट हुआ था, स्पिन मिला। यहाँ धूल उड़ाती हुई गई है ये जो गेंद है। इस बार सरफराज ने अच्छी तरह गेंद की लाइन को कवर किया। पहली बार सरफराज को स्पिनर ने परेशान किया है आज के दिन में। ये वो गेंद था और अब टांग पकड़ ली है साद नसीम ने, लेकिन महारत रखते हैं सरफराज अहमद बहुत ज्यादा स्वीप शॉट के ऊपर, अगेंस्ट द स्पिन भी, क्योंकि लंबी टांग निकालते हैं, गेंद को आगे से पकड़ते हैं, उनका बैट फ्लो भी ऊपर से नीचे होता है, इसलिए टॉप एज के भी बहुत कम चांसेस होते हैं। सरफराज अहमद ने अपना 12वां चौका लगाया। फील्डर थे स्क्वायर लेग के पीछे, लेकिन इतना नहीं कि वो ये चौका बचा पाते। एक बार फिर 1 रन हासिल किया सरफराज अहमद। ये अगले ओवर में वो अपनी बैटिंग जारी रखेंगे। 635 पे 5।
एक रन ले लिया था सरफराज ने आखिरी गेंद पर, इसलिए ये वापस चले गए। जो खिलाड़ी बाहर आए हुए थे, खुर्रम मंजूर, उनके अलावा जो है और भी जो कराची के जो खिलाड़ी थे वो आए थे दाद देने के लिए, लेकिन इनका इनिंग्स खत्म करने का कोई इरादा नहीं लग रहा, क्योंकि नोमान जो है वो पैड्स करके वो बैठे हुए हैं और आज इनको खेल में लाया जा सकता था। नोमान ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटें ली थी, एक उनका दबाव भी था किसी हद तक लाहौर की बैटिंग पे। यहाँ तो अब आना पड़ेगा, जो कराची के खिलाड़ी बाहर अंदर चले गए थे शीशे के पीछे। जी, ड्रेसिंग रूम में इनका ज़्यादा तवील क़याम रहा नहीं, 3 रन की दूरी पे रमीज़ अजीज़ बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है, कमिटमेंट शो की, टेम्परामेंट शो किया है। जहाँ सिर्फ 3 रन दूर हैं रमीज अजीज, 4 फील्डर करीब हैं, 5 और कॉट बिहाइंड की ये बहुत बड़ी अपील मुस्तरद हुई। बाल बाल बचे रमीज, थोड़ा सा नर्वस लगे हैं इस गेंद पे, दिल दहल जरूर गया होगा इनका। अच्छी बॉल थी अली मंसूर की, बाहरी किनारे को छोड़ती भी गई, एंगल करना चाह रहे थे, ऐसा गेंद की थी अली मंसूर ने। तो चौथे दिन जो है इस पिच पे कुछ आसार हैं स्पिनर्स के लिए। फिर जल्दी करनी पड़ी, वापस आ गए, एक आध फील्डर को और भी ला सकते हैं। ये आगे जो है आप नहीं समझते, जो जितनी गेंद टर्न हो रही है, अगर ये मिड ऑफ पर जो डीप फील्डर है उनको आगे ले आए, क्योंकि वहां आसानी के साथ आपको 1 रन नहीं देना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि नर्वस हैं, दावत दें कि वो एरियल रूट अपनाएं, कोई गलती करें। काफी डॉट बॉल्स खेल ली हैं पिछले 5-6 रन के लिए इन्होंने, 3 रन की दूरी पे हैं ये, थोड़ा सा मजीद प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है, नर्वस हैं, उसका फायदा उठाया जा सकता है अगर लाहौर वाइट चाहे। आज तक कभी क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी में एक इनिंग्स में 5 सेंचुरी नहीं बनी, और इस स्ट्रोक के साथ ये 5वीं सेंचुरी बन गई कराची की इस इनिंग्स की। रमीज अजीज ने ये शानदार कारनामा अंजाम दिया, वो 101 पर पहुंच गए, रिवर्स स्वीप उन्होंने किया और धाक बिठा दी है उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में अपनी टेक्निक की और टेम्परामेंट की। बहुत ही उम्दा इनिंग्स लेफ्ट हैंडर की, शानदार इनिंग्स थी, इसमें कोई शक नहीं है। टेम्परामेंट शो किया, अपनी क्लास शो की, जिस तरीके की शॉट सिलेक्शन शो की, बहुत ही महारत के साथ, एतमाद के साथ इन्होंने ये 100 रन अपने मुकम्मल किए हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप भी सरफराज अहमद के साथ 200 रन से ज़्यादा की, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। स्पिनर्स को आड़े हाथों लिया, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ बहुत ही अच्छी टेक्निक के साथ रन्स बनाते चले गए और बिल आखिर इनको कामयाबी हासिल हुई अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में। 185 गेंदों में रमीज ने 101 रन बनाए, ये अच्छी रफ्तार भी है। अगर आप 180 185 गेंदों तक 100 रन बना लेते हैं तो ये बहुत मुनासिब रफ्तार समझी जाती है। लेकिन जो लाहौर के स्पिनर्स हैं उनके पास कोई जवाब नहीं लगता इस पेयर का, वो सिर्फ और सिर्फ लगता है कि डिक्लेरेशन का इंतजार कर रहे हैं। जब से मैच शुरू हुआ है बॉलर्स इंतजार में ही रहे हैं, चाहे वो लाहौर वाइट के हों या कराची वाइट के, और अब एक तरह से साद नसीम भी इस इंतजार में कि कब कराची वाइट डिक्लेयर करेगा। इनको ज़रूर अफसोस रहेगा, दानिश अजीज़ को बहुत बड़ा मौका था, सेंचुरी अपने नाम कर सकते थे जैसे हर बल्लेबाज ने की है। चाय के वक्फे के अब आहिस्ता आहिस्ता हम करीब आ रहे हैं।
लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये चाय के वक्फे के बाद भी ये दोनों अपनी बैटिंग जारी रखना चाहेंगे, मजीद रन्स बनाना चाहेंगे। आज के दिन 2 सेंचुरियां बनी हैं, कल 3 सेंचुरियां बनी थी, पहले दिन डबल सेंचुरी बनी थी और इनको जरूर मलाल होगा या इस सेंचुरी से महरूम रहे। इकलौते आउट होने वाले बैट्समैन है फाहद आज के दिन में। एलबीडब्ल्यू ये आउट हुए थे आज बिलावल इकबाल के हाथों। इस ओवर में सिर्फ एक रन साथ ने दिया। दरअसल 641, 5 खिलाड़ी आउट। दो 207 रन की पार्टनरशिप सरफराज और रमीज के माबैन। यहाँ पे अपनी गलती से ही बैटर आउट हो सकता है और कहीं ना कहीं इनको भी इस चीज का मलाल जरूर रहेगा। अगर यहाँ पे स्टार्ट मिल जाए बैटर को तो उसके बाद उसको कन्वर्ट करना उसकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि बॉलर्स कुछ खास खतरा साबित नहीं हुए इन पिचेस पे, चाहे वो स्पिनर्स हो या फास्ट बॉलर्स। ये 207 रन की पार्टनरशिप है, ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। यहाँ ये इस मैच की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इससे पहले 169 रन की पार्टनरशिप थी कराची के ओपनर्स की, अम्माद आलम और खुर्रम मंजूर की। 153 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप जो है अहमद शहजाद और अली जरियाब के दरमियान हुई थी। ये उनसे भी आगे निकल गए दोनों। ये रिकॉर्ड साज मैच साबित हुआ है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के एतबार से तारीख साज भी, पहली बार एक इनिंग्स में 5 सेंचुरियां बनी। हालांकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जो मुकाबले हैं ये 1953 से ये टूर्नामेंट हो रहा है। 1953 से ये मुकाबले हो रहे हैं और आज पहली बार हमने देखा कि 5 सेंचुरियां एक इनिंग्स में बनी है। और अगर बॉलर्स के फिगर डाल लिए जाएं तो मेरा ख्याल है सेंचुरी ज्यादा हो जाएंगी तादाद उनकी। जहाँ बॉलर्स की हम बात करते हैं कि इस तरह की विकेट्स पे उनको कैसे जज किया जाए, वहाँ बैटर्स की भी बात करनी चाहिए, जहाँ बिल्कुल भी ऐसी कंडीशंस नहीं होती कि उनकी स्किल या उनका टेम्परामेंट टेस्ट किया जाए। उस इनिंग्स को रेट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बॉलर्स ने आपको आजमाया नहीं होता, बासानी आपको रन्स मिल रहे हैं, कोई ऐसी डिलीवरीज नहीं हुई जिसपे आपका टेम्परामेंट या टेक्निक एक्सपोज हो। एक साइड पे जहाँ बॉलर्स का इम्तिहान है वहाँ बैटर्स की भी एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आता ज़रूर है कि मुश्किल कंडीशंस में आप स्कोर कर रहे हैं या आसान। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिर इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉलर्स जो हैं वो हम समझ सकते हैं वो छड़ी के गलत तरफ ही रहे हैं यहाँ पिछले 4 दिन से। बॉलर्स का इन हालात में उनका आसान हो जाता है निस्बतन उनकी बॉलिंग का तज्जिया करना, लेकिन जो बैट्समैन है जो सेंचुरियाँ और डबल सेंचुरियाँ बननी है, अब फिर ये अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई ही इतनी काबिलियत थी
या सिर्फ पिच की वजह से हुआ, क्योंकि ये बॉलिंग है वो बिल्कुल कुंद हो जाती है। यहाँ जो है जो आपके फास्ट बॉलर होते हैं, आउटराइट फास्ट बॉलर, ऐसी पिचेस पर वो भी आपको मीडियम पेसर, मिलिट्री मीडियम पेसर लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छी डिलीवरी, एक बार फिर स्पिन बाउंस, लेकिन कोई नुकसान नहीं रमीज अजीज को। और ये सेशन जो है अब खत्म होने को है। जहां चाय का वक्फा हो गया है, दोनों खुश खुश वापस जा रहे हैं। इस सेशन में पहले सरफराज अहमद ने और उसके बाद रमीज अजीज ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। छठी सेंचुरी है रमीज अजीज की ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। उनका ये 32वां मैच है। 2016 के बाद वो पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए आज का दिन और ये घड़ी इन्हें हमेशा याद रहेगी। दोनों की लाजवाब बैटिंग रही, भरपूर फायदा उठाया उन्होंने कंडीशंस का भी, आराम से सेट हुए इब्तदाई दौर में। उसके बाद स्पिनर्स को दोनों ने अटैक किया, फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को काफ़ी ऑर्डिनरी बना दिया था। अच्छा टेम्परामेंट, फिटनेस और स्किल वर्क दिखाया दोनों ने। 209 की पार्टनरशिप इन दोनों के माबैन, और अच्छी फिटनेस भी, क्योंकि सरफराज अहमद ने उससे पहले 138 ओवर्स विकेटों के पीछे गुजारे थे और बाद में आकर सेंचुरी बनाना। उन्होंने 16वीं सेंचुरी बनाई। रमीज अजीज जो है इनकी सेंचुरी 5वीं थी इस इनिंग्स में, जो एक नया रिकॉर्ड है। इस तरह रन से भरपूर सेशन का इख्तिताम हुआ। एजाज जीमा बॉलिंग कोच हैं। जाहिर है उनको भी कुछ सवालों का जवाब ढूंढना होगा। और ये बेहद खुश कराची वाइट्स का ड्रेसिंग रूम, जब कप्तान सेंचुरी कर ले तो ये खुशी दोबाला हो जाती है किसी भी क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम की। खुरम मंजूर ने सेंचुरी बनाई थी, अहमद आलम ने सेंचुरी स्कोर की। 643 रन का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है कराची ने। 183 ओवर्स उन्होंने बैटिंग की। ये आप देख सकते हैं मां सिवाय दानिश अजीज और फहद इकबाल के तमाम इस सेंचुरी मेकर आपको नजर आ रहे हैं इस रुदाद में। बिल्कुल ये खुला मौका था कि यहाँ आके रन बटोरते। 5 सेंचुरियाँ इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि यहाँ पे कितनी आसान कंडीशंस थी। बॉलर्स भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग लगी। जो भी बैटर सेट हुआ ज़्यादातर कोशिश यही थी कि कन्वर्ट किया जाए, और यही हाल रहा लाहौर वाइट्स के बॉलर्स का भी। साद नसीम 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। एक विकेट हासिल की बिलावल, अहमद दानियाल और अली मंजूर ने। और अगर रन्स का कॉलम आप देखें तो ये अक्कासी करता है कि बॉलर्स ने भी कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं कराई और बैटर्स ने उनको बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया। 134 रन कराची अब आगे निकल चुका है। ये सेशन सरफराज और उनके बैटिंग पार्टनर के नाम रहा। ज़्यादा वक्त स्पिनर्स ने बॉलिंग की, बेशतर गेंदें खराब गिरी। कुछ देर के लिए अहमद बशीर आए थे, लेकिन वो भी रिसीविंग एंड पर रहे। बैकफुट पर खेलते नजर आए। स्वीप शॉट की 12 वैरायटी देखी। सरफराज अहमद का कवर ड्राइव था, स्क्वायर ड्राइव, पेस का भी बराबर इस्तेमाल किया। रिवर्स स्वीप और अपनी सेंचुरी स्कोर की। ये बेहद खुशकुन लम्हा था इस नौजवान बैट्समैन के लिए। 7 बरस के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं रमीज अजीज। तो यूं अब एक ही सेशन इस मैच में बाकी बचा है। लाहौर वाइट्स के खिलाफ कराची को 134 रन की बढ़तरी हासिल हो चुकी है। और इस वक्त चाय का वक्फा है मैच के चौथे और आखिरी दिन। वक्फे के दूसरी तरफ फिर आपकी खिदमत में हाजिर।
कदाफी स्टेडियम लाहौर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चौथे राउंड का ये गेम और चौथा दिन और आखिरी सेशन लाहौर वाइट्स का मुकाबला कराची वाइट्स। ये गेम जहां पे बैटर्स की डोमिनेंस रही है। 509 रन्स बनाए लाहौर वाइट्स ने अपनी पहली इनिंग में, अली ज़रियाब की डबल सेंचुरी, और जवाब में कराची वाइट्स 643 रन्स सिर्फ 5 विकेट्स गवा के। सरफराज अहमद, असद शफीक, खुरम मंजूर, रमीज़ अजीज़ सबने सेंचुरी स्कोर की। बॉलर्स के लिए मुश्किल मैच रहा है। साद नसीम पार्ट टाइम बॉलर हैं, 2 विकेट्स हासिल किए। अहमद दानियाल और बिलावल इकबाल ने भी एक विकेट हासिल की। कराची रीजन की लीड 134 रन। तमाम तर जो नजरें रही हैं वो इस पार्टनरशिप पे रही हैं जो कि 209 रन की है, और उसकी खास बात रही रमीज़ अजीज़ की कमबैक सेंचुरी। बहुत ही शानदार बैटिंग, पहले ही बॉल से रन्स की तलाश में रहे और जिस तरीके से स्पिन को निगोशिएट किया, कदमों का इस्तेमाल भी बेहतरीन रहा, स्ट्रोक्स बहुत शानदार खेले, पॉजिटिविटी नजर आई एक बैटिंग में। जिस तरीके से फ्रंट फुट और बैक फुट पे इन्होंने शॉट्स खेले, ये काबिल दीद है। कम बैक में इस तरह की इनिंग खेलना खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और रमीज़ अजीज़ के लिए, कराची वाइट्स के लिए भी। फुल ऑफ अथॉरिटी, फुल ऑफ स्ट्रोक्स, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ एवरीथिंग। शानदार सेलिब्रेशन भी बहुत मीन करता है ये 100 जब आप कम बैक करें और आप अपने कम बैक मैच में इस तरह की सेंचुरी स्कोर करें, कप्तान दूसरे एंड पे हों। और आप देख सकते हैं कि इस इनिंग में कितनी सेंचुरीज बनी है। 5 सेंचुरीज कराची वाइट्स ने दागी हैं लाहौर वाइट्स के अगेंस्ट। इससे पहले 4 सेंचुरीज हुई थी जो PIA ने बनाई थी कराची वाइट्स के अगेंस्ट नेशनल स्टेडियम में 1969-70 की बात है, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। और उसके बाद PIA ने 3 बार 4-4 सेंचुरीज बनाई हैं। बलूचिस्तान यूनाइटेड बैंक के अगेंस्ट कदाफी स्टेडियम में भी, कराची ब्लूज ने भी, हबीब बैंक सेंट्रल पंजाब, सारे रन फीस्ट है। ये जो इनिंग्स जो आप स्टैट्स देख रहे हैं, तारिक सईद साहब मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में, बैटर्स की चांदी है। जी हाँ, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा बैटिंग रिकॉर्ड आज जो कराची वाइट्स ने तोड़ा है। सरफराज अहमद अगर ये खेलते रहे, ये और भी रिकॉर्ड्स कायम हो सकते हैं। अभी इस सेशन में बहुत से खेल बाकी है। दोनों जो हैं, सरफराज जिस रफ्तार से बैटिंग कर रहे हैं, डबल सेंचुरी के भी उम्मीदवार हो सकते हैं क्योंकि बॉलर्स थके हुए हैं, ज़्यादा वक्त स्पिनर्स को बॉलिंग करना है। आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चांदी हो गई है बैट्समैनों की। लेकिन बॉलर्स के लिए मुश्किल दिल रहा है। 236 रन 63 ओवर में अली मंजूर ने दिए हैं। क्या करेंगे, क्या कहेंगे बॉलर्स के बारे में, क्या सोच रहे होंगे, किस मुश्किल से गुजर रहे होंगे, क्या प्लानिंग कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसी पिच पे शायद प्लान्स भी आपके ज़्यादातर फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि कोई असिस्टेंस नहीं है। मुश्किल दिल रहा है, मुश्किल मैच रहा है अली मंजूर के लिए। हालांकि इंटर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी परफॉर्मेंस दिखा के आए, लीडिंग विकेट टेकर थे, इनफैक्ट नंबर 2 पे थे लाहौर में। लेकिन ऐसी पिच पे आके बॉलिंग करना, क्वालिटी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट बॉलिंग करना कभी भी आसान नहीं होता है। थोड़े अनलकी रहे कि इतनी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में करना मौका मिला है। ये खुश हैं तारे भाई, इनके मज़े हैं। जहाँ और अभी क्योंकि इन्होंने फील्डिंग करने वाली किट भी नहीं की हुई, इससे भी जाहिर होता है कोई इरादा नहीं है कराची का अपनी इनिंग्स ख़त्म करने का। 117 पर सरफराज हैं, रमीज़ 103 पर हैं। अपना शॉट खेला इस बार, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता अराउंड द विकेट आने वाली लेफ्ट आर्म स्पिन को सामने खेलना। लेकिन सरफराज जो हैं वो इस तरह की बैटिंग के ये कारदान है स्पिन के। 46 पे 5। एक पीछे जाएगा ना वहां से यार, अहमद उधर से उधर हो जाएगा।
साद नसीम को अपनी बॉलिंग जारी रखना है। 2 विकेटें इन्होंने हासिल की थी, लेकिन वो बहुत पुरानी बात अब लग रही है जब इनको 2 विकेटें मिली थी साद नसीम को, क्योंकि 5 सेंचुरियां एक इनिंग्स में बनी हैं। कदाफी स्टेडियम का भी नया रिकॉर्ड है, एक इनिंग्स में 5 सेंचुरियां बनने का। क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी का ये रिकॉर्ड है। बहुत आला, बहुत आला। PIA का इससे पहले रिकॉर्ड था 4 सेंचुरियों का। सबसे पहले उन्होंने 4 सेंचुरियां क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी में स्कोर की थी। ये हनीफ मोहम्मद उस ज़माने में PIA के लिए खेल रहे थे और बहुत ही ताकतवर बैटिंग लाइनअप थी जिसमें 4 सेंचुरियां बनी थी। हनीफ मोहम्मद ने खुद सेंचुरी बनाई थी। उनके छोटे भाई थे मुश्ताक मोहम्मद, उन्होंने उस इनिंग्स में सेंचुरी बनाई। ज़हीर अब्बास जो उभरते हुए सितारे थे उस वक्त, अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नौवारिद थे। उनने अभी तक टेस्ट मैच में कोई सेंचुरी नहीं बनाई थी, उनकी भी सेंचुरी थी। ये जो 1969-70 में नेशनल स्टेडियम में कराची वाइट्स के खिलाफ PIA ने, और चौथे सेंचुरियन जो थे मोहम्मद इलियास थे। 647 पर 5 कराची। कराची वाइट्स के पास मौका है कि वो अपने बेहतरीन स्कोर का भी यहाँ रिकॉर्ड बना दें। चिप किया सरफराज ने, क्रीज से बाहर आते हुए फील्डर पहुंच से रोकने चले गए। बिलावल इकबाल शायद अब झुकने की हालत रही नहीं। ये चौथा बड़ा स्कोर है कराची वाइट्स का ऑल टाइम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। सियालकोट ने 675 रन जिना स्टेडियम में बनाए थे अपने होम ग्राउंड में, लेकिन ख़ास बात यह कि कराची ने अवे जाकर 647 रन बनाए। कराची जिमखाना ग्राउंड पर कराची ब्लूज के खिलाफ कराची वाइट्स ने 762 रन बनाए थे। तो कराची में ये बहुत रन बनते रहे हैं फर्स्ट क्लास मैचेस में। ज़्यादातर जो बैटिंग रिकॉर्ड है वो कराची में ही है, नेशनल स्टेडियम में। यार अब ऐसा लगता है कि मोमेंटम जो है वो कदाफी स्टेडियम की तरफ शिफ्ट हो गया। जैसे हम पिचेस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी रन फीस्ट है। इससे पहले लाहौर ने भी रन्स बनाए 500 से ज़्यादा, और अब कराची 649 रन पर पहुँच गए। कंडीशंस बदली हैं कराची से लाहौर तक। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि कदाफी स्टेडियम की पिच बेहतर पिच होनी चाहिए थी कंसिडरिंग के हेडक्वार्टर है, लेकिन यहाँ तो रन्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहुत आसानी से सिंगल्स अब तो मिल रहे हैं। अब तो ऐसे वेटिंग गेम है कि कब 16 ओवर्स जब रहते हैं इसके बाद वो ख़त्म हो और मैच ड्रॉ हो। 650 रन मुकम्मल कर लिए कराची वाइट्स ने 5 विकेट्स गवा के। फिर राउंड द विकेट आए हैं फाद मुनीर, शॉट फाइन लेग पर, डीप स्क्वायर लेग पर अहमद बशीर है, डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन पर तैयब ताहिर हैं, और ये लेग स्टंप के बाहर ही ये अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। और जब भी बॉलिंग की बात होती है तो क्रिकेट में बॉलिंग अटैक की इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ आज अटैक जो है बॉलिंग की तरफ से हमने बिल्कुल भी नहीं देखा।
यहाँ अटैक के लिए अम्यूनेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे इतना फ्यूल मौजूद नहीं है। सिर्फ दानियाल ऐसे बॉलर लगे या उनके साथ साद नसीम ऐसे बॉलर लगे जो थोड़े थ्रेटनिंग लगे। अदरवाइज अगर हम देखें उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत ही फ्लैट बॉलिंग लाइनअप, ना कोई वेरिएशन, ना पेस, ना एग्रेशन। और आपको बैक फुट पे जाके इतनी आसानी से जब बैटर खेल रहा हो तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ना क्वालिटी है और ना ही असिस्टेंस है पिच से। यहाँ जो तीसरी नई गेंद है वो भी नहीं ली है अभी तक साद नसीम ने, क्योंकि ये फास्ट बॉलर्स हैं, उनके थके हुए हैं। हो सकता है कि उनको किसी तरह की चोट से बचाना चाहते हूँ। अभी 4 मैचेस इनके और भी बाकी हैं, क्योंकि 170 ओवर्स के बाद ये नई गेंद ले सकते थे। उसको भी 17 ओवर्स हो चुके हैं। साद नसीम 652 पे 5। अच्छा पॉइंट रेज किया आपने तारिक भाई, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का ही वक्फा होता है एक मैच और अगले मैच के दरमियान। तो नहीं चाहेंगे लाहौर वाइट्स के कोई भी फास्ट बॉलर उनका अनफिट हो जाए, क्योंकि अगला मैच भी उनको इसी ग्राउंड में खेलना है। अगले मैच में भी इतनी ही मेहनत दरकार होगी, इतनी ही जद्दोजहद दरकार होगी। तो एक ऐसा मैच जिसका नतीजा नहीं आना है, ना कोई बोनस पॉइंट की एडेड वैल्यू है, ना कोई मोटिवेशन है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका फास्ट बॉलर कोई भी उसको इंजरी हो। चाहेंगे कि मैक्सिमम स्पिनर से बॉल किए जाएं। 16 ओवर्स का खेल है तो जल्दी से स्पिनर्स ही ख़त्म कर सकते हैं। अभी तो बैटिंग प्रैक्टिस चल रही है, आसानी से सिंगल्स अवेलेबल हैं, और अगर यहाँ पे ये दोनों कोई गलती नहीं करते हैं तो बहुत चांस है कि बड़ा 100 कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं दोनों बैटर्स ही। ये इस मैच में अगर एक सेशन शायद इनको और मिल जाता तो ये पाकिस्तान का जो ऑल टाइम जो फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है ये वो भी तोड़ सकते थे, जो कि 951 का है। इस सिंध की टीम ने बनाया था बलूचिस्तान के खिलाफ। 951 आपको बताते चलें, आपकी अगर रिकॉर्ड्स में दिलचस्पी है, पाकिस्तान में बेहतरीन स्कोर या रिकॉर्ड स्कोर जो है वो सिंध का है 951। 7 खिलाड़ी आउट नेशनल स्टेडियम कराची में 1973 में बलूचिस्तान के खिलाफ। उम्दा शॉट खेला, गैप में लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे लेकिन गेंद उनसे कहीं दूर थी। 4 रन का और इजाफा। एक बार फिर फुटवर्क कमाल का था सरफराज अहमद का, और नतीजा भी। यहाँ क्रिकेट में ये शॉट सबसे मुश्किल कहा जाता है कि आप अगेंस्ट अ स्पिन मिड विकेट के ऊपर से चिप करें, और इतनी आसानी से इतनी महारत से ये शॉट खेला है सरफराज ने कि क्या ही बात है। फील्डर भी कोई मौजूद नहीं था, गैप को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया और प्लेस भी शानदार किया। बहुत ही अच्छा साइन है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जिन्होंने वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, तो सरफराज का फॉर्म में होना। अब ऑफ साइड में खेले, एक और दिलकश स्ट्रोक, एक और चौका। सरफराज अहमद की काबिले तारीफ बैटिंग, और स्पिनर्स को वो सिर्फ आड़े हाथों ही नहीं ले रहे, ये कमाल की प्लेसमेंट भी है, और इससे बेहतरीन जो है बैटिंग हो नहीं सकती स्पिन बॉलिंग के सामने। यहाँ बॉलर को अपने इशारों पे नचा रहे हैं। पहला बॉल मिड विकेट की जानिब, अगला एक्स्ट्रा कवर की जानिब। क्वालिटी है, स्पिन को तो बहुत ही शानदार खेलते हैं। दूसरी सेंचुरी इस सीजन की सरफराज अहमद की, 661 पर 5 कराची वाइट्स। साद नसीम ये रस्मी कार्रवाई जारी रखेंगे, और 4 रन के साथ आगाज किया इस ओवर का। रमीज ने, उनके बैटिंग पार्टनर ने पिछले ओवर का इख्तिताम किया था चौके के साथ। तो इस तरह ये दोनों बैट्समैन जो हैं ये एक से बढ़कर एक शॉट खेल रहे हैं इस इनिंग्स में।
ऑल 5 सेंचुरीज हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से रमीज अजीज ने बैटिंग की है, मेरे नज़दीक सबसे स्टाइलिश इनिंग है। देखिए काफ़ी वक्त मौजूद था, बैकफुट पे गए, पंच किया, कोई फील्डर भी मौजूद नहीं था, अच्छी प्लेसमेंट भी कहेंगे। क्या बात है, लाजवाब। अच्छा लगा देख के तारिक भाई के 3 साल क्रिकेट नहीं मिली रमीज अजीज को, और जब वापस आए हैं तो जहां से ख़त्म की थी उसी फॉर्म में दोबारा शुरू की है क्रिकेट। आसान नहीं होता है क्रिकेटर के लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखना। जब क्रिकेट नज़र ना आ रही हो तो ऑफ सीज़न आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है कि क्रिकेट अभी है। और दाद देनी होगी रमीज अजीज़ को, जिन्होंने जहां से ख़त्म की थी वहीं से शुरू की है। बेहतरीन, खासी रनिंग भी की है इतने अरसे के बाद खेलते हुए। उससे पहले इन्होंने 1.5 दिन फील्डिंग में गुजारा था। 1 रन का और इजाफा। अभी जिस मैच का हम जिक्र कर रहे थे सिंध और बलूचिस्तान का, जिसमें 951 रन बने थे रिकॉर्ड स्कोर, उसमें जो है 428 रन बनाए थे। कराची के बैट्समैन थे आफ्ताब बलोच, उन्होंने 428 रन की इनिंग्स खेली थी। और दिलचस्प बात यह कि उस 428 में से उन्होंने 328 रन दौड़कर बनाए थे। एक्सट्रीम फिटनेस, बहुत मुश्किल होगा इतनी रनिंग करके, और वेदर भी मुश्किल होगा, इसके लिए आपको बहुत ही फिट होना पड़ता है, बहुत ही स्मार्ट होना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सिंगल्स लेने हैं तो आपको गैप्स तलाश करने होते हैं। शानदार इनिंग होगी, आई एम श्योर। लीड जो है वो 158 रन की है, 666 पर 5। आबिद अली और सरफराज अहमद के दरमियान इस वक्त छेड़छाड़ जारी है। दोनों एक दूसरे की गुफ्तगू से खासे महसूस हो रहे हैं, क्योंकि जो आबिद अली हैं ये चुटकुले छोटे छोटे ये भी सामने लाते रहते हैं फील्ड पर। एक 159 रन कराची आगे है, लेकिन रन्स और फिगर्स की अब कोई इतनी अहमियत रही नहीं, मां सिवाय जो इनफरादी कारनामे हैं। यह उम्दा स्वीप शॉट 1 और रन के लिए यहां पर हासिल किया गया। अली मंजूर जो हैं ये 67वां ओवर कर रहे हैं, तो इस वक्त बेहतर नहीं कि या तो ये नई गेंद लें, फास्ट बॉलर को ये वापस लेकर आएं, या फिर किसी आप बैट्समैन से बॉलिंग करा सकते हैं। इस मौके पर आप नहीं समझते कि ये तो किसी का करियर जो है वो ख़राब हो सकता है, मुतासिर हो सकता है इससे आप पे, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल से ये किस तरह निपटेंगे जो अली मंजूर हैं। देखिए करियर में तो ऑलरेडी डेंट पड़ चुका है, क्योंकि ये नंबर 4 पे आ गए हैं मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर की लिस्ट में। तो अब जो इनके पास मौका यही है कि थोड़ी कॉम्पनसेशन हो सके कि विकेट्स हासिल कर लें बॉलिंग करके, क्योंकि जो होना था, जो नुकसान होना था वो तो हो गया। इसे पुल किया शानदार तरीके से, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। शानदार बैटिंग सरफराज अहमद की जानिब से, एक और चौका हासिल किया। एक बार फिर लेंथ को बहुत शानदार तरीके से परखा और प्लेसमेंट भी उतनी ही कमाल रही। रिजल्ट भी ज़्यादा शॉर्ट बॉल नहीं था, लेकिन इतनी जल्दी
पोजीशन में आ गए थे, जल्दी परख लिया था और फील्डर भी मौजूद नहीं था। गेम अवेयरनेस भी शानदार है। आज रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया है सरफराज को। 137 रन पर जा पहुंचे, 673 पर 5। बात हो रही थी अली मंजूर की, तो 256 रन वो दे चुके हैं, जो कि ऑलरेडी चौथा मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो अब जो कॉम्पनसेशन वो यही हो सकती है कि कुछ ओवर्स करें और विकेट्स हासिल करें। अगर 2 से 3 विकेट्स हासिल कर लेते हैं तो शायद वो जो 1 for 1 256 है वो 3 for 56 हो तो इतना खराब नहीं लगेगा। और ऑप्शन भी मौजूद है, फाद मुनीर, जिन्होंने सिर्फ 7 ओवर्स किए, 42 रन दी। अच्छी लेग स्पिन की थी उन्होंने। अहमद शहजाद ने भी 1 ओवर किया 4 रन के लिए, लेकिन उनको बॉलिंग करवाने की यही वजह हो सकती है कि मैक्सिमम एम्बैरेसमेंट से बचा जाए। जब इस तरह के हालात होते हैं विकेट कीपर से भी बॉलिंग कराई जा सकती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पाकिस्तान आती थी, जिस ज़माने में तस्लीम आरिफ ने डबल सेंचुरी बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और डेनिस लिली का वो कोट भी अक्सर उसका भी जिक्र होता रहता है फैसलाबाद की पिच के बारे में। वहाँ जो रॉडनी मार्श थे विकेट कीपर, उनसे भी बॉलिंग कराई गई थी। बॉलिंग कराने पे मजबूर हो गए थे कप्तान, बड़ी तेजी के साथ रन हासिल किया, गिर गए सरफराज अहमद। तारिक भाई क्या ही पिच होगी वो, जिस पे लेजेंड्स ये कह रहे हो, डिफरेंट बयानात दे रहे हो, कितनी ही बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी वो, इससे ज्यादा होगी? लेकिन बाद में फैसलाबाद की जो पिच है वो बेहतर होती है। अब तो वहाँ गेंद स्पिन होती है फैसलाबाद में। अक्सर जो मैचेस हैं उनका नतीजा सामने आ जाता है। वो क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहाँ नहीं हो रही, लेकिन वो एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पर फास्ट बॉलर्स इब्तदाई दिनों में और उसके बाद स्पिनर्स जो हैं वो बहुत महसूस होते हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला टूर्नामेंट है इस डोमेस्टिक कैलेंडर का, जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, वो सदर्न एरिया में होगा, कराची में। तो वहाँ पर स्पिनर्स जो हैं और ज़्यादा प्ले में आएंगे। आगे चलकर जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट का मंसूबा बनाया गया दिसंबर जनवरी के महीनों में, और उस टूर्नामेंट की शायद जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट से यही हमने सुना है या देखा है कि वो सिर्फ क्वालिटी प्लेयर्स ही पिक करते हैं। उसे कहने का ये मतलब नहीं है कि इस क्रिकेट में क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है, लेकिन शायद इनसे जो अगली लॉट है, इनसे जो सीनियर लॉट है क्वालिटी में, वो हमें नज़र आएगी डिपार्टमेंटल क्रिकेट में। 676 पर 5 कराची रीजन। भी आपने जिक्र किया डिपार्टमेंटल क्रिकेट का भी, तो एक चीज़ जो डेफिनेटली तारिक भाई मेरे जहन में आती है कि हम देख रहे हैं कि रीजन क्रिकेट में बहुत सारे सीनियर प्लेयर खेल रहे हैं जो कि शायद हमें डिपार्टमेंट क्रिकेट में भी नज़र आएंगे। खुरम मंजूर हो गए, असद शफीक हो गए, या अहमद शहजाद, आबिद अली, ये वो हाउस होल्ड नेम्स हैं जो नज़र आएंगे। लेकिन इससे पहले इस रिकॉर्ड के बारे में क्या कहेंगे आप कि हाईएस्ट इनिंग्स टोटल है फॉर कराची वाइट्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये दूसरे नंबर पे आ गए हैं 675 रन। इससे पहले 762 रन बनाए थे कराची ब्लूज के अगेंस्ट कराची जिमखाना के ग्राउंड में बैक इन 1956 एंड 57। उसके बाद रीसेंट जो था 675 सियालकोट के अगेंस्ट जिना स्टेडियम में 2004-05 में। यार अभी जो मैंडेटरी ओवर्स होते हैं आखिरी 15, वो शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है, तो अगर ये नया रिकॉर्ड कायम हो जाता है तो मैं समझता हूँ कोई हैरत होगी नहीं। यहाँ अभी 9 ओवर्स हैं मैंडेटरी ओवर्स, तो जाहिर है अगले जो 9 ओवर्स हैं वो तो ज़रूर खेल होता रहेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी
कराची की टीम खेल जारी रखना चाहेगी, बैटिंग जारी रखना चाहेगी, तो जाहिर है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और अगर तो करीब होंगे रिकॉर्ड के तो क्यों नहीं, 4 दिन मेहनत की है, कुछ ना कुछ तो मिले एंड पे। 1 पॉइंट पीछे हैं, ड्रॉ के 5 पॉइंट्स मिला के इनके 9 पॉइंट्स होंगे, 10 पॉइंट्स होंगे लाहौर के, तो क्यों ना एक और एडेड अपने नाम किया जाए रिकॉर्ड कि आप हाईएस्ट रन्स बना दें। और आपकी बात शायद सुन ली है कप्तान ने, फास्ट बॉलर को लेके आए हैं, बट देखना होगा कि नया बॉल लेते हैं या नहीं, क्योंकि अभी जो बॉल थामे हुए हैं वो पुराना बॉल ही है। जी हाँ, और हो सकता है कि जो अहमद दानियाल हैं उनको इस मैच में पहली बार नई गेंद मिल जाए। कल इनका कंधा जख्मी हो गया था, इस वजह से मैदान से बाहर भी रहना पड़ा। स्लो डिलीवरी करने चले गए, और आज स्पिनर्स ने इतनी ज़्यादा बॉलिंग कर दी है, अली के जो फास्ट बॉलर हैं वो भी स्पिन करने लगे अब तो। ज़्यादा अल्फाज मुझे मिल नहीं रहे हैं कि क्या कहा जाए फास्ट बॉलर्स के लिए। कहा भी नहीं और कह भी गए हैं। और क्योंकि अभी बॉल पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। सीरियसली मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन नहीं अल्फाज मिल रहे हैं, जो हालत इस वक्त लाहौर वाइट्स की बॉलिंग की है। यहाँ ये दूसरी जानिब इस वक्त वार्म अप हो रहे हैं अहमद बशीर भी, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी नई गेंद आ जाएगी। अब रन अप और कम कर दिया है अहमद दानियाल ने, क्योंकि ये भी आदी नहीं है इतनी लंबी बॉलिंग करने के और इतनी देर तक फील्ड में रहने के। लाहौर के जो इनका जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उसको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी आज, जब इन खिलाड़ियों को खेल के बाद जब ये जाएंगे टेबल पे। इस वक्त स्लिप है और एक फील्डर काफी ज्यादा फाइन गली में, लेकिन नई गेंद के बगैर जो है फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराने का इस वक्त क्या मकसद हो सकता है एक नौजवान फास्ट बॉलर से? जाहिर तो कोई मकसद नजर नहीं आता है, और मैं बिल्कुल अग्री करूंगा आपकी इस बात से कि अगर आपने उनको ओवर करवाना ही है तो क्यों ना थोड़ा, जैसे एम्यूनेशन की हम बात कर रहे थे, थोड़ा वेपन उनके दिए जाएं कि ये लिए जो नए बॉल से करें, एटलीस्ट कुछ तो मिले। इस तरह तो कुछ नहीं हो रहा है, बॉल पहुंच भी नहीं रहा है, ट्रैवल भी नहीं कर रहा है। एटलीस्ट तारीफ एक चीज हो गई कि टेस्ट मिल गया दानियाल को, अहमद बशीर को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, कि बड़ी क्रिकेट 4 डे क्रिकेट में क्या क्या हो सकता है, किन किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ सकता है डिफरेंट कंडीशंस में। तो एक लर्निंग ज़रूर होगी, शायद आइंदा कभी आएंगे इस ग्राउंड में खेलेंगे तो उनको उनके जहन में होगा कि आप क्या क्या डिफरेंट कर सकते हैं और क्या क्या डिफरेंट सीखना चाहिए इस फॉर्मेट के लिए। एक और स्लो डिलीवरी और सरफराज अहमद ने इसे पामाल किया, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। 681 हो गया है अब स्कोर। बेजरर ओवर था, बेजरर इसका इख्तिताम हुआ, बैक ऑफ हैंड स्लो डिलीवरी। ऐसा ओवर था जिसमें बेशतर गेंदें थी वो धीमी फेंकी अहमद ने। 681, 5 विकेट के नुकसान पे।
down the track, adjusted his shot, not getting any bounce or much turn off the surface. It's a hard task for the bowlers. I first want to talk about the approach of Karachi White. I've got the best man in the business to talk to alongside me, Salman Butt. Thank you, Marina. The agony continues for Lahore Whites, bowlers, and also the fielders who are there to just give the ball back to the bowler every time the batter milks it. So Karachi Whites have really just batted for the season here in this game. 114 for Ramiz, currently still batting. Sarfaraz Ahmed, 143, nearing his 150. And 683, a mammoth total. Karachi, obviously the lead by 174, but this lead means nothing here because you don't get any extra points for this, no matter how many runs you get. And this might be the game where it ends and only 15 wickets have fallen in 4 days. Yet again, staying low. I've got some stats to share with you, and then I'm going to throw some questions. But we're talking about bowlers, the grind they're having here at Qaddafi Stadium. Should not take the batters away. Just for an idea of how easy batting here at Qaddafi Stadium is, 12 centuries so far in this season has been scored in Qaddafi Stadium. 3 in Pindi, 3 in KRL, and 2 in Aptabad. But my question, which I will pop after this delivery, ends in a dot ball. 683, 5 Karachi Whites. So my question is, when we look and we talk about how unfortunate the bowlers have been, but what about the quality of the innings of batters when they play at Qaddafi Stadium? Shouldn't that be a concern when you compare a century scored here and a century scored at Aptabad or KRL or even in Pindi Stadium? Well, definitely the conditions do matter. If they present a good challenge, then the batter's sense of achievement is better when you face challenging conditions and you overcome them and score 100, and it becomes far more meaningful to get a result which is good for your team. But if you are a batter and you have a game to play at GSL, then it's not your choice. You have to come here and then you want to make the most of it. And somewhere along the lines, it's not all about the pitch in entirety. It is also about the consistency that the bowlers have shown so far. I think they've been impatient. They haven't been able to bowl at precise line and lengths on one side of the wicket at times and haven't been able to get the batters frustrated. Talking of these two, they are a class apart. They have so much experience of cricket at top level. And these bowlers, compared to these two batters, are far less experienced and far, far from gaining that kind of experience in any time soon. So what we see here is that Sarfaraz is in absolute control. He's toyed with them all this day. He's placed to his liking every bowler. He's played the field around like, he's batting with schoolboys. So on the other side, Ramiz is also very experienced. He has played a lot of first-class cricket for Habib Bank. One bounce over the fence. Sarfaraz Ahmed, he's playing at will. He can even close his eyes against these conditions and these bowlers. Moves on to 147. But if you were one of the stakeholders, would you consider venue and opposition rather than just the numbers when it comes to bowlers or even batters? Sure. Pardon, can you please repeat that? I'm saying if you were one of the stakeholders, would you consider the venue and the opposition for both batters and bowlers rather than just the numbers? Well, obviously I would. Not only the opposition and the conditions, at which stage of the game who came good. So you have to judge the ability of someone who has responded under pressure. That also matters a lot, to gauge the mental strength
of a particular player, you need to see which conditions, which opposition, and which stage of the game he has come up, and he has brought the best of his skills out at that precise time when needed the most. Good single. Still fresh and running, Sarfaraz Ahmed. Too shy of his 150. So when we talk about conditions and the ability of players, whether they are bowler or batters, again, if you're given conditions where there isn't much promise as a bowler, it again tests your skill and your character. Just a little comparison, if I have to give. Ali Manzoor was brought in and Mohammad Irfan was left out. Runs are inevitable here. But he took wickets, Mohammad Irfan. And Ali Manzoor struggled, he just got one. That also has a lot to say about the skill of the bowler itself. Seemed as if for a second that there was a chance, but well clear of the fielders, nothing to worry about. The same story would continue. And yes, skill does matter. And the top-notch bowlers, they find a way. Why are you called a great player? Why are you different from the average or the good players? It's because you have that ability to adapt and give good performance under all conditions, under conditions that challenge you the most, that ask for that extra bit, and whoever is prepared to give that extra bit, to have a plan of coming out on the right side. Confusion, he wanted the single. 148, Sarfaraz Ahmed eyeing his 150. We'll have to wait for it though. 687 for 5, Karachi Whites. On the other hand, when we look at the bowlers, in the 5-wicket hauls in Qaddafi Stadium, it's just one, that was Numan Ali. In Pindi, there are 4 5-wicket hauls. In KRL, 5, and in Nabtabad, 4. Again, the conditions are in discussion. Yes, and the quality of bowling as well. The thing is that if you have a look at very recently when England test team toured Pakistan, and the whole world called those pitches a road, and there was a lot of debate on the quality of the pitches, that they were too much in the favor of the batters. But England won those series and that test matches, and they took 20 wickets. You cannot win a test match without taking 20 wickets. So they found a way out. And Anderson, being a 42-year-old fast bowler, he was so accurate. He bowled 26 overs in that one particular innings, and he took the best in the world, and he bowled them neck and croft, not even an inside edge. So he had that art and that skill to produce a result. And all the Pakistan great bowlers, if you see the earlier part of their careers, they won Pakistan tournaments by getting teams out in Sharjah, where there's not a single piece of grass available. There we see a shot of authority again, swept in the gap. And fielder from mid-wicket did well. Stopped the boundary and restricted it to 2 runs only. And that brings Sarfaraz Ahmed on strike. 2 away from his 150. It's been an innings of higher class. 256 already, the partnership amongst them. Lahore White bowlers were literally clueless, especially the spinners against him. Played with full authority. Nudge down. Will get a single. Still will have to wait on 149 now. Yeah, he's in no hurry. It's been all too simple for him. He's just milked the spinners around for once, and whenever there has been an opportunity, he has gone for his shots, and he has made the most of it. Mees Aziz has been exceptional as well. A very clean innings. Footwork, good technique, solid, calm head on his shoulders. Sarfaraz Ahmed, 149. Saad Naseem looking at his watch, but it really won't help.
And there it is. 150, easily done. He's played superb innings, came in, settled in, made sure he grabbed all the opportunities he had, dominated the spinners, dealt with the fast bowlers, has shown his commitment and fitness level, and this is an innings of a highest order. Yes, fabulous knock this. Made the most of the opportunity at hand, and good players do that often. And that is why they are different from others. Play against the spin. It's 93 for 5, Karachi Whites. No change in kits. Doesn't seem like they have any plans to declare and field. And when we talk about quality of a player, especially how Ramiz and Sarfaraz dominate spinners, there's also a question, when you play at the highest level, you need to have certain amount of shots, range of shots you need to dominate and play even fast bowlers and spinners as well. We've seen Sarfaraz Ahmed, he has the authority of sweep shots, he uses the crease well. How important it is to develop more shots to be sustainable and successful at international level? Well, talking about the shots and what you have in your armory, I think every person is a product of his environment. And so he has grown up in Karachi, where pitches are normally helpful for the spinners, and there's a lot of spin on offer in all the club cricket that you play, and he has played a lot of it. Even now in Ramazan, he plays lots of tournaments, and all those tournaments are played in the grounds where it spins a mile. So to be successful from that part of Pakistan, you have to be good against spin. And you have to be good at these shots, which are sweeps, those nudges, cuts, and using your feet. They're all traits which are used against top-class spinners and spinning conditions. So he has been, raised up in an environment where you naturally become good against spins. And out of those, I think he stands out with all those qualities. Way outside off them. Got away with it. No signal from Rashid. And that's obviously the initial armory you have, but as you move on to the highest level, teams do an analysis of you, your technique, your strengths and weaknesses, and then you have to keep on adding for the longevity of your career. And that's really important to understand as a batter, whether you're a bowler as well. Yes, as an athlete of any international sport, these days, with the advent of science and technology, with a lot of analysts coming into play, they start to analyze and they start to, find out the loopholes in your game. And that is where your point comes in, to keep growing, to keep making a self-analysis and to keep growing and taking all that into account when you go to practice and try to practice where the loopholes are. So you are always ahead of the opposition. Doesn't matter you are batter or a bowler, opening batter or a middle order. There's always room for improvement, and there's always, something to work at. And I think that is what makes your practice quality practice. If you have a target, if you don't, then you're static. And once you're static, people find ways out of nullifying your performances. Tested with a shorter one, Ramiz. He still bowling his heart out with an older ball. And also there comes a time in your career, or at times when you go abroad, you haven't really faced a certain type of bowler. We don't see so many left-arm wrist spinners. Or at times when you are batting against someone like Mohammad Irfan, who's tall enough. So how do you deal with such environment or such bowlers when you haven't really had an opportunity to practice against such skills? Well, again, that is where the innovative part comes in.
we as humans have been blessed a lot with this thing called brain. And if it's functional, then you find out ways, you create an environment, which I just spoke about. So I tell you a good story, short one. My first tour was with the Pakistan team to Holland, where we played Australia and India in a triangular series. So I saw our captain, Inzi Bhai, a lot of respect for him. He was one of the great players Pakistan ever produced. So he was going to play Glenn McGrath, who was obviously tall. So I saw him practicing. He made someone stand up on a stool at least 2 feet high, and then the guy was throwing down from that height. And that is what I used before facing Mohammad Irfan in domestic cricket. I did the same. I asked someone to stand up on a stool and then throw me from there, and which made it a lot easier in the game. So you create environments. You think of different things. And another one, Anil Kumble was one of those leg spinners who had very good sliders, and the ball used to skid off the track and, like a slow in swing. So Yunus Bhai saw at this very ground GSL practicing on that side, I remember. With wet balls, he asked the leg spinners to bowl with the wet balls. So it landed with the drift and it kept going like a slow in swing. And Yunus Bhai, we all remember how much he scored in India. 196 overs done. Karachi Whites 696 for 5. 262 is the partnership between Sarfaraz and Ramiz. Still going strong. Lead of 187. Running out of ideas and ballers as well, Saad Naseem. 32nd over. Room given. Got protection in the deep. Then it has a lot to say about how you prepare for the upcoming events, whether it's a shorter format, you do your research about the oppositions, and even where your strengths lie, and you can score runs of certain type of ballers. And I think it's more about opening up to the opportunities rather than settling for excuses. I think the will is very important, and there's an old English saying, where there's a will, there is a way. So if you are willing to do something, if you are willing to do something differently and perform at the top of your skill levels, then you find out the ways of practicing. You start to challenge yourself, and the first person to beat is yourself when you do that. And that is when you start finding it easy under pressure, because you have prepared it in that way. Oh, aerial, but safe. Will race the fifth for the boundary. He's throwing now with Saad Naseem. 700 score in Pakistan. This is amazing. That's the 22nd time this has happened. Have a look at that. Again, just creating room and the angle to take a tag back to Saad Naseem. They're just enjoying their batting. I'm not sure what Lahore Whites will be thinking, because they've got many more games left here to be played. I think they play one more game here and then they finally move away. And I think they had to play 4 here. They have already played 3. This is the 3rd one. And but it's not about who is playing here how many times. It is about doing something different. Another boundary in the process. Ramiz cuts Saad Naseem and manages to get another 4. It's all just too easy now for the Karachi batters. And Lahore spinners, they have nothing special and no difficult questions to ask from these 2 batters. Just the width given. Square cut off the front foot. Nothing is really happening now. They've been very reluctant of taking new ball. I don't know why, because it's one thing that the batters are looking good, but then you tend to take your own opportunities. We'll come back to that. 707 for 5, Karachi Whites.
158 for Sarfaraz Ahmed. Meets Aziz on 123. Lead by 198 runs. Highest innings totals. Right there. Second number. Nice. It's 762 for Karachi Blues. Karachi Gymkhana. It's a good stat to have a look at. In first-class cricket history for Karachi Whites, these have been the highest runs. But I imagine how many times that the result has come out in the favor of the team scoring that big. That would be another interesting stat. But Bashir will continue. Still unlucky with the wicket. There'll be another 4. More runs. Runs were never a problem for Karachi Whites. Yes, now it's down to the mere throwdowns, it seems. And it's just a routine matter. Bowler coming and then getting hammered by either Sarfaraz or Ramiz. Another loose ball and another boundary. The Lahore bowlers have been really put to the sword by these two batters all day today. Since the fall of the wicket of Fahad Iqbal, nothing has seemed to happen for them. Vivid. Outside off them. Way outside off them. The best thing to do now for Lahore White would be just keep it simple. Bowl within stumps. Any room given either way will be punished. They don't even look like creating a chance. And that is where you tend to think, why not the new ball? Why not the new ball? When it's available and the bowlers, the faster one, are still bowling with the old ball, why not? This time a full toss placed towards deep point. Just the one on this occasion. Sarfaraz was itching to get a couple. The moment he played, he shouted for 2. And Ramiz, rightly so, turned it down. Ahmed Bashir, he looks like he's been bowling since ages. And poor fellow, nothing from the pitch. The captain is not giving the new ball. So it's all up to the batters. At the mercy of Ramiz and Sarfaraz at the moment, the Lahore bowlers. And you need to question the intent of fielding as well. Couple of drop chances. That never helped the bowlers or Lahore Whites either. Just straying with the time here. Ramiz might be thinking about his 150. 203 runs lead already for Karachi Whites. Well, one thing that can be added to the purpose is that Sarfaraz Ahmed has no double century to his credit so far in his career, and today he needs 37 more runs. And the way the bowling, there is one. So our statistician tells us there is one double century. So maybe he can have another one today. And no better chance when the bowling is in this kind of shape and the fielding side is just there throwing the balls back to the bowler to go back and restart again. So this is the best possible time a batter can have. At the end of the day, it comes on individual achievements rather than as a team. Karachi Whites already sitting on top of the table. No worries there for them. Helps it with the angle. There'll be another boundary. Expensive over from Ahmed Bashir. 716 for 5, Karachi Whites. I don't know what to say now. Every over has been the same. Couple of boundaries, bowlers bowling all over the place, fielders having to run about and return the ball. And it's all been the show of Sarfaraz and Ramiz so far.
Do you reckon Karachi Whites could have changed the scenario? They're already on the top. Maybe could have declared around 170. Let's look at superb innings of Sarfaraz Ahmed. He started off really well. He looked calm and compact down the track against the spinners, dominated it. Some superb timings off the fast ballers, delicate touches. He's always in control of his game. That's the area he loves. We've seen some gorgeous drives. Wristy work as well from him. It's been superb innings of highest order. Loose deliveries were offered and he capitalized on it. Straight down the ground this time. He's enjoying his time out in the middle. Again, room given. He knows that they are targeting him around the wicket within the stumps. So Karachi Whites is on the top. Do you think they could have declared and maybe take up the challenge against Lahore White? Well, looking at the bowling that they have and the way that they bowled, I think Sarfaraz is taking the right decision, because Karachi White bowlers do not have the firepower to effect a major collapse on this pitch, and therefore I think he's saving them for the future games where the pitches might be more, result oriented, and Sarfaraz has taken the right decision. Just the shimmy down. He's looking for a second one. Good running. He's on 167, yet fit enough to push for the second one. Taking on the fielder on the boundary. So this is the highest ever score by the Karachi Whites in GSL. Swept and swept beautifully in the gap. Picked up nicely between the two patrollers on the boundary, but it does not matter because he can close his eyes and sweep the spinners all day long for boundaries. So this is the highest team total at GSL. Previously it was 722 by Habib Bank versus National Bank, 1976-77, and now in 2023 it's Karachi Whites against Lahore Whites, 7-6 at the moment, and still going on. Comes down the track, Yorks himself. Well, a lot of accolades for Karachi Whites as a team, and probably as individuals as well. 173, Sarfaraz Ahmed. He's eyeing his double 100. Will keep the strike. Just a single at the end of the over. 727 for 5, Karachi Whites. Still going strong. Have a look at that. Hundreds by Khurram Manzoor, Ahmad Alam, Asad Shafiq, Ramiz Aziz and Sarfaraz. Still not out. This will give them a lot of confidence, obviously, moving into the season. They'll be traveling to different venues where there might be slightly tougher conditions to bat on. Well, it has been that kind of a season where it's raining centuries here at the GSL, and we have 5 in this particular innings, and all of these last 5 coming from the Karachi Whites team, and no wonder why there have been 12 centuries scored here at the GSL, and combined other total is just 8. So if you're out of form, travel to Qaddafi Stadium and get your form back as a batter. Finally, the new ball is here. We have been itching as commentators. I wasn't sure why Saad Naseem took this long
Yes, that would be interesting to know if we could, that why it took them so long. It has been available since the 170 overs were bowled. So 29 overs later, something has convinced him. Down the track, Sarfaraz Ahmed. There'll be a wide. Got one slip and a gully. I think the fast bowlers might have convinced him, or literally begged him. And we can see from the first ball why he wasn't convinced for that long. So I wonder how long you have to bowl to get into this line and length thing. Just one slip and a gully. Again, a very defensive field placement by Saad. Driven. Slight bit of misfielding will allow him a single. We've got the new ball. I know it's a very long day for the fast bowlers, but again, try to create some pressure on the batters. Try to look for wickets. Yes, and if there's any chance of anything happening, it has to be the new ball. Only if it was bowled in the right areas, the batters might have something to think about. Nicely dealt with. Came back in. He's a risky player, Ramiz Aziz. Ahmed and Daniel will most probably operate from the other end. We'll have to see if he can generate some pace. It's amazing, actually. You don't take a new ball and then you get to the mandatory overs and you take the new ball. So there's something amazing going on which we are failing to understand so far. Quick single. Oh, he had given it up, Sarfaraz Ahmed. Farhan was nowhere near the stumps. That would have been curtains for him. But rather, Ramiz Aziz, very late to get out of the blocks, and then he literally strolled towards the other end. Oh, how did he got away with that? I thought for a moment it hit the stumps. Not sure about the appeal. Yes, a bit of swing, but too late now. And lucky, Ramiz, he survives this one particular ball that I think has swung more than anything in this game. There we see also the round the wicket angle helping it. Probably one of the few times the seam has been presented and we can see some swing even on the fourth day. Something is happening with the new ball. Get another slip in there. Shorter one. He's testing Ramiz. Everyone is lethargic out there, but still Ahmed Bashir is bowling his heart out. Yes, that's more anger there from the bowler. And this one carries well to the keeper. The first time the ball swung that much and the next ball has been bowled cross the seam. So interesting things happening out there. That tells a lot about the bowler. You got the new ball in your hand, the red cherry. You would love to swing it, especially after the delivery he had, the previous one. That was a short cut inside Ramiz Aziz. And again, as you pointed out, cross-seam delivery doesn't make sense. Oh, he's back again with seam up. He's hitting some good areas, asking the right questions from Ramiz and also from Rashid Rashid. 7:31 for 5. He's getting something. Have a look at that. Again, whenever the seam has been presented and he's balled in the right areas, it's good length up front, it has created some problems. Drinks break now for the players and change in comms.
पानी का वक्फा खत्म हुआ। यहाँ पर कराची वाइट्स ने अपनी इनिंग्स को मजीद तूल दिया। इस सेशन में भी बैट्समैनों की जारे मिजाजी देखने में आई। सरफराज ने आड़े हाथों लिया स्पिनर्स को, रमीज अजीज ने उनका भरपूर साथ दिया। अहमद दानियाल थके थके नजर आए। सरफराज ने उन्हें बाउंड्रियों से उनको खुशामदीद कहा, लेकिन स्पिन के खिलाफ तो इन दोनों के खिलाफ एक भी ना चली। अली मंजूर ने बहुत लंबी बॉलिंग की और उनकी खूब जमकर पिटाई की सरफराज और रमीज अजीज ने इस सेशन में। और ये स्कोर जो अब आपके सामने नजर आ रहा है, पाकिस्तान में ज्यादा टोटल जो बने हैं उसमें काफी ऊपर अब ये आ गया है। टॉप 10 में इसने जगह बना ली है। लेकिन ये कजाफी स्टेडियम पे बनने वाला सबसे बड़ा स्कोर है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 731, 5 खिलाड़ी आउट। यहाँ नई तारीख रकम हो सकती है। ये 762 का जो रिकॉर्ड है कराची ब्लूज के खिलाफ कराची वाइट्स का, ये भी अब खतरे में लग रहा है, क्योंकि जिस तरह ये खेल शुरू हो रहा है और आखिरी 1 घंटे का, उसमें अगर ये खेल जारी रखते हैं दोनों कप्तान, तो जिससे आप ये ख़त्म करने के मजाज हैं, तो कुछ बात नहीं कि ये रिकॉर्ड भी ना टूट जाए। कजाफी स्टेडियम में तो इससे पहले इतने ज़्यादा रन नहीं कभी बने। 1959 से यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली जा रही है। ये रिकॉर्ड स्कोर है। इससे पहले 722 रन हबीब बैंक ने बनाए थे नेशनल बैंक के खिलाफ। 200 ओवर्स इससे पहले हो चुके हैं। 200 ओवर्स हो चुके हैं। सरफराज अहमद की अपने 200 पे नज़र होगी। 23 रन चाहिए। एक डबल सेंचुरी उन्होंने पहले बनाई हुई है। जी बिल्कुल, और इस सीजन में तो ज़बरदस्त बैटिंग फॉर्म में है और चांस नहीं ले रहे। गेंद कुछ देर तक हवा में रही और यहाँ 4 रन मिल जाएंगे। पॉइंट पर फील्डर बहुत बाहर खड़े हुए थे, इसलिए गेंद उनकी पहुंच से बाहर। रमीज अजीज अब 132 पर पहुंच गए। कराची का आखिरी रिकॉर्ड की तरफ सफर जारी है। और पार्टनरशिप के 300 रन मुकम्मल हुए इस बाउंड्री के साथ। 302 रन अब इन दोनों ने बना लिए मिलकर छठी विकेट की शराकत में। ट्रॉफी 302 रन की ये पार्टनरशिप तकरीबन हर ओवर के बाद ही एक से एक रिकॉर्ड यहाँ बन रहा है। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड यहाँ पर टूटे और टूटने जा रहे हैं। जैसे आपने कहा, लम्हा बलम्हा जो हमने चार्ट दिखाया वो कराची वाइट्स के टोटल्स का था, जिसमें अब ये टोटल दूसरे नंबर पर आ गया है। लेकिन पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तारीख में ये टोटल अब 10वें नंबर पर सबसे बड़ा टोटल आ गया है और इसमें भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है। क्या फील्डर पहुंच सकते हैं? खासे दूर हैं वो। और अहमद बशीर क्योंकि थक भी चुके हैं स्पेल के दौरान हैं। 201 ओवर से टीम फील्ड में नहीं रोक सके। 740 कराची रन से दिल भर नहीं रहा इन दोनों का। बिल्कुल आपने सही कहा। और लाहौर के बॉलर्स भी सोचते होंगे कि ऐसा क्या कसूर उनसे हो गया जिसकी सजा उनको मिल रही है यहाँ पर। बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी है। और जब इतना बड़ा स्कोर आमतौर पर होता है तो अक्सर हमने देखा है कि बॉलर्स हैं उनके करियर, कई बॉलर्स के करियर जो हैं वो दांव पे लग जाते हैं। कई करियर जो है तबाह हो जाते हैं। 5 सेंचुरियां बनी बैटिंग इनिंग्स में और 4 सेंचुरियां बॉलिंग इनिंग में बन चुकी हैं। इस वक्त 4 बॉलर्स सेंचुरी का हदफ अबूर कर चुके हैं। अहमद दानियाल ने 70 रन दिए और जो अली मंजूर हैं वो तो अगर उन्हें दोबारा मौका मिला हो तो वो तो ट्रिपल सेंचुरी के भी करीब हैं। 267 रन दिए हैं और एक खिलाड़ी को आउट किया है।
एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर याद आते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स दिए थे, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे थे। जोरदार अपील, यहाँ पे बॉल अंदर की जानिब आया बिलावल इकबाल का, लेकिन बल्ले को छुए बगैर निकल गया। नए बॉल से कुछ मूवमेंट देखने को मिल रही है हमें। 740 पर 5। यहाँ गेंद सीम हुई, गलत लाइन पर खेल गए थे, बल्ला वाज़े तौर पर बाहर था, तवक्को कर रहे थे एंगल की। आज के दिन की गिरने वाली विकेट हासिल की थी बिलावल ने ही। ये बॉलिंग कार्ड है, आप देखें बिलावल इकबाल ने सेंचुरी कंसीड की, अहमद बशीर ने भी, और अली मंजूर ने तो 267 रन दे दिए, 112 रन दिए। साद नसीब ने पार्ट टाइम स्पिनर, हालांकि 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। अहमद दानियाल इस फहरिस्त से बच निकले ऐसा लगता है। 24 ओवर में 70 रन दिए, सिर्फ 2.9 की उनकी जो इकॉनमी थी, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी उनकी जानिब से। यार इस बॉलिंग कार्ड से ये भी जाहिर होता है कि अगर 740 रन मुखालिफ टीम ने बनाए हैं तो आपको और बॉलर्स को भी आजमाना चाहिए था। यहाँ अली दरियाब से बॉलिंग कराई जा सकती थी। आप ऐसे मौके पर उन बॉलर्स को भी आजमा लेते हैं, उन बैट्समैनों से बॉलिंग कराते हैं जिन्होंने कभी भी ये काम ना किया हो। विकेट कीपर बॉलिंग कर लिया करते हैं इस तरह की बैटिंग इनिंग्स में। और जब नया बॉल बिल्कुल इमीडिएटली आपने नहीं लिया, उस वक्त चांस था कि आप नया बॉल लेते और कोशिश करते कि इनिंग्स सिमट जाती, तो आपके बैट्समैनों को घंटा डेढ़ बैटिंग का भी शायद मौका मिल जाता। ये देखिए कंफ्यूजन हुई, लेकिन ये जो रिवर्स फ्लिक थी ओवर थ्रो के नतीजे में वो रन बिलाखिर मिल ही गया सरफराज को। तो यहाँ इस लेट स्टेज पे जब आखिरी घंटे का खेल शुरू होने को था, तो वहाँ नया बॉल लेके फास्ट बॉलर्स को थकाने की कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि अब तो ज़्यादा देर खेल होना भी नहीं है, तो क्यों ना उनकी एनर्जी को बचाया जाता। सिर्फ 2 दिन का वक्फा है इस मैच में और अगले मैच में। एक ओवर हो चुके हैं और ये 202वां ओवर है। 741 रन बनाए हैं। आज का खेल जब शुरू हुआ तो 125 ओवर हुए थे, तो 75 ओवर्स के बाद जो आखिरी घंटे का खेल शुरू हो जाना चाहिए था। और कंफर्म करते हैं अभी स्टैटिस्टिशियन से और स्कोरर से कि अगर 6-7 ओवर्स के बाद क्या दोनों कप्तान हाथ मिलाएंगे या सरफराज की डबल सेंचुरी का इंतज़ार किया जाएगा। ये जो आखिरी 1 घंटा जो शुरू होता है, जो वो लाजमी 15 ओवर्स होते हैं, वो शुरू होते हुए जो दोनों कप्तान हैं वो मैच ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सरफराज अहमद जो हैं ये पानी पीना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ फिजियो जो हैं उनकी मदद तलब की गई थी और सरफराज ने पानी मंगवाया अपने लिए, तो इससे मतलब यही हम समझ सकते हैं कि वो बैटिंग जारी रखेंगे। बिल्कुल, और शायद क्रैम्प हुआ है रमीज अजीज को। काफ़ी लंबी बारी ली उन्होंने, उससे पहले काफ़ी लंबी फील्डिंग भी की, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। आज जो ओवर रेट रहा है वो अच्छा रहा है, तो इस वजह से नॉर्मल में हमने देखा है कि पिछले मैचेस में जो आखिरी घंटे का 15 ओवर्स का खेल है वो काफ़ी लेट शुरू होता था, 4:30 या 4:40 के बाद, लेकिन आज 75 ओवर जो हैं वो 4 बजे तक ही करा दिए गए थे। या फिटनेस भी अच्छी दिखाई कराची के बल्लेबाजों ने। खुरम मंसूर ने सेंचुरी बनाई, 248 गेंदें उन्होंने खेली। रमीज अजीज 251 गेंदें खेल चुके हैं। सरफराज अहमद ने भी 200 से ज़्यादा गेंदें खेली हैं। गर्म मौसम में सिर्फ बॉलर्स की फिटनेस टेस्ट नहीं होती, बल्कि जो बैट्समैन हैं उनको भी देखा जाता है
की फिटनेस को भी, और 307 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है रमीज अजीज और सरफराज अहमद के दरमियान। तो खेल अब फिर से शुरू हो रहा है। 32 एक्स्ट्रास भी लाहौर के बॉलर्स ने दिए हैं, जिसमें 18-22 के रन, इस पे भी नजर रखने की जरूरत है। 18-22 के रन हैं इस इनिंग्स में। विकेट कीपर फरहान ने स्ट्रगल किया है, उनकी भी वापसी हुई काफी अरसे के बाद। और मुझे लगता है कि इन दोनों की जरूरत ना पड़ जाए मैदान पर। साद नसीम को बॉलिंग करने के लिए ये जो दो नौजवान अभी नजर आए थे फील्ड पे। अगर बात इन तक ही आ गई है तो फिर ना ही समझे। तो अपनी चहलकदमी कर रहे हैं उमर अकमल कैसे अंदाज में। यहाँ ये वार्म अप करना भी शुरू कर दिया है। शिराज मुगल हैं, साथ अफजाल हैं। शिराज मुगल जो है ये एक ज़माने में शारजा में हुआ करते थे, और जब पाकिस्तान की टीम जो है क्रिकेट, जब टेस्ट क्रिकेट वहाँ चली गई थी तो ये इन्होंने बहुत कवरेज की उस ज़माने में। अच्छा खेला। इससे फाइनल की जानिब वहाँ पर उतनी अच्छी फील्डिंग भी अली ज़रियाब की जानिब से, अच्छे प्रोफेशनल की तरह उन्होंने ये चौका बचाया इस मौके पर आके भी। जी बिल्कुल, और अभी भी जो फील्डर्स एफर्ट कर रहे हैं आपको उनकी दाद देनी होगी, उनकी फिटनेस की, उनकी स्टेमिना की। कुछ अलबत्ता फील्डर्स ऐसे हैं जो फील्ड में अपने कंधे गिरा चुके हैं। ज़ाहिर है एक सब्स्टिट्यूट फील्डर भी मौजूद है फील्ड पे, क्योंकि अहमद शहजाद को खाने के वक्फे के फ़ौरन बाद एक इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो दोबारा फील्ड में आए नहीं। फास्ट बॉलर्स तो थके हुए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। न सिर्फ ये कि एफर्ट लगाई, बल्कि इसलिए कि उन्हें कामयाबी भी नहीं मिली। गेंद नीचे रही एक मरतबा फिर। उस एंड से हमने ये देखा है बारहा होते हुए, लेकिन किसी भी बॉलर ने इतना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी शो नहीं की। 742, 5 खिलाड़ी आउट। ये रिकॉर्ड साज मैच साबित हुआ है, जिसमें कराची ने कज़ाफी स्टेडियम में नई तारीख रकम की है। सबसे बड़ा स्कोर बनाने की सिर्फ 5 ही खिलाड़ी उनके आउट हैं। 722 रन हबीब बैंक ने बनाए थे। ये वो ज़माना था जब हबीब बैंक की बैटिंग लाइनअप का बड़ा शोहरा था, उसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे, लेकिन इस मैच में जावेद मियांदाद नहीं खेले थे। ये जो 722 रन का मुकाबला था नेशनल बैंक के खिलाफ, जावेद मियांदाद नहीं खेल रहे थे, इसके बावजूद हबीब बैंक की टीम जो थी वो 722 रन बना गई थी। आप अंदाजा कर सकते हैं वो कितनी ताकतवर बैटिंग लाइनअप थी। जी बिल्कुल, क्योंकि यही वो साल है जब जावेद मियांदाद ने अपना डेब्यू किया था, और यहीं कज़ाफी स्टेडियम पे उन्होंने 163 रन की इनिंग खेली थी डेब्यू पर, और उसी सीरीज में फिर डबल सेंचुरी भी बनाई कराची पे, और सबसे कम उम्र खिलाड़ी ठहरे थे। जहाँ और ये जो 722 का इससे पहले रिकॉर्ड था, उसमें राशिद इसरार जो थे उन्होंने हबीब बैंक के लिए 350 रन बनाए थे। और अगर इसकी मजीद बात की जाए तो उस हबीब बैंक की इनिंग्स में और कुछ सेंचुरी नहीं थी। राशिद इसरार के 350 के अलावा कोई सेंचुरी नहीं थी। तारिक साहब, बॉलर्स कौन थे वहाँ नेशनल बैंक की तरफ से? एहतिशामुद्दीन, एक तो अनवर खान थे, वो जिक्र किया करते थे उस मैच का। अनवर खान वो अभी भी हैं, अमेरिका में मुकीम होते हैं। हो सकता है ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हूँ। पाकिस्तान के लिए उन्होंने टेस्ट मैच भी खेला था न्यूजीलैंड में। अनवर खान ने फास्ट बॉलर थे। यहाँ एहतिशामुद्दीन
एक और टेस्ट क्रिकेटर थे उस बॉलिंग अटैक में। नेशनल बैंक से इकबाल कासिम का भी ताल्लुक रहा है। अब ये मालूम करना पड़ेगा कि इस मैच में वो भी थे या नहीं थे। उनके भी करियर के ये इब्तिदाई अयाम होंगे, क्योंकि उन्होंने भी इसी सीज़न में टेस्ट मैच खेला था, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में खेला था उन्होंने शायद। यहाँ इकबाल कासिम नहीं थे, नसीर मलिक थे, ये भी एक फास्ट मीडियम बॉलर हुआ करते थे। ये वर्ल्ड कप में भी गए थे 1975 में। नसीर मलिक वो थे रिसीविंग एंड पर। सुल्तान राना खेले थे उस मैच में हबीब बैंक के लिए। बड़े स्टाइलिश बैट्समैन हुआ करते थे अपने ज़माने के सुल्तान राना। इन दिनों एशियन क्रिकेट काउंसिल से वाबस्ता हैं। लेकिन एक बात है कि उनमें से कोई भी बॉलर इस मैच में वो नहीं होना चाहेंगे। ये अच्छी गेंद थी, इस बार कट हुई, थोड़ी नीचे भी रही। क्या ये बल्ले से लगी थी जहां, क्योंकि इनका ये ख्याल है बिलावल का कि विकेट कीपर को आगे होना चाहिए था। जी हाँ, बॉलर की फ्रस्ट्रेशन तो समझ आती है, क्योंकि फरहान ने कोई खास विकेट कीपिंग की नहीं इस मैच में, और जाहिर है कि जो बॉलर की मेहनत है और तकलीफ का उन्हें अंदाजा नहीं है जिस हिसाब से कहका लगाया फरहान ने। गेंद आगे गिरी थी, लेकिन इस विकेट पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉल ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और यही बिलावल ने कहा कि आप आगे आ सकते थे। अच्छा हुक शॉट, एक रन का और इजाफा। अभी भी दोनों बैट्समैन विकेटों के दरमियान अच्छी दौड़ लगा रहे हैं इतनी बड़ी पार्टनरशिप के बाद भी, और ऐसा भी कम होता है। ये 234 रन की जो कराची की लीड है, एक ऐसी टीम के खिलाफ आप इतनी बड़ी लीड हासिल करें 509 रन बनने के बाद, ऐसा कम ही होता है। जी बिल्कुल, अगर लाहौर की इनिंग्स शेर थी तो कराची की इनिंग्स सवा शेर से भी कुछ ज्यादा ही हो गई। बहुत ज्यादा मुशक्कत करवाई उन्होंने लाहौर को, उनके बॉलर्स को, उनके फील्डर्स को, और अभी भी जान उनकी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है सरफराज और रमीज अजीज। अच्छा शॉट खेला सरफराज ने, एक और रन के लिए सरफराज अहमद अब 179 पर जा पहुंचे 21 चौकों और एक छक्के की मदद से, जबकि कराची 744 पर 5। ज्यादा स्ट्राइक देखी नहीं सरफराज ने पिछले चंद ओवर्स में, इसलिए उनका स्कोर भी उस तेजी से बढ़ा नहीं जिसकी उन्होंने खुद भी तवक्को की होगी। फिर फास्ट बॉलर्स के आने से कुछ अनइवन बाउंस और मूवमेंट भी देखने को मिल रही है। इसी से वही सवाल उठता है कि अगर आप वक्त पर नई बॉल ले लेते तो शायद इनिंग्स और टेल को समेटने में जल्दी होती, और 1.5-2 घंटे की जो फालतू मुशक्कत थी उससे बच जाते लाहौर के बॉलर्स और फील्डर्स। मिड विकेट को आगे लाया गया, ऑफ साइड में 4 फील्डर बैट्समैन के करीब मौजूद हैं। सरफराज नाखुश हैं क्योंकि इस गेंद को डिस्पैच होना चाहिए था। अपनी डबल सेंचुरी की जानिब गामजन हो रहे हैं। बड़ी काबिल सताइश इनिंग है सरफराज अहमद की ये, और स्पिन के सामने आज उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की, स्पिन पर हमेशा से मलका था, लेकिन आज जो महारत दिखाई यकीनी तौर पर काबिल तारीफ, ये नहीं ये मास्टर क्लास थी उनकी ये इनिंग्स स्पिन पे।
जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑफ साइड की फील्ड को मजीद स्ट्रेंथन किया है क्योंकि सरफराज पिछले गेंद पर मिस आउट कर गए। बाउंड्री अपॉर्चुनिटी थी लेकिन अब वो गैप भी फिल कर दिया है साद नसीम ने। फिर नीचे रही गेंद। जब आपने कहा कि मास्टर क्लास थी तो यकीनन यहाँ पे रमीज़ अजीज़ को भी दाद देनी होगी। उनकी इनिंग्स भी काफ़ी ज़बरदस्त थी, स्पेशली अगेंस्ट स्पिन। तो उन्होंने भी बहुत ही शानदार बैटिंग की, कदमों का इस्तेमाल किया, बॉक्स का इस्तेमाल भी अच्छा किया, अगले कदम पर, पिछले कदम पर। और फिर उनकी जो वेरिएशन थी स्वीप शॉट्स की, उसने स्पिनर्स को तो बिल्कुल भी सांस लेने का मौका नहीं दिया। चार 34 स्कोर था आज सुबह जब 5वीं विकेट गिरी थी। फहद इकबाल आउट हुए थे। एक और वाइड गेंद इस इनिंग्स की, ये 5वीं वाइड गेंद थी। और हम सरफराज की बात कर रहे थे। आपकी जो जिम्मेदारी है वो बड़ी ज़्यादा हो जाती है जब आप टीम के कप्तान हूँ, विकेट कीपर हूँ, फिर आप किलीदी बैट्समैन भी हूँ टीम के। लेकिन उनने सारी जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी के साथ सर अंजाम दिया है। लाहौर की टीम के बॉलर्स और फील्डर्स के दरमियान आपस में ये कशमकश अब चल पड़ी है। शायद ये जो बायर की बॉलिंग वाला प्लॉय था इसके लिए अब बहुत देर हो गई है, तो कोई भी फालतू गेंद कराने के रवादार नहीं हैं बॉलर्स और फील्डर्स। सरफराज ने सिंगल हासिल किया। इस स्टेज पे एक्स्ट्रा बॉल कराना ऐसा ही है जैसे आपकी सज़ा में जो है वो तवालत होती जा रही हो। इसीलिए आबिद अली ने स्लिप से आवाज़ लगाई अहमद बशीर को। मैदान पर अब जो साए हैं खासे लंबे होते जा रहे हैं। हमारे जो दाएं जानिब इंज़िमाम इनक्लोजर, कायद इनक्लोजर का खुनक साया ये भी बढ़ने लगा है। मौसम बेहतर हो जाता है चाय के वक्फे के बाद लाहौर में, इसीलिए फास्ट बॉलर आए नई गेंद के साथ। और ये रन आउट का मौका था लेकिन क्या ऐसा कर सके, ये सवाल उठाया। और ये अंपायर जो हैं उनका ख्याल था कि पहुंच गए हैं सरफराज अहमद। यहाँ टीवी अंपायर नहीं है लेकिन यहाँ दाद जरूर बनती है अहमद बशीर की। इतने लंबे स्पेल के बावजूद बहुत तेजी से वो गेंद पे लपके और इसी एक्शन से थ्रो भी किया और एक्यूरेट थ्रो थी, डायरेक्ट हिट। सरफराज पीछे थे लेकिन यहाँ पे वो ऐसा लगा कि बाल बाल बच गए हैं। जाहिर है ये कैमरा एंगल मिड विकेट से है, ये बिल्कुल स्क्वायर ऑन नहीं है, तो ये पिक्चर कंक्लूसिव बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अहमद बशीर की शानदार कोशिश। यहाँ ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सरफराज ने अपने बल्ले को ड्रैग जरूर किया था। ये अच्छा हुक शॉट, गेंद जमीन से लगी गई लेकिन एक ही रन बन सकेगा। बाउंड्रीज अब नहीं आ रही हैं इतनी आसानी के साथ। सरफराज को अभी 20 रन बनाना है अपनी डबल सेंचुरी के लिए। एक बार फिर नजर डालते हैं उस रन आउट की कोशिश पर। अहमद बशीर जो है दूसरी तरफ जा रहे थे पिच छोड़कर, और यहाँ से कुछ भी कहना जाहिर मुमकिन नहीं है। यहाँ फ्रेम बाय फ्रेम अगर देखा जाए तो ये 19-20 का मामला पहुँच गए थे क्योंकि जो बेल है ये ग्रूव से बहुत बाहर निकली और ये गेंद विकेट कीपर की पहुंच से बहुत बाहर निकली है। 4 और रन्स के लिए फरहान की मुश्किलात में भी कमी नहीं हो रही। ये गेंद हालांकि काफी दूर थी, इसमें इनका कोई ज्यादा दोष नहीं, लेकिन 4 रन योनी के नाम के खिलाफ जाएंगे। 752, 5 खिलाड़ी आउट।
181 for Sarfaraz Ahmed. Rameez Aziz on 139. The partnership is 318. It's been a long day for Lahore Whites. That's beautifully played. Just helping with the angle, with given. And when you're on 180 plus, you will not miss out on these. Bilal Iqbal, he's not that express. That was literally a freebie for Sarfaraz. Shot outside the off-stump, always trouble. These are easy pickings, as you said. For somebody like who's playing on 180, not going to miss out on that. Feel for the bowlers. It's literally nothing for them. And Sarfaraz Ahmed now toying around with him, playing at his own will. That's better. But great running. They've been testing with some run-outs chances here. Sarfaraz and Rameez both got another life. Rameez was way short of his crease, but the stumps were never been hit. Sarfaraz still fresh. He's fighting for his 200. They're relaxed. They know the agony of a fast bowler, Mir Hamza. That's why he's got some smile on his face. You know, the only person not relaxed would be Danish Aziz. Everyone around him scoring a century, and he only scored 9. I don't want to be in his shoes at the moment. Feel sorry for him, but played a wrong shot, paid for it. Yeah, only person to be blamed is himself. That there'll be a no ball by Bilawal. The biggest question probably will be why the delay in taking the new ball, because we've seen with the new ball coming into play, there was something happening. Ahmed Bashir, when he was seaming, he did trouble Rameez Aziz. And probably, I think, had they taken the new ball a bit earlier when it was actually available, that might have created some opening for Lahore Whites. Yeah, but then again, we'll have to see if the bowlers were fit enough, but they're bowling with the old ball. Yes, so why? That is the right question. Are they being forced to bowl now? Because if you look at the number of overs they have bowled, 36 for Bilawal, 37 for Bashir, 25 for Danial. Oh, sorry for that, but that has gone for 4. Nobody was expecting that to happen. Daniel, that is pure frustration coming from the fielders of Lahore Whites. They're all over the place. You could hear the scream by Farhan, the wicketkeeper, that no one was backing. That was poor on Daniel's behalf. Just gifting 5 runs. There was no need for that throw. So Karachi Whites have now reached the highest total so far in this Qaddafi Stadium ground, 765. 762 was the previous one. More runs. Couple of them. Look at that tired effort from the youngster Fahd Munir. What an effort this has been from Karachi Whites, breaking their own record of 762. This score now moves right at the top of the table, 767, still going against Lahore Whites. The previous one was 762 against Karachi Blues at Karachi Gymkhana way back in 1956-7, and 675 against Sialkot at Jinnah Stadium in 2004. So their ritual of scoring big. Nicely played. That's class. Sheer class by Sarfaraz. That will race the way for another boundary of many's. Moves on to 190. He's still not giving up. What wrist work. Brilliant. Onto his pads
And we all know that he's very strong in that area. He's not going to miss out on that. Great balance, great placement also. This is brilliant batting as moves on to 194, Marina. Just 6 runs away from a double 100. Width was there, but missed out on this one. 19 of this over. Bilawal Iqbal has been expensive. 7-7-1 for 5 Karachi Whites. Can't see Danish Aziz. Where is he? I'm looking for him. Everyone is enjoying except him. You're not going to let it go, are you? He has missed out on such a huge opportunity of scoring runs. Everyone has scored except him. And the way he got out, I'm angry at that. The way he threw away his wicket. There was no point of playing that shot. When there are runs coming, runs available, you got to make use of it. You got to capitalize on the situation. But yeah, you do feel when there's already 500s in your dugout, all other batters have been scoring runs and you have missed out on a bigger chance. That will hurt for some time. And now you're moving to different venues and there's no guarantee that you will get easy bowling or venues. They do come back for the last round game against Lahore Blues, but who knows? The weather will be different, the situation, the conditions will be different. I hope the pitch will be different. I don't know, I'm not sure about that, but I hope that it will be. Oh, there's confusion. Sent back by Sarfaraz. Just 6 shy of his double century. The quality of innings has been superb by Sarfaraz. He's shown his fitness, his temperament, his skill, dominated spinners and then dealt with the fast bowlers as easy as he would like. And still he's running hard between the wickets. That's a sheer statement on his behalf. Saad Naseem will have to think a lot of how he will go about his next match. Driven straight, hasn't got much pace behind the ball, looking for 2. It's been hard, even this match and the previous one for Lahore Whites, especially when you're playing against a quality side like Karachi Whites have got test match players, they've got quality batters with great temperament, great techniques, and on surface like these, it's not hard to penetrate them. But again, I think there'll be a big question marks in tactics, in strategies he came up as a captain, bowler rotation, selection of playing 11 maybe, and then the inability to consistently carry on a plan. That'll be 4. And that'll be the double century for Sarfaraz Ahmed. Leading from the front, the skipper has done it again. His second of first-class career, and he deserves all the praise he's getting right now. He's been superb, one-class act, and he has shown some solid character out in the middle. Fabulous batting. That is one great effort by the captain Sarfaraz Ahmed. His second double century. Second at the same venue. He loves batting here at Gaddafi Stadium. After 13 years, he's been able to score his second double 100. Shows the character of the man, shows the fitness that he has maintained, shows that he's still hungry for runs, still hungry to do well for his team wherever he plays. Always gives his 100%, always involved, always passionate. Superb Sarfaraz. Still going strong. 213 was his previous highest at first class level. Oh, Apesh!
just falling short. Lahore White and even Daniel cannot believe it. It's been that sort of a match that nothing has worked for the bowlers. Edges going through, catches not carrying, fielders not attempting, few drop chances. Nothing has worked for the poor bowlers, and this one was in the air for a while, but then again falling short of the fielder. That tells you a story. And it went to one of the best fielders. But just look where he's placed. He's not saving a single, neither a boundary. In the block hole, wouldn't mind playing it. Dot to end the over, 7-7-8 for 5 Karachi Whites. Marina, the only thing wrong which Sarfraz did was not to promote himself up the order. That's it. Otherwise, he has been spot on. Had he promoted himself up the order, they might have gotten that extra point. Because after doing all that hard work, scoring 778 runs, they're still 1 point behind Lahore. So that is a moral victory for Lahore that they've gained extra point. So had he promoted himself, things might have changed. Yeah, I do agree in terms of if you're targeting the points as a team, that could have been a good probably discussion, because the moment Sarfaraz walked in with Ramiz, the run rate increased, and the way they dominated the spinners, it would have been very easy for them to obtain that point. But again, that being said, if you look at the overall performance, he wouldn't mind coming to the number he had come, because he's managed to inculcate runs. But yes, these things do matter, and we all know as a captain, Sarfaraz, he will always put his team first. He will put other players first, and maybe that was the point of sending Fahad Iqbal, to give him a chance to score runs. Oh, it did cut short sharply. 267 runs given. Oh dear, Ali Manzoor. Down the track, launched it, and it will sail away over the boundary for a maximum. I do feel for you, Ali Manzoor. That is his 150. Ramiz Aziz announcing his 150 in style, dominating the spinners, and Ali Manzoor. And that's it. That was the story for Karachi Whites. 150 for Ramiz, and Sarfaraz reaching his 200. That's what they all were fighting. What a way to end the game by Ramiz Aziz. A 6 to score his 150 and to end the match in a draw. What a run feast this has been for both sides. 784 runs been scored by Karachi region. Fantastic effort. Centuries by Khurram Manzoor, Ahmad Alam, Asad Shafiq, Ramiz Aziz, and a double 100 by Sarfaraz Ahmed. 350 run partnership among these two. They have been superb. They complemented each other beautifully. Sarfaraz has shown all the character, his class, his temperament, and so did Ramiz. He played superbly. A clean innings, a well-calculated one. And that's the accolades they have gathered as a team and as individuals as well. Another centurion, Asad Shafiq. That's Danish Aziz also in that line. Ghulam Mudassir, everyone, they're all smiles everywhere. That's a good sportsman spirit shown by both sides. Shaking hands at the end of the match, although it has ended as a draw, but not before so many centuries were scored. Maximum centuries. This is the record number of centuries being scored in one inning of a game, and definitely just congratulating from the coach. Agha Sabir also there in the list. They all know that what it meant for Sarfaraz Ahmed scoring his 200 after the gap of 12 years. That is phenomenal. Handshakes all over, the match being drawn. They had ample to look for, Karachi Whites.
And each and every batter that walked in made sure that they capitalized on the opportunities being presented in front of them. Lahore White, on the other hand, had few victories to celebrate. Ali Zaryab was superb. Ahmed Shahzad probably missing, and he'll be thinking about it. He missed on a big score as well. But this guy, the skipper for Karachi White, has been superb. Amazing innings. He built it well, played at a very decent pace. Literally masterclass from him against the spinner especially. As the focus is on Sarfaraz Ahmed for his brilliant century, but I would take this opportunity to praise Ramiz Aziz 151, the way he played, the way he supported the captain Sarfaraz Ahmed. He was the one when he came and he looked at ease, at home, the way he started off his inning. And have a look at that for a scorecard. 110 for Pura Manzoor. Ahmad Alam also getting 100. Astar Shafiq, the seasoned, 113 for him. 61 for Fad Iqbal. Ramiz Aziz scoring 151. Sarfaraz Ahmed, superb 200. Danish Aziz, 9 runs. Lahore Whites, they've struggled to find breakthroughs at the right time. One standout was Saad Naseem with 2 wickets, the captain himself. 1 each for Bilawal, Ahmed Danial and Ali Manzoor. They'll have to think a lot about how consistent and persistent they can be in terms of the plans they come out on such pitches. But has been a dominating day for batting, and you will feel a lot for the bowlers. A lot to think for Lahore Whites as far as the bowling is concerned. They need to bring in some new faces, maybe bring in some inter-district performers, because they play Peshawar next here at Gaddafi Stadium after the break of 2 days. Sarfaraz, he led it beautifully, toyed with the spinners, dominated it along with Ramiz. Anything short and wide, they were punished. They were looking for runs from ball 1, dominated the spinners, came down the track, created room, did everything on their will. There was no support for the bowlers, but they did not make things easy for them either. Displayed their sweep job beautifully. That was probably a half chance for Ramiz, but he crunched his way to his 150, and Sarfaraz Ahmed has been classic with his drives, with his flicks. Got to his double century in style. You thank the Lord, but you have to give credit for the character he has showed out in the middle. That was it. 150 up for Ramiz. It's been superb, clean knitted innings by him. Another milestone for Ramiz himself, and that was the moment when Karachi Whites declared and the match ended in draw. Rightly being congratulated by the umpire, because the way Ramiz handled the pressure of making a comeback, it's never easy. That's how the match ended. Lahore Whites, their first innings, scoring 509 runs. For 9 declared, Ali Zaryab getting 222 runs. Fahd Munir scoring 72. Noman Ali getting 6 wickets. Karachi Whites in reply, 784 runs. Sarfaraz Ahmed scoring 200 runs. Ramiz Aziz played beautifully for his 151. Astar Shafiq, as expected, into runs, 113. Saad Naseem, the surprise package, getting 2 wickets. Danial and Bilawal also getting a wicket each. And at the end, the match ending as a draw. We'll take a break and we'll join you back in a moment.
It has been a run feast here at Gaddafi Stadium, Lahore. 6 centuries were scored total and 5 were scored by Karachi Whites as the match ended in a draw. I have been joined by Karachi Whites captain Sarfaraz Ahmed, the double 100 scorer. Alongside me, 13 years it took him to score his second double 100. I have with me Sarfaraz Ahmed. Sarfaraz, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको. कैसे मोटिवेटेड रखते हैं आपने आपको, कैसे इतनी हंगर रहती है आपको स्कोर करने की? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि डबल सेंचुरी हुई है। और जहाँ तक रही मोटिवेट की बात, देखें अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आपने हमेशा आपने परफॉर्म करना है। तो ग्राउंड के अंदर है, चीज़ें आपके पास हैं, आप परफॉर्म करते रहें, वो आपकी किस्मत है कि आपको मौका मिलता है। तो कोशिश यही होती है कि जो भी डोमेस्टिक का मैच हो, डोमेस्टिक का मैच खेलूँ और अपने 100% दूँ। ऐसा क्या था पिच में सरफराज के इतने रन्स होते चले गए, 5 सेंचुरीज, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सेंचुरीज हुई। आज से पहले कभी किसी टीम ने एक इनिंग में फर्स्ट क्लास में इतने सेंचुरीज नहीं बनाए, तो क्या वाकई बहुत इजी कंडीशंस थी? देखिए, डेफिनेटली इजी कंडीशन तो थी, ये कि बैट्समैन को टाइम लेना पड़ता है। विकेट बिल्कुल थोड़ा स्लो साइड पे ज़रूर था, लेकिन अगर आप ये नहीं कह सकते जिन बैट्समैनों ने भी स्कोर किया सबने अपनी अपनी पूरी बारी करी। और अगर आप देखें तो सबने अच्छी बारी की है। लिजरिया आपने बड़ी आउटस्टैंडिंग डबल सेंचुरी करी। उसके बाद हमारे जितने भी बैट्समैन हैं, खुर्रम मंजूर हैं, असद शफीक ने, सबने टाइम लिया और उसके बाद अपने रन बनाए। तो 4 डे क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि आपको एक अच्छा टाइम लेने के लिए एक अच्छा टाइम गुजारना पड़ता है। तो कि अच्छी बॉलिंग पर टाइम गुजारा और फिर ईजी टाइम तो आता है। आपको पता है 4 डे गेम में गेम जो है वो चेंज होती है सेशन बाय सेशन। तो प्लेयरों ने अपना अच्छा टाइम खेल के फिर इजी टाइम को अपने हाथ में लिया। हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे भी, असद शफीक से भी, खुर्रम मंजूर से भी जो सेंचुरीज करते हैं। बट मैं बात आपसे पूछना चाहूँगा अमाद आलम के बारे में, रमीज़ अजीब के बारे में, जिनका कमबैक हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट में। बहुत ही शानदार इनिंग रही, फ्लॉलेस इनिंग रही दोनों की जानिब से। देखिए, हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी खुशाइन बात है कि अमाद आलम ने रन स्कोर किया। तो यंग प्लेयर हैं, सिंध की टीम में पिछली मरतबा जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेयर होते थे, तो सेकंड 11 में उनको मौका मिलता था। पहले उन्होंने एक 150 किया था इसी ग्राउंड पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा मौके नहीं मिल पाए। लेकिन इस बार उनको पूरा गो थ्रू मिल रहा है। पिछले मैच ने 50 स्कोर किया, अभी आज 100 किया है। उसके बाद रमीज़ अजीज़ को बड़ी खुशी है क्योंकि उनको 5-6 साल बाद सीजन प्लेयर हैं, 95 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसे फाद इकबाल हैं तो उनको दोबारा मौका मिला है। तो खुशाइन बात है कि लड़कों को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे रमीज़ ने स्कोर किया, फाद इकबाल ने आके कमबैक किया। 5 साल के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना ईजी नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से लड़कों ने कमबैक किया, ये हमारी कराची वाइट्स के लिए बहुत अच्छा है। शायद आपको सरफराज पता ना हो, लेकिन ये आपका हाईएस्ट टीम टोटल हो गया है कराची वाइट्स का। आप एट द टॉप चले गए। हम एक नज़र डालते हैं आपकी लिस्ट के ऊपर। लाहौर वाइट्स के अगेंस्ट आपने 767 रन बनाए, 5 विकेट्स के वाक़े गद्दाफी स्टेडियम में। कराची ब्लूज़ के अगेंस्ट इससे पहले 762 रन बनाए थे। तो एज अ टीम आप कितने खुश हैं, कैसे सम अप करेंगे इस परफॉर्मेंस को? देखिए, डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा हमारी टीम के लिए। आई थिंक प्राउड मोमेंट है। जाहिर सी बात है, आपको हिस्ट्री में जो है स्कोर पे आपका नाम लिखा गया है और ये बड़ा, जब आप क्रिकेट छोड़ते हैं तो ऐसे रिकॉर्ड में अगर आप किसी टीम में शामिल होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप बताते हैं कि यार हम भी इस टीम का हिस्सा थे। तो आई थिंक जितने भी लड़के खेल रहे हैं, आई थिंक सबकी ज़बरदस्त एफर्ट है और अल्लाह का शुक्र है कि टीम बहुत अच्छी जा रही है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले मैचेस में टीम और अच्छा परफॉर्म करेगी। आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँगा। 5 सेंचुरीज़ के बारे में तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन आपने अपने जो 200 रन बनाए, इससे पहले 1 सेंचुरी स्कोर की। तो अच्छी आपकी फॉर्म चल रही है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। बस सर, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा खेलें टीम के लिए और उसी पे लगे हुए हैं इंशाल्लाह। कोशिश ये होती है कि बस टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करें। टॉप ऑफ द टेबल आपकी टीम है। एज अ कैप्टन आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से? देखिए, बिल्कुल अभी तक आपको पता है कि अभी 4 मैच हुए हैं। थोड़ा सा लड़के जो है थोड़ा टाइटनेस की तरफ ज़रूर जाएंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि लड़कों को रेस्ट देकर मैचेस खेलें क्योंकि आगे 3 बड़े इंपॉर्टेंट गेम है हमारे लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि 3 में से कोई ना कोई एक मैच जो है वो टीम ज़रूर जीते ताकि हम फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। सरफराज, आपकी इनिंग हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही शानदार। और ये जिस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया, ये बताता है कि कितना मीन करती है ये इनिंग, कितने आपने एफर्ट किया इस इनिंग के लिए। देखिए, डेफिनेटली डबल सेंचुरी होती है। आप किसी जगह पे भी करें तो आपकी लाइफ में हमेशा यादगार रहती है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और अल्लाह ताला ने मुझे सेकंड डबल सेंचुरी करवाई। सरफराज, एक मोमेंट ऐसा आया था कल की मैं बात करूं कि एक ऐसा टाइम था कि जहाँ अपने आप को अगर आप प्रमोट करते तो वो जो एक बोनस पॉइंट एक्स्ट्रा आप हासिल कर सकते थे, क्योंकि जैसे आप खेलते हैं या रमीज़ अजीज़ खेलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ थोड़ा मिस आउट कर गए, आप बोनस पॉइंट ले सकते थे एक्स्ट्रा? देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बैट्समैन आए हुए हैं उनको उनके नंबर पर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, आई नो कि एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गेम में, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे हमारी विकेट नहीं गिरती, अगर आप देखें खुर्रम मंजूर जो है बड़ा सेट खेल लेते उस टाइम पे, अगर वो वहाँ पर जाते लंबा तो आई थिंक हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट है, ठीक है, लेकिन जो लड़के आए हैं टीम में, मेरी कोशिश ये होती है कि उनको उनके नंबर पे अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर सकें। यही वजह थी कि फाद इकबाल को उनके नंबर पर भेजा गया, रमी अजीज़ को भेजा गया, क्योंकि हमारे लिए उनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह पॉइंट हम
उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे मैच में कवर कर लेंगे। और यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। सरफराज, आप वापस आएंगे आखिरी राउंड मैच के लिए लाहौर ब्लूज़ के अगेंस्ट, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि पिच में कुछ चेंजेस हों या ऐसा ही सही है 5 सेंचुरीज फिर बने? सर हम तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वहाँ से क्वालिफाई करके आएँ कि आखिरी गेम तक नौबत ना आए फाइनल खेलने की, तो होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह आगे 2 मैचेस हैं हमारे रावलपिंडी में, तो कोशिश ये करेंगे कि पहले ही क्वालिफाई कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपकी इनिंग देख के, बहुत इन्जॉय किया हमने आपकी इनिंग को। थैंक यू सो मच। राइट, दैट इज़ ऑल वी हैव फ्रॉम डाउन हियर, बैक टू कमेंट्री बॉक्स।